एआई की हेल्प से मशीन लर्निंग के मॉडल बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। और मुझे सबसे अच्छी वेबसाइट लगी है kaggle.com। आप भी kaggle.com पे आना, ठीक है, अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। मैंने जैसे यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पर देख कई सारे कोर्सेज है। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, पाइथन, इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। आई नो बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा ताकि ना आपकी जो चीज़ें हैं मशीन लर्निंग के अंदर, वो चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए कि मशीन लर्निंग के जो मॉडल है वो काम कैसे करते हैं, मतलब वो टूल्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आपको उन टूल्स का इस्तेमाल करना आ गया, देन हम उसी टूल की हेल्प लेकर के मॉडल बनाएंगे। अब देखो टूल क्या होते हैं, जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो हाउ मॉडल वर्क, मॉडल काम कैसे करता है, बेसिक डाटा एक्सप्लोरेशन कैसे होता है। अब इन सभी चीज को करने के लिए आपको कोड लिखने होते हैं, करेक्ट। जब आप कोड को लिखोगे तो जाहिर सी बात है ज्यादा एनर्जी लगेगी, दिमाग भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन हमें क्या जानना है, हमें सिर्फ ये जानना है कि ये सारी चीजें काम कैसे करती है। लाइक डाटा एक्सप्लोरेशन होता क्या है, क्या काम होता है इसके अंदर, ठीक है। मशीन लर्निंग के मॉडल कैसे काम करते हैं, मॉडल का वैलिडेशन कैसे होता है, अंडर फिटिंग, ओवर फिटिंग, रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर मॉडल क्या काम करते हैं, डिसीजन ट्री मॉडल क्या काम करते हैं। ये सारी चीजें, ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन है। ये अगर जानकारी आपको हो गई तो इसी जानकारी की हेल्प लेकर के आप एआई को बोलो कि भाई मेरे लिए रैंडम फॉरेस्ट मॉडल बना। ठीक, जैसे ही वो आपको मॉडल बना के देगा, मतलब क्या देगा वो आपको, ये कोड देगा वो आपको। ये देख रहे हो यहाँ पे जो कोड लिखे रहते हैं, एक मिनट में नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। इसके नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ना आप कोड देखोगे तो ये कोड इंपोर्ट पैंडास एसपीडी, चलो एक लाइन का कोड है, लेकिन इतने सारे कोड की लाइन, ठीक, आप लिखोगे टाइम लगेगा। इवन आप सोचोगे कि मैं पहले क्या मानूं क्या ना मानूं। एआई आपको ये सब कुछ दे देगा। आपको क्या आना चाहिए, सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि ये लाइन बोल क्या रही है, ये लाइन क्या बोल रही है, ये लाइन क्या कर रही है, ये डाटा क्या कर रहा है। ये बेसिक चीज है, अगर आपको समझ में आ रही है तो सारा काम एआई से कराओ। ये सारे कोड वगैरह जितने भी कुछ है सब कुछ एआई से करवाओ। एआई से लिखवाने के बाद आप इसको मॉडिफाई करो अपने अकॉर्डिंग, मतलब आप इसे अपने अकॉर्डिंग मॉडल को क्रिएट करो। जैसे कि यहाँ पे ना इसने मॉडल को जो क्रिएट करा है, इसमें हम चीजों को चेंजेस कर सकते हैं। लाइक जब आप ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग करो तो उसमें कुछ लर्निंग रेट घटा बढ़ा दो। एआई बोलता है भाई 0.05 रखो, नहीं आप 0.06 रख दो, आप 0.07 रख दो। उसके हिसाब से प्रिडिक्शन देखो मॉडल कितने हाई कर रहा है। तो कुल मिलाकर के एआई की हेल्प से आप पूरा ढांचा बनवा लो, ठीक है। उसके बाद जैसे कहते हैं ना, उसने घर बना के दे दिया, अब उस घर को अपने तरीके से मॉडिफाई करो, अपने तरीके से उसको डेकोरेट करो। तो मॉडल भी उस घर की तरह ही है। एआई से पूरा मॉडल तैयार करवा के दो, फिर उसे अपने तरीके से अपने हिसाब से उसे ढांचे में डालो। तो यही सिखाने से पहले मैं आपको ना बेसिक चीजें सिखाना चाहता हूँ। देन हम बेसिक मॉडल बनाएंगे, क्योंकि ना मुझे ये इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, फिर इंटरमीडिएट टू मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग के जितने भी केगल के कोर्स है, ये मुझे बहुत ही अच्छा रास्ता लगा कि अगर ये कोर्सेस आपने कर लिए ना तो आपको गारंटेड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग की इतनी नॉलेज तो हो जाएगी कि कहीं भी कोड आपको दिख जाएगा ना, तुरंत आप कैच कर लोगे कि कोड बोलना क्या चाह रहा है और ये कर क्या रहा है, मॉडल किस तरीके से बनाया गया है, किस तरीके से इसकी डिजाइनिंग की गई है, किस तरीके का इसका आर्किटेक्चर है। ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग। तो होगा क्या इसमें, जैसे ये मॉडल मैं बनाना सिखाऊंगा, मतलब धीरे धीरे मैं मॉडल को अपग्रेड करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा सबसे हैवी मॉडल, इवन मेरे पास 5 हैवी मॉडल है जो इंडस्ट्री लेवल पे हैं। जैसे कि आप मेरा ये वाला वीडियो देखना, आई बिल्ट एन एआई एल्गो ट्रेडर, ये हाइब्रिड एमएल रीइंफोर्समेंट लर्निंग मॉडल है जो कि एडवांस इंडस्ट्री लेवल पे मॉडल है। आप मेरी इस वीडियो को देख लेना, प्लस इस वीडियो में ही मैंने दिखाया है 4 और मॉडल बनाए हैं मैंने, ठीक है, जिसमें मैंने ट्रेडिंग के ही मॉडल बनाए हुए हैं। तो ये सारे एडवांस लेवल पे हैं। तो सबसे पहले हम ये ना बेसिक मॉडल खत्म करेंगे। जैसे जैसे बेसिक मॉडल खत्म होते जाएंगे तुरंत हम एडवांस पे जंप कर जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले कोर्स से जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग, ठीक है। साइट पे आ जाना, ठीक, और यहां से क्लिक करके एक नोटबुक अपना क्रिएट कर लेना, ठीक, अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो। और मैं इसे स्टार्टिंग से कर रहा हूं, हाउ मॉडल वर्क, ठीक। तो सबसे पहला मॉडल कौन सा है भाई, डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक मॉडल है, ठीक, 2 टाइप के होते हैं, डिसीजन ट्री रिग्रेसर एंड डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन। अब देखो क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। रिग्रेसर हम ज्यादातर न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल डाटा के साथ डील कर रहे हो तो आप रिग्रेसर लोगे, अगर आप कैटेगोरिकल डाटा के साथ डील करें तो आप क्लासीफायर्स लोगे। अदरवाइज हम रिग्रेसर यूज करते हैं, बट कई बार हम क्लासीफायर का भी यूज कर लेते हैं न्यूमेरिकल में, बट सम केसेस
केसेस, नॉट मेजर केसेस। तो यहाँ पे ना डिसीजन ट्री, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसीजन ट्री होता क्या है। देखो डिसीजन ट्री किस तरीके से काम करता है ये समझाने के लिए ना मैं आपको जैसे यहाँ पे लिखा पड़ा है डज हाउस हैव मोर देन 2 बेडरूम, मतलब एक हाउस है जिसके अंदर 2 बेडरूम है, तो उसकी मतलब तुमने सवाल करा प्रॉपर्टी डीलर से कि भाई हाउस के पास 2 बेडरूम है, तो प्रॉपर्टी डीलर बोलेगा हाँ भाई है, तो भाई बोलेगा ठीक है तो प्राइस इतना होगा, ठीक है। वो बोलता है नहीं उसमें 2 बेडरूम नहीं है, एक ही बेडरूम है, तो प्राइस इतना होगा। लेकिन आप बोलोगे कि यार आप घर पे बैठे हो, ठीक है, आप प्रॉपर्टी डीलर से बोल रहे हो कि भाई क्या 2 बेडरूम है उसके अंदर, प्रॉपर्टी डीलर ने बोला नहीं भाई नहीं है, तो आप अपने अंदाजे से प्रिडिक्शन करोगे कि इतने डॉलर का मतलब वो पूरा होम होगा, मतलब घर होगा या हाउस होगा जो भी है, ठीक। अगर उसके अंदर 2 बेडरूम है तो उसका प्राइस ये होगा। आप ये नंबर्स कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हो, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये नंबर आप प्रिडिक्ट कैसे कर रहे हो, क्योंकि आपने शायद पहले ही पास्ट में कुछ लोगों से या कुछ दोस्तों के घर देखे होंगे जिनके घर में 2 बेडरूम देखे होंगे, तो उनका प्राइस आपने एस्टिमेट ये देखा होगा, और जिनके पास नहीं था उनका एस्टिमेशन ये देखा होगा। लेकिन क्या ये गारंटीड ऐसा होगा कि भाई जब भी कभी भी एक घर में 2 बेडरूम है तो उनका प्राइस एग्जैक्टली यही या इसके आसपास ही होगा? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, मैं आपको मतलब किसी अपार्टमेंट में जाते हो और वो एक बहुत ही बड़ा आलीशान एक ही रूम रखता है, 2 बेडरूम नहीं रखता, एक ही बेडरूम रखता है, प्लस एक स्विमिंग पूल रखता है, ठीक है, प्लस एक खूबसूरत सा गार्डन रखता है, ठीक है। और फिर वहीं दूसरा बंदा बोलता है भाई मेरे पास तो 2 बेडरूम है और वो छोटे छोटे बेडरूम है, तो आप बताओ कि किसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, मतलब किसका प्राइस ज्यादा होगा? उसका जिसमें एक बेडरूम है लेकिन एक पार्क भी है, एक गार्डन, एक पार्क भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो और जहां पर 2 बेडरूम है तो दोनों में से किसका? ऑब्वियस सी बात है ना, जहाँ पे स्विमिंग पूल वगैरह है सिर्फ एक ही बेडरूम है लेकिन उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो कभी भी ये कह देना कि भाई मुझे आप ये बता दो भाई कितने बेडरूम है, मैं प्राइस आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा, इतना आसान नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर होते हैं, और इन्हीं फैक्टर को जब आप कनेक्ट करते हो तो ये एक ट्री बनाता है। कैसा ट्री? देखो ये रहा फर्स्ट डिसीजन ट्री, सेकंड डिसीजन ट्री। फर्स्ट डिसीजन ट्री को तो जैसा था वैसे ही उठा के रख दिया। सेकंड डिसीजन ट्री में क्या रख दिया, जो यहाँ पर नो का प्राइस था वो यहाँ पर, मतलब जो यहाँ पे यस का प्राइस था वो यहाँ नो में हो गया, ठीक है, और जो यस का प्राइस था, जो मतलब यहाँ पे नो का प्राइस था वो यस में चला गया। अब बोलोगे यार ये कैसे हो गया, तो यहाँ पर देखो डज हाउस हैव मोर देन 2 बेडरूम, आपने बोला नहीं। फिर दूसरा क्वेश्चन आपने रेज करा लॉट साइज, मतलब रूम कितने बड़े बड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 8500 फीट है, ठीक है, अगर इतना बड़ा रूम है तो प्राइस ये होगा, अगर इतना बड़ा रूम नहीं उससे छोटा है तो प्राइस कम होगा। अब यहाँ पर उसने बोला हाँ भाई 2 बेडरूम है, फिर उसने बोला कि ठीक है 2 बेडरूम तो है, क्या उनके साइज 11,500 स्क्वायर फुट के आसपास है? उसने बोला हाँ है, तो देख रहे हो प्राइस कहाँ जंप कर गया 18,000 से सीधा यहाँ पे, किसकी वजह से? साइज की वजह से। फिर उसने बोला नहीं नहीं है, तो यहाँ पे 17,000 के आसपास। तो इस तरीके से ना आप क्वेश्चन को रेज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपके कंपनी में आप 5 दोस्त हो जो कि ML इंजीनियर हो, और जिनकी सैलरी मान लो 80,000, 85,000, 90,000, 1 लाख के आसपास, मतलब 1,000, 2,000 के आसपास फ्लक्चुएट कर रही है, करेक्ट। अब एक नया बंदा है जो आने वाला है आपकी कंपनी में, और आपको पता लगी है कि भाई एक नया बंदा ज्वाइन होने वाला है हमारी टीम में, तो उसकी सैलरी एस्टिमेट आप करना चाहते हो। आप मान लो सैलरी एस्टिमेट करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप बाकी के 5 दोस्तों के सैलरी को मतलब नोटेट करोगे कि उस एक बंदे की सैलरी 85,000 है, ठीक है। मैं यहाँ पे ना लिख कर दिखाता हूँ ताकि ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक मिनट, देखो जैसे आप एक बंदे की सैलरी सोचते हो कि भाई 85,000 है, ठीक, और दूसरे बंदे की है 90,000, ठीक, तीसरे बंदे की 95,000, ठीक, एक बंदे की 100,000, ठीक है, 1 लाख रुपीज पर मंथ सैलरी है। अब हो क्या रहा है, आप इन सैलरीज को एस्टिमेट करके इसका एवरेज लगाओगे, मतलब इसका एवरेज निकाल दोगे, डिवाइड कर दोगे 4 से, ठीक है, सबका एवरेज, तो एक सैलरी आ जाएगी जो भी आएगी, एक्स रुपीज जो भी है मुझे नहीं पता, ठीक, एक्स के 1000 जो भी है। अब आप सोचोगे कि ये सैलरी उस बंदे की हो सकती है, तो आप खुद सोच के मुझे बताओ कितने परसेंट चांस है कि ये सैलरी हो सकती है? आप बोलोगे कि यार हाँ 50% चांस तो है, लेकिन मैं चाहता हूँ इस 50% को रेज करना, मतलब और ज्यादा बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मेरी पॉसिबिलिटी और ज्यादा बढ़े, मतलब 60 हो या 70 हो। आप इस प्रोबेबिलिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो कैसे बढ़ाओगे? आप क्या करोगे, जिस बंदे के पास 85,000 आ रही है उसके पीछे के फैक्टर ढूंढोगे, मतलब रीजन, क्यों का रीजन क्या है? फ्रेशर हो सकता है, ठीक है, इसके काम अच्छे नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस डाउन है,
और थर्ड रीजन क्या हो सकता है कि भाई लेट कमिंग है और मैनेजमेंट के साथ भी इसकी अच्छी बनती नहीं है, बहुत सारे फैक्टर, इसलिए 85,000। ठीक, 90,000 उस काम अच्छी, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन मैनेजमेंट के साथ बनती रही है, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसकी वजह से 90,000 है। 95,000 मैनेजमेंट के साथ भी बनी हुई है और परफॉर्मेंस भी अच्छा है। 100,000 ये बिल्कुल परफेक्ट बंदा है। तो आप क्या कर रहे हो, आप ट्री बना रहे हो। ट्री कैसे बना रहे हो, आप इसको कंपेयर कर रहे हो। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये बंदा फ्रेशर है कि नहीं। आपने देखा ये फ्रेशर है, आपने इसमें देखा ये एक्सपीरियंस है, इसका मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा जो नया बंदा आ रहा है वो फ्रेशर है कि एक्सपीरियंस है। तो आप देखोगे एक्सपीरियंस, ठीक है, तो आप इसको इस कैटेगरी में डाल दोगे, मतलब 90 तक पहुंच सकता है वो। ठीक, फिर दूसरी चीज कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। अब परफॉर्मेंस मतलब नॉलेज, ठीक है, आपने देखा इसकी नॉलेज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपने देखा इसकी नॉलेज अच्छी है, लेकिन इसमें आप ढूंढोगे कि नॉलेज अच्छी है कि नहीं है। आपने देखा कि भाई इसकी तो नॉलेज भी अच्छी है, इसका मतलब अभी भी यहाँ यहाँ फॉल कर रहा है। ठीक, अब आप देखोगे कि इसका पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट रिकॉर्ड मतलब पहले किसी कंपनी में काम कर चुका है कि नहीं कर, एक्सपीरियंस तो जाहिर सी बात है कर चुका है, तो उसमें उसका मैनेजमेंट के साथ कैसा रिकॉर्ड रहा होगा। तो उसका मैनेजमेंट का रिकॉर्ड मान लो खराब रहा, तो आप किस में फॉल कर दोगे, इसे इसमें फॉल कर दोगे। तो जब आप ये सारे टास्क करते हो कंपैरिजन करने के लिए कि एक्चुअली में उसकी सैलरी क्या हो रही है, तो वो आप प्रिडिक्शन ही तो कर रहे हो। तो प्रिडिक्शन का मतलब क्या है, आप अपनी अप्रोक्सीमेशन को इंक्रीज कर रहे हो। जाहिर सी बात है 60, 70 और 80 सबसे टॉप लिस्टेड होता है। 80 से अबव जाना बहुत रेयर चांस होता है, बहुत रेयर चांस, बट चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चला भी जाता है तो उस पर डाउट क्रिएट होता है। बट हाँ, मैं 80% को या 85% को रिलायबल पॉसिबिलिटी बोल सकता हूँ। बट कभी भी ये कहना कि भाई 80-89% दे रहा है मॉडल प्रिडिक्शन, तो उसमें कोई ना कोई कमी है। ठीक है, वो ओवर फिटिंग हो गया है, उसे हम बाद में समझेंगे। लेकिन आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा डिसीजन ट्री को हम बनाते कैसे हैं। ये जितने भी देख रहे हो ये सब ब्रांचेस कहलाते हैं। जितने भी आप फैक्टर निकाल रहे हो ना, ये सब ब्रांचेस, जैसे कि ये फैक्टर निकल रहा है, यहाँ पे ये फैक्टर निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये सब क्या है, ब्रांचेस है। ठीक, तो इन्हीं ब्रांचेस की मदद से, जैसे कि पेड़ देखा है ना आपने, पेड़ देखा होगा, उसमें कई सारी ब्रांचेस होती है और लीफ होती है, ये सब लीफ है, ये पत्ते हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस है और ये पत्ते हैं। ठीक, तो जितनी ज्यादा ब्रांचेस एक पेड़ पे होगी उतनी ज्यादा जानकारी उस ट्री पे होगी, जाहिर सी बात है। ठीक, तो इस तरीके से डिसीजन ट्री जो है वो वर्क करता है। आई होप कि तुम्हें डिसीजन ट्री वर्क कैसे करता है ये समझ में आ गया हो। ठीक, तो आप चाहो तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना ट्यूटोरियल स्टार्ट करके, मैं तो रेकमेंड करूंगा करना जरूर। ठीक, आई होप कि तुम्हें डिसीजन ट्री समझ में आ गया होगा कि बनता कैसे है डिसीजन ट्री। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। ये आ गया मैं बेसिक्स डाटा एक्सप्लोरेशन। एक मिनट, कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये बेसिक डाटा एक्सप्लोरेशन में आ गया मैं। तो यहाँ पे आप देखोगे यूजिंग पैंडास टू गेट फेमिलियर विद योर डाटा। देखो एक बात मैं अभी क्लियर कर देना चाहता हूँ, आपको बेसिक तो जानकारी होनी ही चाहिए, बेसिक लाइक पैंडास की, नमपाई की, इन सब की जानकारी तो होनी चाहिए। यहाँ पे हमने पैंडास को इंपोर्ट करा, रीजन बिहाइंड हम फाइल के साथ डील करने वाले हैं, इसलिए जब कभी भी आप डाटा के साथ डील करते हो तो आप पैंडास को इंपोर्ट करते हो एसपीडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मेलबोर्न हाउसिंग स्नैपशॉट है। ठीक है, इसका एक डाटा है मेरे पास। अब हमें हाउसिंग प्राइस जो है प्रिडिक्ट करना है। ठीक, अब उसके लिए हमारे पास डाटा भी है, मोल पे डाटा डॉट CSV। इस डाटा को इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट करके मतलब सॉरी हाँ, मतलब इस फाइल को ले लिया, डाटा को ले लिया और रख दिया कहाँ पर, इस वाले पाथ पे रख दिया। ठीक, उसके बाद इस पूरे फाइल को मैंने इस पेज पे रख दिया या फिर इस डाटा फ्रेम में रख दिया। मेलबोर्न अंडरस्कोर डाटा नाम की एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में ये, इसमें जो इस फाइल में जितना भी डाटा था इसके अंदर डाल दिया। कैसे, ये हमारे पास पैंडास की पांडा का फंक्शन है। ठीक है, pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, ये पूरा फाइल पाथ हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, यहाँ पे तो ये सारा डाटा जो इसमें डाटा था वो सब कहाँ स्टोर हो गया, यहाँ पे। तो अगर आपको इस डाटा के साथ कोई भी फंक्शन चलाना है तो आप इसकी मदद लोगे। ठीक है, इसकी हेल्प लोगे। जैसे कि देखो यहाँ पे डॉट डिस्क्राइब फंक्शन को कॉल करा तो हमने देखो ये इस वाले डाटा डॉट डिस्क्राइब, डिस्क्राइब क्या करता है, जितनी भी न्यूमेरिकल्स वैल्यू होती हैं उसमें काउंट, हर एक कॉलम के काउंट बताता है। जैसे रूम्स में टोटल काउंट कितने हैं, प्राइस में टोटल काउंट कितने हैं, डिस्टेंस में मीन बता देता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, और ये IQR भी बता देता है। खैर हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पे जाएंगे, तो अभी हम बेसिक चीजों को ही समझेंगे। फिर इंटरप्रेटिंग डाटा डिस्क्रिप्शन, देखो मीन, मोड, मीडियन, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ से आपने सिर्फ फाइल को इंपोर्ट करना सीख लिया, किस तरीके से हम फाइल को इंपोर्ट करेंगे। ठीक, दिस इज कॉल्ड डाटा एक्सप्लोरेशन। आप बेसिक चीजें सीख गए, डाटा को एक्सप्लोर करना सीख गए, और ये बहुत अच्छी चीज है यार। यहाँ पे प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे और मजा आएगा तुम्हें, यू विल एंजॉय दिस कोर्स। आप बेसिक चीजों से इंटरेक्ट होगे। ठीक, और
बेसिक चीजें ही काफी हैं एआई की हेल्प लेकर के एक शानदार मॉडल बनाना। आपको क्या लगता है ये जो मॉडल मैंने बनाया है, मेरे पास बहुत ज्यादा एडवांस नॉलेज है नहीं, मैं देख चीजों को, मुझे कोड समझ में आते हैं एंड कोड कैसे बैकएंड में काम करता है ये समझ में आता है, एंड कोड लिखे कैसे जाते हैं अगर आप मुझसे ये बोलोगे तो हाँ मैं वहां अटक जाऊंगा, ठीक है। लेकिन हाँ मैं एआई से कोड लिखवा करके मैं पूरा कोड बता सकता हूँ कि ये बैकएंड में कर क्या रहा है। इसी वजह से मैंने ये एडवांस मॉडल बनाया। इवन जब मैंने कुछ इंडस्ट्री लेवल लोगों को दिखाया था ये मॉडल, तो वो भी झूठ मान रहे थे कि नहीं मैं ये नहीं बना सकता। बट मैंने सारे कोडेड दिखाए, मैंने सॉरी कोडेड बोल रहा हूँ, सारे कोड दिखाए, अपनी प्रोजेक्ट दिखाए, गिटहब वगैरह सब कुछ दिखाया, तब जाकर उनको ट्रस्ट हुआ कि हाँ ये मतलब कैसे पॉसिबल है। बट हाँ ओवरऑल मैंने बना दिया। तो धीरे धीरे हम बेसिक से सीख चलेंगे एंड देन हम एडवांस तक चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये यहाँ पे आपने डाटा को एक्सप्लोर करा एंड देन हम चलते हैं, हम अपना पहला मॉडल बनाएंगे, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली हम यहाँ पे मॉडल बना रहे हैं, कोई भी फीचर इंजीनियरिंग, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सीधा मॉडल को हम ये डाटा दे रहे हैं और उससे हम प्रिडिक्शन करवा रहे हैं। अब उससे पहले देखो, सबसे पहले इसमें हमने पूरी ये वाली फाइल ले ली, ठीक है, इस वाले मेलबोर्न अंडरस्कोर डाटा फ्रेम में सारा डाटा हमने ले लिया। अब इसकी हमने इस मेलबोर्न डाटा में टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितनी है, तो कॉलम हमारे पास से सारी आ जाएगी। डॉट कॉलम नाम का फंक्शन चलाओगे आप तो ये पूरी कॉलम आ जाएगी, ठीक है, ये सारी कॉलम, ठीक से जितनी भी सारी कॉलम है। लेकिन हमें सिर्फ वो कॉलम लेनी है जिससे हम अपना काम निकलवा सकते हैं। अब सवाल यही है कि लोगे कौन सी कॉलम। फॉर एग्जाम्पल हम सैलरी वाले डाटा पे चलते हैं। जब आप सैलरी प्रिडिक्ट कर रहे थे तो आप कौन कौन से फैक्टर लेना ज़्यादा पसंद करोगे। आप उसकी परफॉर्मेंस देखोगे, मैनेजमेंट के साथ रिलेशन देखोगे, उसकी नॉलेज देखोगे, उसके प्रोजेक्ट्स देखोगे, काम करने का तरीका देखोगे, सोचने का मेथड देखोगे। ये सारा कुछ मैटर करता है कि उसकी सैलरी कितनी डिसाइडेबल हो सकती है, करेक्ट। अब क्या आप उस थर्ड बंदे की सैलरी को प्रिडिक्ट करने के लिए ये पता करोगे कि भाई उसकी गर्लफ्रेंड कितनी है, या वो किसके साथ डेट पे गया है, या वो एंजॉय करता है नहीं करता है, या वो अपनी जिंदगी को आलीशान तरीके से जीता है नहीं जीता है, ये सब चीजें देखोगे क्या। अननोन चीजें हैं, फालतू की चीजें हैं, बेकार की चीजें, कोई फायदा नहीं उनका। अगर उन सब चीजों को भी आप रख करके उसकी सैलरी प्रिडिक्ट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 100% आपका डाटा, जो आपकी प्रिडिक्शन होगी वो गलत ही होगी, ठीक है। मतलब नॉइजी होगी, बहुत ज्यादा ओवर एस्टिमेटेड होगी, ठीक है, तो कोई फायदा नहीं है ऐसी प्रिडिक्शन का। तो आप सिर्फ रिलायबल डाटा करो। तो ये जो कॉलम है ये सब क्या है, ये डाटा है, तो हम रिलायबल डाटा को ही लेंगे ताकि हमें जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छी खासी मिल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे रूम एक रिलायबल है, ठीक है, टाइप खास ज़्यादा रिलायबल नहीं है, हम मोस्ट रिलायबल डाटा को ही लेंगे। प्राइस तो हमें बताना है तो प्राइस को तो हम प्रिडिक्ट करेंगे, ठीक है। मेथड मतलब ज़्यादा रिलायबल नहीं है। सेलर, ठीक है, डेट डिस्टेंस, डेट मतलब किस तारीख को इसे लिया गया था, बिल्कुल रिलायबल नहीं है, खत्म करो इसे। डिस्टेंस, ठीक है, पोस्ट कोड क्या है, बेडरूम ये रिलायबल है कि बेडरूम कितने कितने नहीं है, बाथरूम कितने हैं ये रिलायबल है, ठीक है। उसका लैटिट्यूड क्या है ये रिलायबल हो सकता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई मुझे समुद्र के किनारे चाहिए घर, तो लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये सब मतलब कुछ कॉलम्स है जो रिलायबल है। तो जितने भी रिलायबल डाटा है उसको, रिलायबल कॉलम है उसको हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करा, ड्रॉप एरो चला करके जितनी भी देखो एक्सिस बराबर जीरो करा है। एक्सिस बराबर जीरो का मतलब होता है रो वाइज डाटा को डिलीट कर देना, हटा देना। अब रो वाइज कैसे, रो वाइज ऐसे देखो, जैसे आपके पास एक यहाँ पे एक कॉलम, ये डाटा है, 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 वन कॉलम है, इसमें भी डाटा है, ठीक है। तो ये रो वाइज है। तो यहाँ पे एक्सिस बराबर जीरो, एक्सिस बराबर जीरो जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये रहा। इसका मतलब है कि वो नल वैल्यू ढूंढेगा। कैसे ढूंढेगा, ऐसे ऐसे नहीं ढूंढेगा, वो ऐसे ढूंढेगा। ऐसे क्या, जैसे मान लो यहाँ पे एक नल वैल्यू दिख गई तो वो पूरी कॉलम उड़ा देगा, पूरी कॉलम यहाँ से क्या कर देगा, खत्म कर देगा, डिलीट। फिर यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक नल वैल्यू, यहाँ पे नल वैल्यू दिख गई तो इस कॉलम को भी, इस रो को भी डिलीट कर देगा। वो परवाह नहीं करेगा कि कॉलम का एक डाटा जा रहा है, वो पूरी रो को उड़ा देगा, ठीक है। तो एक्सिस बराबर जीरो मतलब रो वाइज डाटा को उड़ाओ। अगर वन लिखोगे तो कॉलम वाइज, अगर मान लो यहाँ पे लिखता है वो वन, तो वो कॉलम से ढूंढता है कि मान लो अगर ऐसे चलता, वो यहाँ पे जीरो देखता तो पूरी कॉलम उड़ा देता है। ये रिस्की भी होता है क्योंकि पूरी कॉलम उड़ा रहा है, ठीक, ये बहुत रिस्की होता है, इसलिए जीरो करके उसने रो को उड़ाया, ठीक। उसके बाद
हम क्या करेंगे, जब हम प्रिडिक्ट करेंगे, आपने आई होप कि ये पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, आपने आई होप कि क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, जिसमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जहां पे y हमें वैल्यू मिलेगी और x हमारा इनपुट होगा, ठीक है, x हमारा क्या होगा इनपुट और y क्या होगा हमारा आउटपुट। मतलब मैं इनपुट में कुछ सामान रखूंगा, ठीक है, तो मुझे y निकल के आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने x बराबर 5 लिया तो y बराबर क्या आ गया 5m, ठीक है, m इज द स्लोप और c इज द इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक, y इक्वल टू 5m प्लस c, ठीक है, m हमें मिल जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर होते हैं, मेन हमारा x होता है जो कि एक वेरिएबल नंबर होता है, और x जैसे जैसे मैं रखूंगा वैसे वैसे y मुझे मिलता जाएगा, ठीक। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, y निकालना पड़ेगा, फिर मुझे x निकालना पड़ेगा, फिर जैसे ही y x मिल जाएंगे फिर मैं मॉडल को बोलूंगा भाई देख ये रहा तेरे पास डाटा, तो जैसे ही मॉडल को ये डाटा मिलेगा तुरंत ही वो मॉडल में y को, मतलब उस क्या जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको y में रख देगा। तो y में हमें चाहिए क्या, तो देखो यहाँ पे y बराबर मेलबोर्न अंडरस्कोर डॉट प्राइस, हमें प्राइस चाहिए। तो मैंने क्या बोल दिया, जो ये पूरा डाटा सेट था ना, ये वाला पूरा डाटा सेट, इसमें जो कॉलम है प्राइस वाली, देखो ये वाली, ये जो कॉलम है, मुझे ये कॉलम पूरी प्रिडिक्ट करनी है, पूरी प्रिडिक्ट करनी है। किसके आधार पे प्रिडिक्ट करनी है, इसको मैंने y रख दिया, ठीक, किसके आधार पे, अब मैं x निकालूंगा। तो पहले मैं फीचर कॉलम, जो जो मुझे लगती है कॉलम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे हमारा जो हाउस का प्राइस है वो अच्छा खासा प्रिडिक्ट हो सकता है, सिर्फ उन्हीं कॉलम को, बिल्कुल वैसे सैलरी वाला हिस्सा, ठीक है, कि सैलरी के लिए आप क्या क्या रखोगे। तो मेलबोर्न अंडरस्कोर फीचर्स, आप रूम कॉलम, जाहिर सी बात है रूम्स कितने हैं मैटर करता है, बाथरूम कितने मैटर करता है, लैंड साइज मतलब कितना बड़ा है मैटर करता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैटर करता है। तो जो कॉलम्स मैटर करती थी वो सारी इकट्ठी करी, बाकी को हटा दिया, बाकी चाहिए ही नहीं भाई मुझे। अब इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया, कैसे एक्स में कन्वर्ट करा, देखो यहाँ पे ये लिखा पड़ा है एक्स, यहाँ पे ये लिखा पड़ा है एक्स, लिखा मैंने, ठीक है, एक्स बराबर मेल बोर्न अंडरस्कोर डाटा, जो आप देख रहे हो पूरा डाटा सेट, उसमें बहुत सारी कॉलम है, बहुत सारी कॉलम मतलब ये सारी कॉलम है, बहुत सारी कॉलम है। तो इन कॉलम में सिर्फ मुझे ये 5 कॉलम चाहिए, और इन 5 कॉलम में इन 5 कॉलम को किस पे रख दिया, इस पे रख दिया। तो मैंने उसको बोल दिया भाई जो पूरा डाटा है ना, उस पूरे डाटा में से सिर्फ मुझे ये वाली कॉलम निकाल के दे दो, और इस कॉलम को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहाँ पे। तो एक्स में ये सारी कॉलम्स आ चुकी है। अब आप बोलोगे डायरेक्टली एक्स बराबर ये भी तो कर सकते थे, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कोडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब एक्स बराबर सीधा ही लिख दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी काम चलेगा, ठीक है। ऐसा बस घुमा फिरा के लिखना है, ये वेरिएबल्स को असाइन करने का एक तरीका होता है, इसे हम प्रोफेशनल वर्क बोलते हैं, ताकि हम आगे और ज्यादा ऑपरेशन कर सके, ठीक है, इसलिए हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं। और डायरेक्टली चाहो तो एक्स बराबर डायरेक्टली ये लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और कोई एरर भी नहीं आएगा। चाहो तो मैं आपको कोड में यहाँ पे दिखा भी दूंगा, वो एरर नहीं आएगा, ठीक। फिर सीधा क्या कर दिया, एक्स डॉट डिस्क्राइब, ठीक है, वही मीन मॉड मीडियन सब निकाल दिया। फिर हेड मतलब ऊपर की 5 रो दिखा दी, देख सकते हो ऊपर की 5 रो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग योर मॉडल, अब हम मॉडल को बनाएंगे, ठीक। तो मॉडल हम scikit-learn डॉट ट्री से इंपोर्ट करेंगे डिसीजन ट्री रिग्रेसर। रिग्रेसर इसलिए लिया क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू पे हम डील कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए हम रिग्रेसर ले रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ये वाला मॉडल ले लिया, इस मॉडल को हमें बनाने के बाद इस मॉडल से वो प्राइस पूछना है। अब वो प्राइस पूछने के लिए मुझे एक्स और वाई देना पड़ेगा उसे, ठीक है ना। एक्स वाई के लिए हम उसे बताएंगे कि वाई तेरे को बताना है और एक्स ये डाटा है। अब मैंने मॉडल बनाया, मॉडल कैसे बनाया, मैंने उसका कुछ भी नाम दे सकते हो आप, प्रिडिक्शन मॉडल भी लिख सकते हो, प्रिडिक्शन मॉडल बराबर डिसीजन ट्री रिग्रेसर, ये इसका एक फंक्शन है। रैंडम स्टेट 1, इसका मतलब क्या है, तो रैंडम स्टेट मॉडल को समझने के लिए मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है इन रियलिटी, जैसे कि एक हमारे पास कॉलम है, एक तो रूम वाला कॉलम है, ठीक है, एक लैंड साइज वाला कॉलम है, ठीक है, एक हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वाला भी है, और एक बाथरूम वाला भी है, हम ये सारी कॉलम है, ठीक। अब इन सभी कॉलम को देख करके मुझे क्या प्रिडिक्ट करना है, प्राइस प्रिडिक्ट करना है। सब जो समझो आप ही एक मॉडल हो, ठीक, क्योंकि मॉडल हम इंसान की तरह ही क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा, पहले रूम में देखूंगा, यहाँ पे 2 रूम है या 3 रूम है, 4 रूम है, 5 रूम है, 1 रूम है, ठीक है, इस तरीके से रूम्स है। लैंड साइज दे रखा है इतने स्क्वायर फुट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये भी दे रखा है, ठीक। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रूम में देखूंगा, अगर 2 रूम तो प्राइस कितना, 3 रूम तो प्राइस कितना, 4 रूम तो प्राइस कितना, 5 तो कितना, लैंड साइज तो प्राइस कितना, लैंड साइज तो प्राइस कितना, ये ठीक। तो मैं क्या करूंगा, इसका पूरे का एक एवरेज
एक एवरेज रूम निकालूंगा, फिर एवरेज रूम का प्राइस चेक करूंगा, ठीक। फिर मैं साइज का प्राइस चेक करूंगा, अगर दोनों से प्राइस सेम आया, अगर दोनों से प्राइस क्या आया, सेम आया मान लो, तो क्या हो गया, टाई। क्योंकि मॉडल करेगा क्या, मॉडल यही चेक करेगा कि कौन सी कॉलम ज्यादा वैल्यूएबल है, कौन सी कॉलम ज्यादा प्राइस को करीबली प्रिडिक्ट कर पा रही है। अब जिसका एवरेज ज्यादा आएगा, मान लो रूम का एवरेज ज्यादा आता, लैंड साइज का एवरेज कम आता, मतलब लैंड साइज इतना अच्छा प्राइस को प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा है, मतलब प्राइस के इतने ज्यादा करीब नहीं आ पा रहा है जितना रूम का डाटा प्राइस को करीब लेके आ रहा है। तो ऐसे केस में मॉडल क्या करेगा, वो रूम वाली कॉलम को उठाएगा और रूम की कॉलम के उठाने के बाद उसके हिसाब से प्राइस को प्रेडिक्ट करके बता देगा। फिर वो लैंड साइज, लैटिट्यूड, इन सबको नहीं लेगा। अब क्वेश्चन मार्क ये है, अगर ठीक है रूम का एवरेज ज्यादा आया, उसने रूम को पिक करा, लैंड साइज को रिजेक्ट कर दिया, समझ में आता है। लेकिन अगर रूम का एवरेज जो निकल के आया वही एवरेज लैंड साइज का आ गया, तो भाई यहाँ पर मॉडल किसको सिलेक्ट करे, रूम को या लैंड साइज को। देखो अगर वहां पे ना रैंडम स्टेट को आप नन कर देते हो, मतलब जीरो भी रखते हो तो कुछ मिलता है, नन कर देते हो मतलब कुछ भी नहीं, तो वो खुद से ही उठा लेता है, या तो वो खुद से ही या तो रूम उठा लेगा या तो लैंड साइज। जिससे प्रॉब्लम ये होगी, हर बार जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। क्यों, मान लो आप दोबारा से मॉडल को रीस्टार्ट करते हो ना, तो वो मान लो पहली बारी में उसने रूम ले लिया, दूसरी बारी में लैंड साइज ले लिया, तीसरी बारी में लैटिट्यूड ले लिया, तो दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो इसलिए हम क्या लगाते हैं, रैंडम स्टेट। अगर वन वन का मतलब होता है कि रूम और लैंड साइज इन दोनों को लिया, ठीक, तो ये रूम मेरा ऑप्शन वन बन गया और लैंड साइज मेरा ऑप्शन टू बन गया। तो वन मतलब मैं ऑप्शन टू को सिलेक्ट करूंगा, मतलब मैं मॉडल को बोल रहा हूँ भाई ऑप्शन टू वाले को सिलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, ठीक। अगर मैं रैंडम स्टेट अगर मैं रैंडम स्टेट जीरो रख देता, तो जीरो का मतलब मैं उसको बोल रहा हूँ ऑप्शन वन के साथ कंटिन्यू करें, मतलब रूम के साथ कंटिन्यू करें, ठीक। तो इस तरीके से ये जो रैंडम स्टेट है, ये रैंडमनेस को खत्म करता है। जो मॉडल क्या करता है, रैंडमली चीजों को पिक कर रहा है, वो रैंडमली चीजों को पिक ना करके वो एक सीक्वेंस वाइज चीजों को पिक करे, या तो पहला वाला ऑप्शन या तो दूसरा वाला ऑप्शन, वो हम उसे रैंडम स्टेट की हेल्प से बताते हैं। तो ये रैंडम स्टेट, आई होप कि तुम्हें रैंडम स्टेट समझ में आया हो। उसके बाद मैंने उस मॉडल को, जो मॉडल मैंने बनाया ना, उसको फिट कर दिया, किस पे फिट करा है, एक्स और वाई पे। एक्स डाटा लेगा, इनपुट लेगा, और वाई हमें बताएगा, तो मॉडल हो गया तैयार, ठीक है, रैंडम स्टेट वन पे। अब देखो, अब यहां से मैंने क्या कर दिया, उसको प्रिडिक्ट करवा दिया, मेलबोर्न डाटा डॉट प्रिडिक्ट, ये वाला प्रिडिक्ट वाला फंक्शन हमने चलाया। प्रिडिक्ट करने के बाद उसने हमें ये प्रिडिक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर समथिंग ये 1 बिलियन के आसपास है, ठीक है। ये 1.4 मिलियन है, 1.6 मिलियन है, समथिंग उसने एक एक रूम के वो बता दिए, प्राइस बता दिए, इतने इतने प्राइस, जो कि रियल से आप देखोगे तो मैच ही करेगा, अगर रियल डाटा यहाँ पे दे रखा हो। तो नहीं दे रखा कोई बात नहीं, मैं करके दिखा देता हूँ इसको, एक मिनट बस। देखो आप अगर खुद से इसकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, वैसे तो मैं बोलूंगा स्टार्ट एक्सरसाइज करके ही प्रैक्टिस करना, सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट नोटबुक करना, मैंने पहले से क्रिएट कर रखी है नोटबुक अपनी, ये रही, ठीक। यहाँ से अपना ये सेशन स्टार्ट कर लेना, तब ये काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो मुझे बस थोड़ा सा टाइम दो। तो देखो इसने सीपीयू स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे चेक भी कर सकते हो, देखो सीपीयू जीपीयू सब कुछ देता है भाई आपको। आप यहाँ से सेटिंग से जाकर के ना, एक्सेलरेटर से जाकर के जीपीयू भी सिलेक्ट कर सकते हो, अगर आप हैवी मॉडल बना रहे हो तो, ठीक है। जीपीयू P100 या T4 का, टेस्ला का भी आप ले सकते हो, ठीक। अगर आप हैवी मॉडल बना रहे हो, लाइक मैंने ये वाला हैवी मॉडल जो बनाया था, यूट्यूब पे आपको मैंने दिखाया था ना, ये रहा, ये हैवी मॉडल, ये मैंने केगल पे ही बनाया है, क्योंकि मेरे पास इतना अच्छा लैपटॉप नहीं है कि भाई मैं इतना हैवी मॉडल बना सकूं, ठीक। तो मैंने केगल पे ही इसका जीपीयू इस्तेमाल करके ये हैवी मॉडल बनाया है। और इस मॉडल की ट्रेनिंग भाई साहब आप सोच भी नहीं सकते, अराउंड 7 से 8 घंटे की इसकी ट्रेनिंग कराई थी मैंने मॉडल की। ये वाला आप चाहे तो ये वीडियो देख लेना, ठीक है, वीडियो पे लिंक भी दे रखा है मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक। तो अब मैं यहाँ पे ना आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे ये काम करेगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं इस फाइल को इंपोर्ट करता हूँ, ठीक। अब इस फाइल को इंपोर्ट करने के लिए मैंने ना डाउनलोड कर रखी है, तो यहाँ पे ना ऐड इनपुट करना, ठीक। यहाँ अपलोड करना, ठीक है, अपलोड करूंगा मैं न्यू डाटा सेट, ठीक। तो यहाँ पे ये रहा, मैंने ये पहले डाल रखा है। अब इसका नाम रख देना, इसका नाम क्या रखता हूँ मैं, यही नाम रख देता हूँ जो इसने दिया हुआ है ना, ये वाला नाम, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। ये नाम रख दिया मैंने, एंड देन कंटिन्यू। तो ये एरर शो कर रहा है, मैं यहाँ पे 1 रख देता हूँ ताकि मिसमैच ना हो, ठीक है। अब क्रिएट कर देता हूँ इसे। तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा,
या ये क्रिएट हो गया है। ठीक, अब मैं इसको पहले इस फाइल में इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ मैंने रखा इसे। अब यहाँ मुझे _1 करना पड़ेगा ताकि मेरे पास वो फाइल आ जाए। ठीक है, 1, तो ये फाइल आ जाएगी। ठीक, अब मैं यहाँ पे इंपोर्ट पांडा करके इंपोर्ट पांडास एज पीडी करके मैं इसको लूंगा कैसे, मेल डाटा इक्वल टू पीडी डॉट रीड _CSV। ठीक है, चाहो तो आप कोड कॉपी पेस्ट भी कर लेना यार, कोई वो नहीं है। ठीक, ये पूरा फाइल पाथ दे दूंगा मैं, जो फाइल पाथ है ना ये वाला, मैं यहाँ दे दूंगा इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो डाटा मेरे को यहाँ पे मिल गया। अब मैं इसका वो निकाल देता हूँ, स्टार्टिंग की 5 रो निकाल देता हूँ ताकि मुझे पता लगे कि हाँ मुझे डाटा मिल चुका है। हेड एक फंक्शन है जो 5 स्टार्टिंग की 5 रो दे देता है। ठीक, तो इंपोर्ट नहीं हुआ है तो कहीं ना कहीं दिक्कत हुई है। कहाँ दिक्कत हुई है भाई, नो सच फाइल और डायरेक्टरी वगैरह वगैरह। ठीक है, देखते हैं कहाँ दिक्कत है। मेरे पास ये डाटा आ चुका है। ओके, ये भी ठीक लिखा है, तो गलती कहाँ है भाई। अच्छा देखो, ये प्रॉब्लम ये हुई थी, मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे ना वो अंडरस्कोर को लेता नहीं है, तो यहाँ पे हाइफन यूज होगा। यहाँ पे आप हाइफन लगाओ तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब मैं इसे रन करता हूँ, तो रन करने के बाद ये हो गया। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो हो गया इंपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप नोटिस करो, यहाँ पे प्राइस दे रहा है ये 1,048,000 समथिंग, और इसने कितना प्रिडिक्ट करा था मॉडल ने। यहाँ पे आप मॉडल का ना प्रिडिक्शन देखो, जो मॉडल ने प्रिडिक्शन करा है वो ये करा है 1,035,000 समथिंग, और यहाँ पे कितना है समथिंग, ये तो 35 ये इसने इस रूम का बताया है। ठीक है, तो आगे पीछे कर दिया है। तो ये आगे पीछे क्यों कर रहा है, मतलब मॉडल में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी। अभी तो सिंपल आप मॉडल बना रहे हो, ठीक है, तभी आपको कुछ ज्यादा फील नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पूरा अगर बनाकर आपको दूं, जैसे मैं पहले बोल रहा था, आप यहाँ पे पहले वाई बनाओगे। ठीक है ना, वाई इक्वल सबसे पहले ड्रॉप करो, जितने भी इसमें नल वैल्यू है वो ड्रॉप करो। अब नल वैल्यू कैसे ड्रॉप करोगे आप, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेल अंडरस्कोर डाटा अंडरस्कोर 1 इक्वल टू, अब यहाँ पे मेल डाटा जो था, जो डाटा था मेरे पास, ड्रॉप एन ए कर देता हूँ मैं इसको, और एक्सेस कर देता हूँ 0 ताकि वो रो से डिलीट करे। ठीक है, यहाँ से इसने ड्रॉप कर दिया। ठीक है, एक बार देखता हूँ ड्रॉप हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, हो गया ड्रॉप। ठीक है, यहाँ पे ना रन लिखा आ जाता है। ये ड्रॉप करने के बाद अब मैं वाई बना लेता हूँ, वाई इक्वल टू ये वाला जो डाटा है, क्योंकि इसमें सारी वो ड्रॉप हो चुकी है। ठीक है, उस वाले में अभी भी वो नल वैल्यू है, इस वाले डाटा में अभी भी नल वैल्यू है, बट इसमें नल वैल्यू नहीं है, इसमें से सब रिमूव हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, डॉट प्राइस कर दूंगा इसमें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्राइस कॉलम है। चाहो तो आप पहले कॉलम देख लो, उसके बाद प्राइस डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मेलबोर्न अंडरस्कोर डॉट कॉलम कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी कॉलम दे देगा। ठीक, अब यहाँ से आप प्राइस को डिसाइड कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे y बराबर y इक्वल टू मेलबोर्न अंडरस्कोर डाटा, यहाँ पे टैब दबा के भी आपको ये हिंट दे देगा। ठीक है, कौन सा लेना चाहते हो, ये वाला डॉट प्राइस। ठीक है, तो मैंने ये y के अंदर रख दिया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, x निकालना पड़ेगा। y बन चुका है मेरा, अब मुझे x निकालना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने बताया था, यहाँ पे x इसने घुमा घुमा के लिया था, तो मैं x को डायरेक्टली ले सकता हूँ। अब डायरेक्टली 5 कॉलम। ठीक है, तो x इक्वल टू कौन कौन सी कॉलम ली गई थी यहाँ पे, एक तो रूम लिया गया था। ठीक है, इसको रख दो कॉपी एंड देन पेस्ट, या फिर मैं वहीं से सारा कॉपी पेस्ट करके निकाल देता हूँ, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। एक मिनट, कहाँ पे है, यहाँ ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से, ये रहा। ठीक है, एआई में तो आप यही काम करोगे, अब भी ये काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये मैंने रन करा तो एक्स के अंदर ये सारी कॉलम रख दी मैंने। ठीक, अब एक्स डॉट हेड निकालोगे तो सिर्फ इन्हीं कॉलम का वो हेड दिखाएगा, बाकी किसी का नहीं दिखाएगा। ओ, तो एरर का रीजन था कि हमने इस डाटा फ्रेम का कॉलम लेना था, तो मैं यहाँ पे से कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड देन एक और क्लोज ब्रैकेट इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, एंड देन यहाँ पे
रन किया, देन यहाँ रन किया। अब देखो दिखा दिया उसने। तो आप ऐसे भी कर सकते हो डायरेक्टली। आप जैसे यहाँ पे उसने असाइन करा था, अब जैसे उसने असाइन करा हुआ था इसको, पहले एक फीचर में कन्वर्ट करा, फिर फीचर से उसने इस डाटाबेस मतलब डाटा फ्रेम से इस कॉलम को एक्सट्रैक्ट किया, फिर उसका नाम क्या दिया एक्स, और हमने यहाँ डायरेक्टली क्या कर दिया x इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, आप सबको डाटा x में, अब इसको डायरेक्टली ट्रेन करो। ठीक है, जैसे इसने ट्रेन करा था भाई, x डॉट हेड निकाला। ठीक है, बिल्ड योर मॉडल, पर हम ये करेंगे। ठीक, हम यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद हमने रैंडम स्टेट 1 करा। ठीक, इसी के अंदर कर देता हूँ मैं, एंड देन हमने उसको फिट करा x कोमा y पे, वही x y जो हमने निकाला था। ठीक, तो ये हमारा मॉडल बन चुका है रैंडम स्टेट 1 पे। और अब हम सीधा प्रिडिक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे। प्रिंट, ठीक है, और ये मेलबोर्न मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, डॉट प्रिडिक्ट करेंगे हम। किसको प्रिडिक्ट कर रहे हैं? सिर्फ हेड वाले पार्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर एरर आ गया। ओह सॉरी, एरर का रीजन था x डॉट हेड। ठीक है ना, x डॉट हेड। अब नहीं आएगा एरर। हाँ ठीक है, तो देख सकते हो आप एग्जैक्टली उसने वही प्रेडिक्ट करा जो यहाँ पर इसने प्रेडिक्ट करा हुआ था। ठीक, सेम प्रेडिक्शन। ठीक, तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया। तो अब हम चलते हैं अगले वाले लेसन पे, जो कि है फोर्थ। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे कोई डाउट नहीं हुआ होगा कि रैंडम स्टेट क्या होता है, किस तरीके से मॉडल बनाया जाता है, डिसीजन ट्री क्या होता है। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख देना, मैं एक डाउट के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अब आती हुई बारी मॉडल वैलिडेशन की। मॉडल वैलिडेशन क्या होता है? जाहिर सी बात है, आपको क्या लगता है जिस मॉडल ने ये सारी प्रेडिक्शन निकाल के दी थी वो हमेशा ठीक होगी क्या? भाई बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं इसमें। मॉडल को आपने रेक्टिफिकेशन मरवाया और उसने एज इट इज रिजल्ट दे दिया। लेकिन अगर आप मॉडल को एक ऐसा प्रेडिक्शन, ऐसा डाटा दे दो जो मॉडल ने देखा ही नहीं, तो वहां पे मॉडल बहुत सारी गलतियां करेगा। तो जो रियल टाइम बेस्ड डाटा मॉडल को दिया जाता है उसमें भी वो गलती ना करे, उसके लिए हमें पहले वैलिडेशन करना पड़ता है कि मॉडल काम कैसे कर रहा है, जिसके लिए हम यूज करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या काम करता है, यहाँ पर देखो। सबसे पहले इसने वही काम करा जो हमने पुराने उस पे काम किया था, पेज पे। ठीक है, सारा ये मॉडल क्रिएट करा, मॉडल को फिट कर दिया। ठीक, अब इसमें हम गलतियां ढूंढेंगे कि भाई ये गलतियां कितनी निकाल रहा है। इसके लिए हम scikit-learn मैट्रिक्स से इंपोर्ट करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर को। मीन एब्सोल्यूट एरर का हम एक वो बनाएंगे। ठीक है ना, प्रिडिक्ट होम प्राइस मेलबोर्न मॉडल डाटा डॉट प्रिडिक्ट। ये पूरा डाटा जो है ये मेलबोर्न अंडरस्कोर मॉडल ने जो भी डाटा प्रिडिक्ट करा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्स कॉलम, वो सब का सब इसमें रख दिया। ठीक है, प्रिडिक्ट होम प्राइस इसके अंदर रख दिया। अब इसके अंदर देखते हैं एरर कितनी है। एरर कौन बताएगा? मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये एरर कैसे बताएगा मैं वो समझा देता हूँ। मीन एब्सोल्यूट एरर का एक फंक्शन कॉल करा, वाई, जो हमें जो प्राइस वो प्रिडिक्ट कर रहा है। ठीक है, और ये सारा डाटा यहाँ पे। ठीक, अब उसने देखो 434, ये कैसे निकला है इसको मैं समझाने के लिए ना आपको पहले मैं मीन एब्सोल्यूट एरर यहाँ पे समझा देता हूँ। ये होता क्या है एक्चुअली मीन एब्सोल्यूट एरर, ये MAE होता क्या है? ये क्या करता है, रियल प्राइस, रियल या फिर एक्चुअल प्राइस बोलो आप, रियल प्राइस को डाटा से निकालता है, फिर माइनस करता है प्रिडिक्टेड प्राइस को। ठीक है, फिर जो भी आता है ना, जो भी इसका आता है उसे मान लो अगर वो नेगेटिव है, अगर मान लो रियल प्राइस रियल प्राइस कम हुआ, मान लो रियल प्राइस हुआ 10K और प्रिडिक्टेड प्राइस हुआ 11K, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू है -1 की आएगी। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन का यूज करके इसको पॉजिटिव करा जाता है। ठीक, तो जो यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर है, मान लो रियल प्राइस जो है वो 10,000 के आसपास है, 10 लाख के आसपास है। ठीक, अगर जो प्रिडिक्शन प्राइस है वो इसके आसपास हुआ, मतलब कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वो पॉइंटों पे एरर दे रहा है, पॉइंटों पे ये एरर दे रहा है, तो इसका मतलब आपका मॉडल अच्छा काम कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मीन एब्सोल्यूट एरर जितना ज्यादा कम होगा उतना ज्यादा मॉडल आपका अच्छा होगा। तो देखो यहाँ पर टेस्टिंग डाटा पे, अभी सिर्फ टेस्टिंग डाटा पे करा है, डाटा को स्प्लिट नहीं करा, ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग पे स्प्लिट नहीं करा, सिर्फ टेस्टिंग डाटा पे चेक करा, तो मॉडल की जो एरर है वो बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत ही कम एरर है। अब यहाँ पे गेम चेंज देखो कैसे होगी इन सिंपल स्कोर, ये सैंपल स्कोर पे हुआ टेस्टिंग डाटा है। ठीक, अब मॉडल को हम स्प्लिट करेंगे
ट्रेन एंड टेस्टिंग डाटा के लिए अलग अलग, ठीक। फिर हम टेस्टिंग डाटा, यहाँ पे जो लिखा पड़ा है ना वेल मतलब वैलिडेशन डाटा, और वैलिडेशन को ही हम टेस्टिंग बोलते हैं, याद रखना, वैलिडेशन को हम टेस्टिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे ना डाटा को दो भागों में बांटा विद द हेल्प ऑफ ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ये इंपोर्ट करांगा मॉडल सिलेक्शन से, ठीक। उसको ये देखो, ट्रेन एक्स ट्रेन सॉरी वेल एक्स, ट्रेन एक्स मतलब जो एक्स कॉलम्स थी उस पे मॉडल को ट्रेन करो, फिर जो एक्स कॉलम थी उसमें से वैलिडेशन डाटा को स्प्लिट कर दो। अब स्प्लिट कैसे होता है, जैसे कि मान लो 80% डाटा मॉडल को ट्रेनिंग में दे दिया, ठीक है, फिर 20% डाटा मॉडल को वैलिडेशन में दे दिया। वैलिडेशन मतलब क्या हुआ, जैसे कि मान लो 5 कॉलम थी, 5 कॉलम को डिवाइड करो 80 और 20% में। 80% डाटा दिया मॉडल को, देख भाई ये प्राइस आ रहे हैं, ये प्राइस, ठीक है, उसने देख लिया, सारे प्राइस देख लिए। अब इस 80% पे मैं मॉडल से प्रिडिक्शन करवाऊं तो 99% मॉडल करेक्ट प्रिडिक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि वो रट्टा मार चुका है, सारे प्राइस को रट्टा मार के बता देगा। लेकिन अब मैं 20% अलग से डाटा देता हूं, ये वो डाटा है जो मॉडल जानता ही नहीं है, अननोन डाटा है, ये नोन डाटा है, ये अननोन डाटा है। अब मैं बोलूंगा अब इस पे प्रिडिक्शन कर। अब इसकी प्रिडिक्शन अगर अच्छी हुई तो समझ जाना मॉडल सीख रहा है, वो रट्टा मारने की जगह क्या कर रहा है, वो सीख रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक आपको क्वेश्चन पेपर दिया, ठीक है, आईआईटी का, और उस क्वेश्चन पेपर के साथ उसकी आंसर शीट भी आपको दे दी, ठीक है, मान लो उसके सॉल्यूशन भी आपको दे दिए। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पेपर आपको एग्जाम में मिल जाता है, जो कि नामुमकिन है, ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक। तो आप क्या करोगे, टॉप मार दोगे, 100% टॉप मार दोगे, ठीक। लेकिन जो क्वेश्चन आप पढ़ के गए हो वो एग्जैक्टली एज इट इज क्वेश्चन ना आकर के अलग आए, थोड़ा सा मेथड चेंज कर दिया, कुछ भी चेंज करा, तो आपके स्कोर जो आएंगे, अगर मान लो उसमें भी आप टॉप मारते हो, इसका मतलब आप जेन्युइन टॉपर हो, मतलब आपके पास नॉलेज अच्छी है, आपने सीखा अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर भी 80% 20% स्प्लिट करा जाता है। तो यहाँ पे क्या करा, वैलिडेशन में स्प्लिट कर दिया। फिर जो वाई, जो प्रिडिक्शन निकल के आ रही है एक्स ट्रेनिंग डाटा पे, यहाँ पर हमें प्रिडिक्शन मिलेगी, और वैलिडेशन डाटा पे यहाँ पे प्रिडिक्शन मिलेगी, इक्वल टू ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। एक फंक्शन कॉल करा, एक्स कोमा वाई दोनों को रखा, ठीक है, एक्स वो सारी कॉलम रखी और वाई उस कॉलम पे आई हुई सारी प्रिडिक्शन, और उनको किस पे स्प्लिट कर दिया, ट्रेनिंग एक्स और वैलिडेशन एक्स, मतलब जो ट्रेनिंग डाटा था उसको ट्रेनिंग एक्स में और वैलिडेशन एक्स में स्प्लिट कर दिया, फिर उनके आए हुए आउटपुट को भी स्प्लिट कर दिया, किसमें, ट्रेन और वैलिडेशन अलग से, ठीक है। रैंडम स्टेप 0 मतलब जो पहला ऑप्शन है मॉडल वो ले सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। उसके बाद मॉडल को यहाँ पे तैयार करा जैसे पहले तैयार किया था हमने, ठीक है। फिर उसको फिट करा, पहले फिट किस पे करा था, एक्स कोमा वाई पे, लेकिन आप देखो ट्रेन एक्स और ट्रेन वाई पे फिट करा है। फिर इसकी सेम वैसे ही प्रेडिक्शन निकालो। वैलिडेशन, अब हम ट्रेनिंग पे हम लोग, हाँ, ट्रेनिंग पे नहीं निकाल रहे, हम लोग वैलिडेशन पे चेक कर रहे हैं। तो वैलिडेशन प्रेडिक्शन बराबर मॉडल डॉट प्रेडिक्ट वैलिडेशन, ठीक है। वैलिडेशन में प्रेडिक्शन करा उसने, अब मैं निकालता हूं इसका एरर कितना आ रहा है। पहला देखना एरर कितना था, 434, और अब देखो एरर कितना है। समझ रहे हो, मॉडल ने कितना तगड़ा वाला रेक्टिफिकेशन मारा हुआ है, जिसकी वजह से इतना बड़ा एरर दिखा दिया, इतना बड़ा एरर, मतलब कि एक रूम जिसकी कीमत एक्चुअली में 10 लाख रुपए हो सकती थी, उसकी कीमत वो 10 करोड़ के आसपास बता रहा है। तो इतना बड़ा एरर, समझ रहे हो। तो यही है क्या कहते हैं, मॉडल वैलिडेशन। मॉडल का वैलिडेशन चेक करने के लिए हम मीन एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल करते हैं। एंड आई होप कि तुम्हें मीन एब्सोल्यूट एरर समझ में आया हो और उसकी कोडिंग भी आपको समझ में आई हो। डाउट हो तो मुझे बता देना। हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज 5 अंडरफिटिंग एंड ओवरफिटिंग। अंडरफिटिंग क्या होता है, ओवरफिटिंग क्या होता है, इसे कुछ इस तरीके से समझो, जैसे कि आप किसी खाने को लेकर के आप समझ सकते हो, ठीक है ना। जो फूड होता है, ठीक, अगर फूड आपने भूख लगी है आपको, ठीक है, आपने अगर कम खाया, ठीक, तो फालतू में आपको दोबारा भूख लगेगी, दोबारा 1 घंटे बाद आप खाना खाने जाओगे, ठीक। लेकिन अगर आपने हद से ज्यादा खा लिया तो आपको फूड पॉइजन हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कितना खाओगे, जितना रिलायबल होगा उतना ही। सेम मॉडल में भी यही केस चलता है, अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग। अगर आपने कम नॉलेज दी उसको तो अंडर फिटिंग हो जाएगा, जो जानकारी आपको देगा वो गलत दे सकता है। अगर उसने हद से ज्यादा जानकारी ले ली और वो ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट हो चुका है, तो कई लोग देखा है ना जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो मॉडल हमारा भी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो आउटपुट गलत देगा। तो हमें रिलायबल डाटा ही उसे देना है, ताकि वो अंडर फिटिंग और ओवर फिटिंग के सिनेरियो में ना
चला जाए। जैसे कि यहाँ पे ग्राफ देखो, ये ग्राफ देख रहे हो आप, अंडर फिटिंग का ग्राफ है, ये अंडर फिटिंग है, यहाँ पे है तो ये अंडर फिटिंग, ठीक है। ये नहीं कह सकता मैं इसको, क्योंकि यहाँ पे दोनों मैच करने चाहिए। यहाँ पे ओवर फिटिंग होता जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे ये ओवर कॉन्फिडेंट होता जा रहा है, तो देख सकते हो ओवर कॉन्फिडेंट लेवल इसका कितना ज्यादा है। और ओवर कॉन्फिडेंट किसमें होता है, ये वैलिडेशन डाटा पे ओवर कॉन्फिडेंट होता है। क्यों? क्योंकि बार बार जब आप उसे बाहर का डाटा दे रहे हो, बार बार दे रहे हो, तो बार बार वो क्या करता जाता है, नई नई प्रिडिक्शन निकालता जाता है, उसे लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो ओवर कॉन्फिडेंट होता जाता है और कुछ नहीं। तो इसको रोका कैसे जाए? ये यहाँ पर देखो, सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला, ठीक। यहाँ पे एक फंक्शन बनाया उसने, मैक्स लीफ नोड। एक्चुअली डिसीजन ट्री में हम मैक्स लीफ नोड्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है मैक्स लीफ नोड, मैं इसे समझा देता हूँ। जैसे कि एक ट्री है, ये एक रूट है ट्री की, ठीक है, ट्री की रूट है। अब ये आगे बढ़ा, ठीक है, ये एक ब्रांच बनी, ठीक, और फिर आगे बढ़ा, फिर एक ये ब्रांच बनी, फिर आगे बढ़ा, ये एक ब्रांच बनी। अब इस ब्रांच में कितने लीफ है, ठीक, ये देखो आप, ये रहा, ठीक है, फिर ये लीफ बन गया, ये लीफ बन गया, ये लीफ बन गया, ठीक है, इसमें ये लीफ बन गया, इसमें ये भी ब्रांचेस बन गई। तो यहाँ पे ये सारी लीफ, ये सारी ब्रांचेस है, और ये इनके लीफ है, पत्ते हैं, ठीक। तो मैक्स लीफ नोड्स क्या है, यही है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स और कितने नंबर ऑफ आप लीफ दोगे उसे। मतलब कि जैसे सैलरी वाले कंसेप्ट पे आ जाओ, जैसे मैंने बोला ना आपको अपने दोस्त की सैलरी को प्रिडिक्ट करना है, तो अगर आप अपने दोस्त की जानकारियों में, मतलब सैलरी को प्रिडिक्ट करने के लिए आप अपने दोस्त के सारे लाइफ स्टाइल को चेक करोगे। अगर आपको सैलरी प्रिडिक्ट करनी है, तो सपोज करो आप करोगे, आप उसको, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, बेकार की नॉलेज है, फालतू में आप फंसोगे और कुछ नहीं होगा, सैलरी प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। हटाओ इसको। अगर इसको भी दे दिया तो आप क्या हो जाओगे, ओवरफिटिंग, चीजों को ज्यादा जानना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। उसकी लाइफ में और क्या क्या चल रहा है, वो घूमता फिरता है कि नहीं है, ठीक है, और उसकी परफॉर्मेंस कितनी है, उसकी नॉलेज कितनी है, मतलब वो तो अच्छा डाटा है, परफॉर्मेंस, नॉलेज, ठीक है, और वो काम करने में कितना रिलायबल है, ट्रस्टेड कितना, सॉरी ट्रस्टेड कितना, वो भी ज्यादा मैटर नहीं करता, ठीक। मतलब काम अच्छा करता है कि नहीं करता, उसकी नॉलेज अच्छी है कि नहीं है, उसके स्कोर अच्छे है कि नहीं है, प्रोजेक्ट है कि नहीं है, ये सारा डाटा रिलायबल है। लेकिन उसके साथ साथ आप ये भी डाटा दे देते हो, तो ये क्या हो जाता है, ओवरफिटिंग। दिस इज कॉल्ड ओवरफिटिंग। तो यहाँ पे ना यही केस हो रहा है कि जब ट्री बनाया जा रहा है, तो ट्री में कितने आप लीफ दोगे मॉडल को। अगर आपने हद से ज्यादा लीफ दे दिए, तो यही वाला केस होगा, ओवरफिटिंग, ठीक है। लेकिन अगर आपने सिर्फ कम ट्रीट दिए, मतलब जो ब्रांचेस है बहुत ज्यादा कम दिए, लीफ आपने बहुत ज्यादा कम दिए, तो अंडर फिटिंग मतलब सिर्फ आप उसकी सैलरी प्रेडिक्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ हिज परफॉर्मेंस। आप ये देख ही नहीं रहे उसके प्रोजेक्ट है कि नहीं है, प्रोजेक्ट पर अच्छा काम किए कि नहीं किए, सिर्फ आप उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हो और सैलरी को प्रेडिक्ट कर रहे हो। तो ये क्या है, अंडर फिटिंग है। आप अच्छी प्रिडिक्शन नहीं दे सकते। तो आप अच्छी प्रिडिक्शन दो, इसके लिए क्या करते हैं हम, ट्री रिलायबल लेते हैं, ना ज्यादा कम ना ज्यादा, और रिलायबल ट्री को हम यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हो, आई होप कि आपको मैक्स लीफ नोड समझ में आ गया हो। यहाँ पे मैक्स लीफ नोड का एक फंक्शन चलाया है इसने, ठीक। फंक्शन चलाने के बाद अब मैक्स लीफ नोड को कॉल कर दे, रिटर्न मीन एब्सोल्यूट एरर। देखना यहाँ पे एरर कितनी ज्यादा कम होगी, ठीक। सेम वही, इसे पढ़ोगे ना, सेम वही लिखा पड़ा है जो पहले हमने बनाया था। हमने मॉडल को यहाँ पे वो करा, स्प्लिट करा, उसके बाद एक लूप चलाया है यहाँ पे। अब देखो लीफ दी जा रही है, ठीक है, 5 लीव्स, 5 लीफ मतलब 5 पत्ते दिए जा रहे हैं, मतलब कि कुछ ऐसा, जैसे कि ये है, ठीक है, एक ये 3 4 और एक 5, इस तरीके की 5 ब्रांचेस दे दी, ठीक। अब 50 मतलब ये और आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा, फिर ये भी और आगे बढ़ सकता है, ठीक। यहाँ पे ये भी और आगे बढ़ सकता है, और मतलब एक टोटल 50 लीव्स रहेंगे, फिर 500, फिर 5000, देख रहे हो, धीरे धीरे लीफ को वो बढ़ाता जा रहा है। अब चेक करेंगे कि मॉडल किस वाले लीफ पे वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है। अच्छा रिजल्ट मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर का कम होना, जिसपे सबसे ज्यादा कम एरर आएगा, वो उस पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने निकाला उसे, देखो 5 लीफ था, 34, मतलब देख रहे हो कितना बड़ा नंबर वो प्ले कर रहा है, ठीक। मतलब क्या है, अंडर फिटिंग में है। 50-25 थोड़ा बहुत ठीक ठाक है। 524 बेस्ट है, इससे तो बेस्ट है, 500 सबसे बेस्ट चल रहा है। 5025 ज्यादा बता रहा है, इसका मतलब 500 सबसे बेस्ट है। तो 500 लीफ हम देंगे उसे, और 500 पे हम उसे रोक करके मॉडल को तैयार कर देंगे, मॉडल पे कि यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है भाई। तो आप क्या क्या सीख गए यहाँ पे, आपने सीखा
मॉडल कैसे बनाते हैं। फिर आपने सीखा भाई मॉडल तो बन गया लेकिन उसमें गलती भी होती है, गलती कैसे निकालेंगे हम, मीन एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल करके हम उसकी गलतियां निकालेंगे। गलतियां निकालने के बाद उसको ठीक कैसे करें, ठीक करने के लिए हम उसे लीफ ज्यादा से ज्यादा देंगे। मतलब नॉलेज कितनी देनी है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, सिर्फ उतनी नॉलेज जहां से वो हमारा काम कर सके और अच्छा प्रिडिक्शन कर सके। करेक्ट। तो हमने एरर निकालना भी सीखा और उस एरर को फिक्स करना भी सीखा। तो अब हम चलते हैं आगे। आई होप कि आपको अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग समझ में आ गया हो, अगर ना समझ में आया तो मुझे बता देना। अब एक नया मॉडल आता है रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। अब ये रैंडम फॉरेस्ट मॉडल क्या करता है, तो देखो रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो है वो अपडेटेड और एक्सटेंडेड वर्जन है डिसीजन ट्री का। कैसे, देखो जाहिर सी बात है डिसीजन ट्री में आप क्या कर रहे थे, आप लीव दे रहे थे, ठीक है, लीव दे रहे थे, कितने कितने लीव बनेंगे, ठीक। अब जब आप एक ट्री बना रहे हो, एक पेड़ बना रहे हो, तो उसमें काफी सारे लीफ है, ठीक। ये पूरा एक पेड़ बन गया। तो रैंडम फॉरेस्ट पता है क्या करता है, रैंडम फॉरेस्ट क्या करता है, फॉरेस्ट का मतलब आप समझ गए होगे जंगल, ठीक है। फॉरेस्ट क्या करता है, बहुत सारे ट्री बनाओ, 100 ट्री बनाओ, ऐसे ऐसे जैसे देख रहे हो, ऐसे 100 ट्री बनाओ। और हर एक ट्री अपनी अलग अलग प्रिडिक्शन देगा। ये वाला ट्री अपनी प्रिडिक्शन देगा, फिर दूसरा वाला ट्री अपनी प्रिडिक्शन देगा, तीसरे वाला ट्री अपनी प्रिडिक्शन देगा, चौथा अपनी प्रिडिक्शन देगा। फिर सारी प्रिडिक्शन को सम अप कर दो, फिर उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ट्री, मतलब 100 है तो 100 से, तो जो प्रिडिक्शन निकल के आएगा वही हमारा रियल प्रिडिक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड रैंडम फॉरेस्ट। आई होप कि तुम्हें रैंडम फॉरेस्ट समझ में आया। रैंडम फॉरेस्ट रिपीट कर देता हूँ। मान लो 100 ट्रीज लिए आपने, 100 ट्री लिए, फिर उस 100 ट्री का हर एक ट्री का प्रिडिक्शन निकालो और उस सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ट्री, जितने भी ट्रीज हैं, तो वो आपको जो रिजल्ट देगा वो रैंडम फॉरेस्ट होगा। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो है वो वही आपको आउटपुट देगा। इसलिए रैंडम फॉरेस्ट मॉडल जो है वो काफी बेहतर है डिसीजन ट्री से, क्योंकि देखो डिसीजन ट्री क्या कर रहा है, सिर्फ एक ट्री पे प्रिडिक्शन दे रहा है, लेकिन रैंडम फॉरेस्ट क्या कर रहा है, 100 ट्री का एवरेज वैल्यू निकाल करके प्रिडिक्शन दे रहा है। तो आप किस पे ज्यादा ट्रस्ट करोगे, डिसीजन ट्री पे या फिर रैंडम फॉरेस्ट पे? ऑब्वियस सी बात है रैंडम फॉरेस्ट पे। तो देखो यही करा गया है रैंडम फॉरेस्ट में। आप देखो तो पहले तो कोड सब कुछ सेम है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। उसके बाद देखो यहाँ पे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेसर को मॉडल को इंपोर्ट करा, इसे इंपोर्ट करने के बाद मीन एब्सोल्यूट एरर को भी इंपोर्ट करा, फॉरेस्ट मॉडल को यहाँ पे कॉल करा, ठीक है। उसके बाद उसको फिट करा ट्रेन एक्स ट्रेन वाई पे, उसके बाद उसकी प्रिडिक्शन निकाली वैलिडेशन डाटा पे, ठीक है। फिर हमने एरर निकाली, भाई एरर कितनी दे रहा है वो वैलिडेशन डाटा पे, देख रहे हो 19,000। लास्ट में देखा था 24,000 की एरर थी, अब 19,000। रैंडम फॉरेस्ट ने 19,000 की एरर दी है, देख समझ रहे हो आप। तो ये है आपका रैंडम फॉरेस्ट, ठीक है, जो मल्टीपल ट्रीज को लेकर के उसका एवरेज निकाल के आपको आंसर देता है। तो यहीं पर ये खत्म है मेरे ख्याल से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंपटीशन है, चाहो तो आप पार्टिसिपेट कर लेना, मशीन लर्निंग कंपटीशन है। तो यहाँ पे आपका ना ये वाला कोर्स आपका खत्म हो चुका है, ठीक। ये मशीन लर्निंग, ये इंट्रो टू मशीन लर्निंग, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप केगल पे जाना और इंट्रो टू मशीन लर्निंग मैंने तो देखो पढ़ा दिया है, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा यहाँ से पढ़ने की जरूरत है। सीधा यहाँ पे स्टार्ट ट्यूटोरियल करके प्रैक्टिस करते जाना, और कोई डाउट हो तो मुझे प्लीज बता देना। एंड आई होप कि तुम्हें ये समझ में आया हो अच्छे से। नहीं समझ में आया तो मुझे लिख देना कमेंट में, मैं दोबारा समझा दूंगा। लेकिन हाँ, मैं अभी फिर से बताता हूँ, बहुत बेसिक मॉडल है और बेसिक से स्टार्ट करके हम एडवांस तक पहुंचेंगे, विच इज कॉल्ड एल्गो ट्रेडिंग मॉडल टाइप, ठीक। क्योंकि अगर जब तक आपको ये बेसिक चीजें नहीं समझ में आएंगी तब तक आप एडवांस मॉडल को नहीं समझ पाओगे। इसलिए हम धीरे धीरे मॉडल को समझते जा रहे हैं। आज हमने दो मॉडल सीखा, एक डिसीजन ट्री और दूसरा रैंडम फॉरेस्ट। डिसीजन ट्री किस तरीके से प्रेडिक्शन देता है, रैंडम फॉरेस्ट किस तरीके से डिसीजन देता है, और मीन एब्सोल्यूट एरर हमें क्यों जरूरी होता है, ठीक है। अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग क्या होता है, ठीक है, डाटा वैलिडेशन क्या होता है, ये सब कुछ हमने इसमें सीखा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, एंड मिलते हैं फिर। हैप्पी लर्निंग। So in the last lecture, we studied intro to machine learning, where we learned a lot about models and how they work. Look, what did we learn? We studied decision trees, how they work, right? And how does a decision tree model work? What are its prediction methods? Then we learned to determine errors within it with the help of the mean absolute error. Right. After that, we learned to fix those errors using the decision tree, where we increased the leaf number. And by increasing it, we learned to fix the error. After that, we learned about the model. What is underfitting?
right? This is a very important thing to understand, right? What is underfitting and overfitting? Then to fix underfitting and overfitting, we learned how to maintain it by increasing the leaf nodes, increasing or decreasing underfitting, and increasing or decreasing overfitting. Okay? And we also learned how to fix errors, how to calculate absolute error. If the model is generating errors, how do we deal with it? We learned very basic minor things in previous lectures. But now we'll gradually learn things better. Okay? Gradually, we'll learn the basic topics, and then I'll build a complete model using AI to show you how we can build a complete model with all these basic things. That's a better model. Okay? As I told you in the last video, you can check out my algo trader model if you want. It's a completely advanced model. So today we'll study the intermediate machine learning course. Okay? We'll cover more things in it. There are so many interesting things. Look at what's in it. First, in the introduction, it clearly states that you should have taken the previous machine learning course. Only then will you understand this course, right? So I've already done that. Now it's time for missing values. Now, what are missing values? Missing values, in general, are the data points you have, like this data, bed and bath. There's some data, and here there's nothing blank. Sometimes it's left blank, right? For example, you're going to a store to buy some clothes. You buy clothes, that is, any shirt, and after buying, the data is filled in. Somewhere the price is written, somewhere the size of the clothes is written. Suppose a row, a column, or a cell is left blank by the sales agent or customer service. So how do we deal with that blank sheet? We'll learn that in this video. Even many other things, right? Now look at this. Whenever we see a missing value, we have three approaches, three methods, three approaches to deal with it. The first is to drop the column with the missing value. Just delete the entire column, the column in which you find the missing value. Now notice one thing for yourself. Suppose there are 100 values in a column. The total number is 100. Out of those 100, 3 values are empty. They are missing, meaning they are blank. What are the remaining 97 values? They are filled. Now, if you delete the entire column, you understand that you are losing 97% of the data, and understand how much loss you are incurring by losing so much data. A huge loss. This is also a risk, man. I mean, how do you deal with it? Because you understand that if there are missing values, even just 1 or 2, eliminating an entire column or row is a huge risk. You lose a lot of data. So the first approach to dealing with these is to drop the column with missing values. However, we'd use this approach only when a maximum of 60, 70, or even more than 40% of the data is missing. It's said that you should eliminate just that column. But it's fine, it's reliable, that even if you eliminate 40% of the data, there's no problem. But if it's a larger model, I think it's best to deal with it through robust analysis. But we'll look at that later. Right. So the first approach is to eliminate the entire column, right? The second approach is imputation. Imputation is exactly the same approach. If 97% of the data is filled and 3% is empty, how do we deal with that? It won't blow up the entire column. So what do? We use imputation. Now, imputation in general, when it comes to numerical values, in numerical terms we use mean, mode, and median. I hope you've studied statistics. So in statistics, we use mean, mode, and median. Now, it depends whether you use mean, mode, or median. Obviously, in numerical values, we either use mean or mode. But even here, outliers cause problems. We'll see how to deal with outliers later. So let's not talk about outliers right now, okay? In general, what happens is that you use imputation. Imputation means we fill in any empty space with a value. Now, how do you fill it in? Find the mean of the entire column. Wherever there's a mean, we'll fill in any gaps. Or find the median of the entire column and fill in any gaps where the median is. This is called imputation. Remember this. The first approach is to erase the column. The second approach is to fill in any gaps with imputation, either with a constant value, like 0 to 1, or any constant value, or you can use the mean, mode, or median. The third is an extension to imputation. Why is it called an extension to imputation? The reason behind this
is that you filled in the mean and median. Now, suppose you did this for 30% of the data, the model might get confused. Why? Because what is the model seeing? 30% of the data looks exactly the same. Exactly the same, making it very common for noise to build up within the model. Noise means you're human. You see the same event happen 30 times. You'll predict it the 31st time. You'll say, this is what's going to happen, nothing else. The other person will ask, how do you know? You'll say, I've seen this happen 30 times, so this is what will happen. The model will behave exactly the same. When it sees the same data 30 times in a blank space and the remaining 70 pieces of data are different, what will it depend on? It will depend on 30. This becomes risky. A lot of noise is created here. Therefore, we pay attention to imputation. But yes, filling in 35% is also a huge risk. It's a very big risk. It's better to remove that data, or we deal with it as an extension to imputation. Now, how do we deal with it? Look, what's happening here is that the non-value is not a number. The n value means not a number, okay? You filled in the mean, mod, median, and other values. But do you know what's happening here? You filled in the mean, mod, median values, then create a new column, bad was missing. Okay, name that column anything. Bad was missing. So in this column, write false where the original number is. All the original numbers are there, so mark false there. Where the missing value was filled, mark true. Now what will happen is that the data will not detect it. True can be converted to 0 or false because data always understands numerical values. It understands binary numbers. Okay? Our model, which comes in 0 or 1. So by looking at this new column, the model will figure out that this data was empty, but it was filled. So it will assign weights accordingly. Weight means how much value should be given to it, right? We have filled this data ourselves. So what value should be given to it? And this is the original data that we have. How much value should be given to it? So that ratio will automatically divide it around 90 to 10, so that it should be given only 10% value. The remaining original data should be given 90% value. After that, I have to predict my data, right? So these three approaches are used. First, drop the column. Second, imputation. Fill in the missing values of that column. Third, extension of imputation. Not only do you fill in the missing values, but create a new column and mention that wherever it is filled, it should be true, and wherever it is not filled, it should be false. After that, we see this code. Now look at the code. Import Pandas SPD test train test split. We've taken the same data that we were using in the previous lecture, the house pricing data. We've stored all of this data in the data frame. Okay? We've created y is that. Okay? Y is what we need to extract. X equals, now look what it's saying here. From this data, the price column has been completely removed. What? The price column has been completely removed. Why has it been removed? Because we need to predict it, so it has removed it from here. Then X equals it has taken all the data. Okay? Man BB predictor. Now select data type, exclude object. All the numerical data other than object should be taken into X. Okay? After that, split it into train and validation. Yes, you see here the train split will be 80% of the training data and 20% of the validation data. And 20 validation data. Okay, right? In this 80% training and 20% validation. This is how it has been split. Okay? Now, after that, the mean absolute error was calculated. Okay? So that we can also know the error. After that, here, the call with missing call for here, call in X train column. If X train column dot is null, means that in X training data, whatever null column has null values, no matter which null value it is, any null value, remove all of them, and put them in this call with missing. Okay? Keep all the values in call with missing, no values. Then reduce it, reduce underscore extend, and drop call with missing X is 1, meaning what to do with all those missing values. From that column only, drop them column-wise. From them column-wise. Okay, so all those columns will be deleted. Okay? Created a new column, put all the missing values inside that new column, put any missing values in it, then what did you do? Deleted it from here. Okay? What did you do? Deleted it. Deleted it from X's one column. After deleting it, print it out. What is our mean absolute error now? Look, it was 19,000. Now you see the error is around 18,000. So the error has decreased
This means the model has improved even more, okay? Then the second approach is imputation. Imputation, like we just blew the entire column, but now we won't blew it. We'll fill it with something. Now, look here. First, we'll import my computer. Pada, okay? Simple computer. Then we'll call simple computer with the help of my imputer, create a variable. So using this variable, we call the simple imputer. Then imputed, meaning, look, what a simple imputer does is fill in the missing values. It's okay? Like here, my imputer uses this .fit transform. Okay. All the training data, meaning the fit transform, is inserted into it. Okay. Then imputed xtrain.column. All the columns within it. Okay. We imputed the imputed column. We removed all these columns from xtrain.column. Okay. After that, we checked it in the mean absolute error column. Look, what is the mean absolute error after imputation? See something like 17,000. And what was it when the entire column was blown out? 18,000. So you see, as you gradually learn, the errors gradually decrease, and this is a sign of improvement. As you learn, you improve the model. So gradually, we're learning. Okay. Now, last, an extension to the interpretation. Last but not least. So what did you do here? I've already created a new column. Like here. So fit transform. The second approach. So create a new column, type was missing in that new column, and create a column, and then set the true to false system inside it. Where the original data is, it will be false. And where we filled in the data with null values, it will be shown as true, right? Hello, right? By creating a new column. So take a look at this code. If you don't understand, ask me. Okay? After that, the second approach was obviously better. Okay? That's nothing. Okay? Now let's move on. I hope you understand how to deal with missing values. How do we deal with missing values in numerical values? After that, we come to the category. Categorical. Yeah, categorical. Suppose the data is categorical. How do you deal with it, friend? There are three approaches to deal with that. First, delete the entire categorical variable. Okay? Obviously, if you do that, you'll suffer a huge loss. Then the second way is ordinal encoding. Now the question mark is, how can we handle categorical data like alphabets? Your computer model, brother, is also a computer. It doesn't understand categorical concepts. It doesn't know anything about ABC, or anything else. It only knows binary numbers, which are called 0 and 1, 0 and 1, and nothing else. Okay? It can handle numerical values, but it can't handle your categorical ones. So we use three methods here. One is to erase the categorical column. The second is one-hot ordinal encoding. The third is one-hot encoding. Now let me explain n-ordinal encoding first. Ordinal encoding involves taking a column, okay? Whatever categorical data is in that column. It can obviously contain different data. The same data can be repeated. Only here, which one is repeated? It's never repeated, okay? So we've assigned numerical values to everyone, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, something like that. For example, here, assign a 3 to every day, assign a 0 to never, assign a 1 to rarely, assign a 2 to most days, and assign a 0 to never, so 0. So the way this column is created is by assigning a number to each one, and then that number will come here. Then our model will deal with these numbers and give its output based on this number, and this number are assigned by this column. Okay? So all those numbers define this categorical data. So this is ordinal encoding. You can do it this way too. Okay? Then comes one-hot encoding. One-hot encoding converts it to binary. How? For example, look what was in ordinal encoding. Created a new column and assigned it to that column. Type 0, 1, 2, 3 and assigned it like this. But the problem with one-hot encoding is that you have to create a lot of columns. For example, look here, there are so many different categories. Every day has a separate category. Every day has a separate column. Okay? A separate column for never, a separate column for rarely, a separate column for most days. Okay? This is how different columns are created. For example, here, there are 3, red, yellow, and green. So create 3 columns, red, yellow, and green. Now, when red appears, if it's red, it's 1. If it's not, it's 0, 0, 0. Okay? If yellow is present here, it's 1. If it's not, it's 0, 0.
Look here, if yellow isn't present, it's 0, 0. If it's 1, 0, 1. And if green isn't present, it's 0, and where it's present, it's 1. So this way you have to create multiple columns. Now, if you create multiple columns, obviously there's a lot of problems, and there's no problem if you're working on a computer. What's the problem with that? So there are 3 approaches. 1, blow up the entire column. 2nd, use ordinal encoding, right? Assign numbers to all the alphabets and all the categorical characters. 0, 1, 2, 3, 4, 5, something like that. And the 3rd is one-size encoding. Create a column for each of the different categories. Then in those columns, put 1s and 0s. Meaning if yes, then 1, if no, then 0. Encode it according to yes and no. Then comes the coding. So let's split the Scikit-learn model selection train test. We've taken the same data as before, right? We'll predict the price, drop the price here, then split the data according to the same 80% to 20%, random state 0. Then we create a column here. If any is missing, then x is 0 plus true, okay? So here we're dealing with missing values. And then low cardinality. Yes, what does cardinality mean here, actually? Cardinality means the number of unique values in a column. Look, the fewer unique values there are, the larger the column, and the more granular the data will be. But the more unique values there are, okay, the more unique the column will be, okay? So it's best to have as many unique values as possible. If there are fewer unique values and all the data is completely different, then it becomes very complex, which can cause problems. So look here, it also says, what should the cardinality be? Unique less than 10. If there are fewer unique values, then it's good to go. Otherwise, there could be problems. Okay? So he thought it was better to use that cardinality less than 10. And it's also a good professional way to find unique values less than 10, right? Yeah. Right? Then extremful here, cardinality. This C means cardinality, right? Data type object, right? Then he created numerical columns here, and then my columns here, mixed all the columns, numerical and categorical. Then he made a copy of them so we could have the original data. Then xtrain.head extracted the head of the trained data, extracted these 5 rows starting, right? Then s equals xtrain.dataType object. Yeah. Now look, I have the categorical variables in method and res, right? Then he imported the random forest regressor model, then mean absolute error, and then here he called a function, right? After calling the function, it returned the mean absolute error here. After doing all this, it returned the mean absolute error. What was the first approach they used? You can see it directly here, just the categorical ones. They deleted all the categorical columns. Okay? It even gave a hint here. Here it is, I think. These are all the categorical variables. They deleted them all, okay? After deleting them, they calculated the mean absolute error on whatever numerical data was left of. So 17.5 something, which is quite good. Meaning, it's a small error, not a huge error, okay? Meaning, the error is decreasing now. Then they did ordinal encoding. Ordinal encoding means assigning numbers to all the categorical data type columns. 0, 1, 2, 3, 4, something like that. Okay? So here's the encoding for it. Transform something. Okay? Read it here, meaning the absolute error. So the approach to cardinal encoding is done here. Okay? Now, you see when I transformed, the entire data, this error was there, and it went away. The error went away with cardinal encoding. Sorry, ordinal encoding. The third approach is to convert it to one-hot encoding, 0 to 1. Okay? Here, I converted it to 0, 1, and then checked the error, and I got an even better result. 16 and 6, and what was there here? 16, 5. Meaning this is also the best. Both of these are considered the best. One, hot encoding, and this, ordinal encoding. Okay? Remember this. The codes for this are written here. You can check them if you want. So I hope you understand how to deal with missing values in numerical and cardinal. Yeah. How to deal with missing values in category, right? Same, there are 3 ways in numerical and 3 ways in categorical. Just like you saw 3 ways in numerical. First, delete the entire column. Same, delete the first column in categorical. Second, imputation means fill in the empty space with the mean, mode, median, or any constant, right?
And what was happening here in categorical ordinal encoding means assigning a number to the categorical data, 0, 1, 2, 3, something like that. Then third, there was extension of imputation, meaning not only fill in the missing values, but also create a new column and mention which ones you filled and which ones you didn't. In the same way, the same thing happens in one-hot encoding. There, many columns are created of different types. Cardinality is checked to see how many unique values there are. Then they are assigned zeros accordingly. This is called one-hot encoding. And then we move on to the next topic, which is called a pipeline. Now, to understand the pipeline, you first need to understand what you did before. You observed it. Whenever we create a model, what do we have to do? We have to clean the data. What is the purpose of cleaning the data? We have to drop columns because there are missing columns. But then you say if we drop columns, there's a problem if there are too many columns. Sorry, too much data. We'll lose them. If we drop columns, we'll lose too much data. Missing data is a big problem. So what do you do? If you have numerical data, you use imputation or an extended version of imputation, right? But if it's categorical data, you've seen ordinal encoding, one-hot encoding, all of that. You do all of this with missing values, right? You do all of that, then you also solve for errors. You also keep that in mind to avoid too many errors, right? You do so much to build a model. If even one of these things is missing, do you understand? Your model will be flawed, and that's where the problems start. So now pack it all into a bag. Pack it all into a bag and put it together in one place. This is called a pipeline. This is called a pipeline. So a pipeline is a single thing that puts all of this together and does everything. Now look at how the pipeline works here. The pipeline is the culmination of all of it, right? There's hidden code here. I do it here. So here the train test split code will be exactly the same as you've seen before. Nothing else will be new, right? Define a pre-processing step here. The pre-processing step is done here. First, we imported the pipeline from Scikit-learn, right? Now with the pipeline, you don't need to separate all these things. You can do everything in one place. So look at the numerical transformation, a simple computer constant. Constant means 0. We fill in the missing values with 0. Strategy, if there are any missing values, fill them with 0, right? What is the categorical transformation? Pipeline step equal to imputer. Simple imputer strategy, most frequent. If we look at the category, we can't find the mean and mode in categorical data. Mean means add them all together, divide by the number of mean values, but since it's categorical, how do you add them up? Okay, if you can't even find the median, then the most frequent mode is used. Mode means the most frequent mode. So the most frequent mode is filled in. Computer. Then one-hot encoding is done. Handle, ignore. Now look, it says handle unknown ignore because sometimes in testing data, this type of value appears, which confuses the model. So ignore means it says that if such a value is included in the testing data, the model will ignore it. So look, a categorical transformation was also done, and then pre-processing. In pre-processing, we brought all this in and created numerical columns within numerical values, okay, and categorical columns within categorical values. So we've done the pre-processing here. Now defining the model. Now the model has been defined. Now here we're using a random forest model. It's being fed 100 estimators, meaning 100 trees. You already know what a random state is, right? After that, here's our pipeline. We created our pipeline. The pipeline step pre-processing we did here, right? The model is also ready. Then I'll fit my pipeline on it, right? Because the pipeline has everything in it. You've done all the processing in one place. You can see you've done all the processing in one place. Now you don't have to do different things. Let's do one-hot decoding separately. Let's do ordinal separately. Let's do the emitters separately. So what is this doing? It's gathering everything in one place. The pipeline. It's like connecting all the pipes in one place, right? So there's no problem with installing 1,000 pipes. So here they calculated the mean absolute error, and look how much it's reduced. Last time you checked, the minimum was 165, but now it's 0. Okay, the pipeline smoothed it out even more. Okay, so I hope you understand the pipeline. If you don't, please let me know in the comments. Next comes cross-validation. Brother, cross-validation is a really cool thing. I hope you remember one thing last time.
I repeatedly told you that to improve the model, we divide our data into two parts. Okay? One is training data and one is testing data. Okay? You can always do more or less. 80% training data and 20% testing data. Now, do you know what the problem is? Like there were 5 columns. Okay? I'm talking about cross-validation. Okay? Cross-validation. I'm doing this just to explain it. The cross-spelling is wrong, just check it. Validation. Okay. What happens? 80% training and 20% testing. Now, what should have happened? What did the model do? Train itself on 80%, right? It was given 20% of the data. Now assume that 20% of the data was too easy by mistake. It's obvious you're not separating it by observation. You're directly splitting 80%, 20%. If that becomes easy, too easy, then what will happen to the model? It will overfit. What do you call it? Overfitting. Your model will overfit if it's easy, and if it's hard, it will underfit. It will underfit. What will happen to the model? Underfitting. There's a risk. Isn't there a risk? You see, if all the data in 20% of the data turns out to be easy, overfitting turns out to be hard, underfitting, and that's what we don't want. We want the middle part, meaning we want 20% of the data to be reliable. That's why cross-validation works. Here you'll see C equals 5. What does 5 mean? Divide this 100% data into 5 pieces. Okay? 5 means step 1. Look, step 2. I'll write step 3 here. Step 3. Step 4. Step 5. What will happen? Step 3, step 4, step 5 means that, like your model, here the data is divided into 5 pieces. Look, I'll write it here once. Okay. Let's divide it into folds. First, what percentage does fold 1 represent? 20%. Okay? Then fold 2. Here, F2. Okay? And here, F3, F4, F5. 20% here. 20% data here, 20% data here, and najungkasan data here, and gonna see and 20% data here. So the entire 100% data was divided in this way in a ratio of 20-20. Now, what does cross-validation do here? It says that when the model is trained for the first time, it will be trained 5 times in total. The first time the model is trained, this fold 1 will go into testing. This will go into testing, and all this will go into training. Okay? All this will go into what? Training. So C1 ends, cross-validation 1 ends, then CV2 begins. What will happen in CV2? This one will go into training. Okay? Then all this will go into testing. Then what will happen in the third? This one will go into, what do you say? Well, this one will go into testing. This one will go into testing. Then the rest will remain in training. Then this one will remain in testing. What is happening with this? The model is able to train itself much better. Why? Repeatedly, it's different, meaning it's training well on 100% of the data and also doing good trusting. So the tuning of the model will be very fine-tuning. Right? The model will perform quite well. So this is cross-validation. So I hope you understand cross-validation. Okay, now let's get to it. Cross-validation, I hope you understand the definition. So let me show you how they performed cross-validation. First, they took the same data. They placed the price Y within Y. Then they created the same pipeline and performed pre-processing. Okay? Then they performed cross-validation here. So look, now you might ask, why is there this -1? Actually, the result is negative. So if you add -1 times a negative number, the score will be positive. Okay? Here are the scores. The mean absolute error score is 30,000 something. These are all the scores. Okay? Actually, the mean absolute error is negative. So to remove that, we applied -1. Okay? What did we do next? We took out the average score here. Okay? Across experiments. So that was cross-validation. I hope you understand cross-validation. Then let's move on. Next up is our XGBoost model. Okay? That's called gradient boosting. Now, what does this model do? Let's go back a little bit to understand. Okay? I'll explain it. XGBoost. XGBoost stands for gradient boost. Okay? XGBoost. Bust.
Okay? Look, what did you read first? You read about decision trees. Then after decision trees, you read about random forests. Okay? Random forests. So after random forests, what are you looking at now? XGBoost, right? What's the difference between all these things, brother? What's the difference? What did the first decision tree do? It just created one tree. It created a lot of leaves in that tree. Then it gave results based on each leaf, right? What did random forest do? It created a lot of trees. Then it averaged all those trees, right? It took the average and gave the answer. What is XGBoost doing? Now notice the errors in random forest. As new models come out, they will reflect the errors of the old models. That's why new models are invented here. So it took the output of all the trees, this one tree. It took the output of all the trees. It took the output of all the trees. It took the output of all the trees. It took the output. It took the output of all the trees. It took the output of all the trees. That average was the answer. That was its prediction, right? Now imagine this. Suppose this one gave a huge error. This one gave a very high error. This one also gave a high error. This one also gave a high error. This one didn't give an error. This one didn't give an error. Now you're carrying the error along with you. Is random forest giving weight to error? No, it's removing everyone's error. If most trees give a high error, this one too will fall into error. There's a risk. So XGBoost came to eliminate this risk. What did XGBoost do? Yes, we'll take the tree. Obviously, just like random forest took a lot of trees, we'll take all the trees. But within all those trees, we'll deal with more error. For example, the first tree came in. The first tree gave an error, some error or the other. Now, the error it gives will tell the second tree, look, you're doing the work, but we'll work more on this error. Okay? I found this error, so give it more weight. Now, weight is a term used in XGBoost. That's called learning rate. Learning rate is used. Let's say I'm giving a learning rate of 0.3. So that means 30%, so I should keep it low. Not too high. So for example, the first tree gave it. Now, to whom will it transfer that error? To the second tree? So if I give the second tree a learning rate of 0.3, that means 30%. Then I'll tell the second tree, look, give the error you found from the first tree a weight of 30%. The rest of what you're finding is a different matter, but give this one a weight of 30%. Okay? So whoever pays attention to this will only pay 30% attention, right? Whereas we shouldn't pay too much attention to errors. So keep the learning rate as low as possible and increase this tree coding model. Increase the number of trees, reduce the learning rate. I think 0.05 or 6 is a more appropriate number, right? So what does the model do? It pays enough attention to the error to determine, hey, this is an error. We'll give this much weight and the rest to our own weights, right? Right? Which would be 99, 95, whatever. Right? The rest will be given weight, right? It will give weight to 0 errors. Then, after it finds an error, it will transfer that error to the third tree. So now you're noticing the error is decreasing. This one made the biggest error, then this one transferred this error to this one, then this one fixed that error, and it's reduced. Then he fixed it, and it's like that. So gradually, when you increase the number of trees to, say, 100 or 1,000 or 500, the error gradually becomes negligible. Meaning its value disappears completely. So if the error disappears, you'll get a good output. So this is your XGBoost model. Okay, what is this model doing? It's taking the error from each tree, transferring it to the next tree, and asking it to reduce it. So as the number of trees increases, the error will decrease. And then in the end, the error will become negligible and the output you get will be the best. Okay, this is called XBoost. Now the gradient boosting I was doing in XBoost is called gradient boosting, transferring the error and eliminating it as much as possible. Okay, so look at what happens here. I've already told you about the learning rate. What is a learning rate? So look, they've done the same thing here. They took out FlexBoost and trained it. Fit it on the X train and Y train. Okay. After that, they calculated the mean absolute error here. So it came out to be something like 24,000. Okay. Then what's the parameter tuning involved? An estimator, meaning how many total trees do we need to provide? Okay. After that, yes. Early stopping here. Early stopping is a very important call. Okay. It's a function. Okay. And what does this function do? It stops. How does it stop? I'll explain it to you here. Like our early stop 5 is written here. Now look, how many total trees are given here? 500 trees are given. Okay. Now early stopping 5 means what?
will the model do for the first time? It will work on all 500 trees. Then it will work on 500 trees again. Then the next tree will work on 500 trees. Then for the fourth time, then for the fifth time. So I'll tell you what happens whenever you see it. Like what did the model do? First, it worked on 500 trees. Okay? And the error that came out. The error value came out to be anything. Okay? Although it will be small. Let's say the error came out to be 20. Okay? Then it worked again on 500 trees. Then the error came out to be 19,000. So what is happening to it is decreasing. Then on 500 trees, the error decreased to 18,000. So what happens to the error gradually? It keeps decreasing, okay? What happens to the error gradually? It keeps decreasing. So the fifth time the error reaches a very low level, it will capture that error and call early stop area. What early stop does is stop it here, create the model, and then call early stop. Once your model is out, you can work on it. Now, the question is, why are you stopping early? Now, it's repeatedly reducing the error to 500. That's a good thing, isn't it? It will then work on overfitting again. What you're doing here is that by making it call all these things, you're teaching it too much. And you understand that limited knowledge is a good thing, but unlimited knowledge is detrimental. So what's happening here is that if we run the model more, it will learn unlimited things. Then when it starts giving responses, it will start giving very absurd responses. That's why it stopped early by calling the early stop function. It stopped midway. And when does early stop work specifically? When it sees that the model has significantly reduced its error, then run away. Run away before it reaches overfeeding. So what does early stopping do? It immediately removes it. Now you can see the learning right here. I told you what a learning rate is, right? It's how much value to assign to the error. So if there's any noise, remove it. Don't write it down, right? There are some locks that have errors, so don't write them down. So we've made it false, right? Now here you see an estimator 1,000. 1,000 trees are given. If you call it repeatedly on 1,000 trees, your computer hangs. That's why early stopping is used there. Wherever it sees that the error is low, it stops it and throws it away. Look at the learning rate, it's given 0.05. It's not more. What does njobs mean here? Njobs means nothing. It just tells you how much CPU it will use, nothing else. Okay? So I've explained this example completely. I hope you understood this example. Okay? After that, we'll move on to the last lecture in this course, data leakage. The biggest question mark in this course is, what is data leakage? Data leakage means when you're building a model, what are you feeding it on MoneyNet? Okay? Suppose you want to predict a price. Okay? But to predict the price, you're removing the price and giving it all the other columns, telling it to predict the price based on all the other columns, other columns. Okay. Now suppose among all the other columns you've provided, there's a column that indicates a price or hints at a price, What happens to the model? Data leakage occurs because the model has already received the price you want it to predict. So what happens? You train the model on the remaining column, and when you say, brother, tell me the price, it will predict the exact answer. It will predict. So the model will overfit, giving you a 100% correct answer. This creates doubt about how the model can be so accurate. It's impossible. So whenever you give the model a column, like I told you at the beginning, there were many columns, but only 5 or 6 were given. All the other columns were removed. Why? Because there's a risk of data leakage. Right? There's also the risk of data leakage and underfeeding and overfeeding. So here you can see the loan data. Look what they've done to the loan data. Let me explain. He imported the loan data. Okay? And he deleted the card person. He deleted the card column. Number of rows in x.save. Now you can see all the rows here. There are 1319 rows. These are all columns, okay? All these columns that contain the report. What is the age? What is the income? How many shares? What is the expenditure? How much is the owner spending? This is something, right? Okay. He has all of this. Now create a pipeline. In the pipeline, build the entire model. You can see that the accuracy is 98%. The model is absolutely accurate, meaning it's making the correct predictions. This is where the doubt arises. How can a model be 98% accurate? Because the data here has been leaked.
How did the data get leaked? Okay, look here. How the data has been leaked? Because of expenditures, because of expenses. Now you say a person who is spending money with a credit card. That means he has a credit card. That's why he's spending money. A person whose expenses are zero. What do you mean by that? He doesn't have a credit card. Is that a guarantee? If he's not spending, then he doesn't have a credit card. So here he's also considering expenditures. What does the model say about expenditures? If he spent, then he has a credit card. If he didn't spend, then he doesn't have a credit card. Okay? So what is he doing? He goes to the expenditure column and predicts from expenditures that if he's spending, then he has a credit card, which is also real. Well, if spending is high in the data set, then what are all the people? They're credit card users. But there are some who don't use credit cards, which is why the 0.2% negative result is there. Okay? The model corrected 98% because all the spenders are credit card holders. So it's corrected here. Okay? So what did he do to correct it here? The potential leak. Expenditure column is potential risk. There, it shows whether the person has a card or not and shares his risk too. Active. Now, active obviously means credit card. If he doesn't have a credit card in active, he has all the major cards, all these columns. And providing all these columns is data potential. Okay, data leakage. So what did he do? He removed this column. He kept all these columns in potential leak, then removed that potential leak. Look, x dot drop. Potential leak, axis 1, meaning all the columns of axis 1 were removed. After removing them, we train again. After training, it's the 83%. Okay, so this is called data leakage. When data leaks, how do you assign which column? You have to keep this in mind. This is called data leakage. So we've finished this intermediate machine learning as well. Okay, now we'll move on to a little bit of advanced. Then we'll learn to build models. Then we'll also learn deep learning. So I hope you understood this. If you didn't understand, please write to me in the comments. Okay, I'll make a video and write your doubts in it. And that's it for now, and happy learning. क्या क्या है इसमें? देखो, मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है? एआई, जैसे कि चैट जीपीटी, ग्रोक हो गया, डीपसीक हो गया, दोस ऑल आर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वो उसी की जो मशीन लर्निंग है, उसी की क्या है, वो एक ब्रांच है, ठीक है? वो इसका एक सबसेट है। डीप लर्निंग भी एक सबसेट है, ठीक? तो मशीन लर्निंग बेसिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे? एक तो डाटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ेंगे, फीचर सिलेक्शन, ठीक है, और मॉडल को ट्रेन करना सीखेंगे, और मॉडल इवेल्युएशन। अब सवाल ये उठता है कि ये मॉडल क्या, मैं जब बात कर रहा हूँ मॉडल की, तो मॉडल का मतलब क्या है? और मॉडल का मतलब होता है कि जैसे कि चैट जीपीटी इज अ मॉडल, ठीक है? जब भी मैं बात करूँ ना, जब भी मैं ये बोलता हूँ मॉडल, मॉडल मतलब चैट जीपीटी इज अ मॉडल, मैं एआई की बात, ठीक है? तो हम मॉडल के साथ क्या क्या करेंगे, मैं वो सारी चीजें इसमें कराने जाऊंगा। तो मॉडल को तैयार करने के लिए मैं क्या क्या करना पड़ता है? डाटा प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, फीचरिंग करनी पड़ती है, तो फिर जाकर के मॉडल को ट्रेन करा जाता है, फिर उसको इवेल्युएट करना, ठीक है? अब मशीन लर्निंग काम कैसे करता है, ठीक है? जहां पर देखो, अब तुम वैसे ये भी पूछोगे कि ये सब मैंने कहाँ से कंटेंट तैयार किया है, तो ये मैंने तैयार किया है गीक फॉर गीक्स। आई होप ये वेबसाइट की होगी तुमने। geeks4geeks.org वेबसाइट है, ठीक है? और बहुत अच्छी तरीके से उसने मशीन लर्निंग को पढ़ाया भी है। मशीन लर्निंग का कंप्लीट ट्यूटोरियल है उस पे, गीक्स फॉर गीक पे, तो वहां से भी आप जाके देख सकते हो। तो इसमें देखो, सबसे पहले क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट, फिर डाटा को कलेक्ट करा जाता है, फिर डाटा को क्लीन किया जाता है, फिर डाटा को एनालाइज किया जाता है, एंड एक्सप्लोर किया जाता है। कैसे एक्सप्लोर किया जाता है? ईडीए के थ्रू, मतलब एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। उसके बाद डाटा को मॉडलिंग की जाती है, फिर उसके बाद उसका डिप्लॉयमेंट किया जाता है, ठीक है? ऑप्टिमाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, ठीक? तो होता क्या है? मशीन लर्निंग यूज केसेस, मशीन लर्निंग यूज किस पे होता है? इन जनरल आपने देखो, वैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल इसने दिए हैं। इमेज रिकग्निशन, इमेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए मशीन लर्निंग का यूज होता है, ठीक? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, एनएलपी। अब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस क्या है, मैं वो आपको बता दूंगा अभी 1 मिनट बाद। रिकमेंडेशन सिस्टम क्या होता है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होता है, ये सारी चीज क्या होती है, मैं वो समझा देता हूँ, ठीक है ना? तभी आपको समझ में आएगा कि मशीन लर्निंग कितना जरूरी है पढ़ना हमारे लिए।
अब देखो, इमेज रिकग्निशन इन जर्नल, जब आप अपनी इमेज को चैट जीपीटी को देते हो और बोलते हो कि भाई इसको गिबली में कन्वर्ट कर दो या किसी में भी कन्वर्ट कर दो, तो कैसे कर पाता है भाई? वो उसको रिकग्नाइज करता है। वो उसको रिकग्नाइज करता है, रिकग्नाइज करने के बाद उसके जो भी फीचर्स है उसके अंदर फीचर के अंदर चेंजेस लाता है, ठीक है? दैट इज कॉल्ड इमेज रिकग्नाइजेशन। अब इसमें देखो, यूज्ड इन फेशियल रिकग्निशन, फेस को रिकग्नाइज करना, सेल्फ ड्राइविंग कार, कार अपने आप चलती है, कौन चलाता है? एआई चलाता है, ठीक है ना? वो भी एक मॉडल कार चलाता है। एंड मेडिकल इमेज। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इसका मतलब है कि पता है क्या हुआ था? ये सन 1950 में हुआ था, जब एलन ट्यूरिंग ने ये लाइन लिखी थी कि कैन मशीन थिंक, क्या मशीन सोच सकती है? जब ये बात एलन ट्यूरिंग ने लिखी थी, तब ये एनएलपी का कॉन्सेप्ट आया था कि एनएलपी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से हेल्प करता है, एनएलपी कैसे हेल्प करता है कि मशीन सोच सके और इंसानी भाषा को समझ सके। ठीक है, वो किस तरीके से उसको समझ सके, मतलब जैसे कि सपोज करो, आप इंग्लिश में, बात करते हो ग्रोक से और चैट जीपीटी से बोलते हो कि भाई मुझे तुमने जो भी मशीन लर्निंग का समझाया ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब ये कौन सी भाषा है? ये नेचुरल लैंग्वेज है। नेचुरल लैंग्वेज कौन सी होगी? लोकल लैंग्वेज, जो भी आप अपने डेली लाइफ में लैंग्वेज यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड लोकल लैंग्वेज। तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी? नेचुरल लैंग्वेज। और उस भाषा को भी एआई समझ पा रहा है। कैसे समझ पा रहा है? ठीक है, वो एनएलपी की वजह से समझता है। अब रिकमेंडेशन सिस्टम, नेटफ्लिक्स में, या चलो नेटफ्लिक्स तो मुझे नहीं पता आप लोग चलाते नहीं चलाते, बट अमेजोन सब चलाते हो, ठीक है ना? अमेजोन आप सब लोग सर्च करते रहते हो। तो अमेजोन किस तरीके से आपको चीजों को रेकमेंड करता है, डेली बेसिस पे क्या क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे? अमेजोन पे मान लो आप लैपटॉप सर्च कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान ज्यादा सर्च कर रहे हो, तो बाय डिफॉल्ट अमेजोन आपको ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सामान ही रेकमेंड करेगा। कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग। एक मशीन लर्निंग का मॉडल होता है जो इंटीग्रेट होता है हर एक वेबसाइट पे, और वो इंटीग्रेट होकर के हर एक चीज को आपको शो ऑफ कर देता है कि भाई आपका ये रिकमेंडेशन है, तो उसके हिसाब से आपको चीजों को रेकमेंड करते जाता है। बिल्कुल वैसे से इंस्टाग्राम में आपने मान लो सर्च ऑप्शन पे जाकर के कुछ सर्च करा, किसी की वीडियो सर्च करी, तो उसी से रिलेटेड आपको वीडियो दिखने स्टार्ट हो जाएगी, स्टोरीज वगैरह ये सब दिखने स्टार्ट हो जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग। अब प्रिडिक्टेड मेंटेनेंस, अब वो खुद भी प्रिडिक्ट करता है, जैसे डिटेक्ट मशीन इशू बिफोर दे हैपन, ठीक है ना? पहले ही कुछ हो जाए उससे पहले ही वो प्रिडिक्ट कर देता है कि भाई ये होने वाला है, पहले इससे आपको बचा लो, ठीक है ना? अब मशीन लर्निंग 3 पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन से पार्ट में? जहां तक किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। हेलो दीपू, क्या हाल है? ठीक है, तो कहाँ पे थे हम लोग भाई? हाँ, यहाँ रिकमेंडेशन का मतलब ये 4 स्टेप्स है, ये समझ पाया मशीन लर्निंग किस तरीके से क्या काम कर रहा है, ठीक है? तो मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पे। मशीन लर्निंग 3 पार्टों में डिवाइडेड है। पहला, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये 2 एडिशनल भी आ चुके हैं जिनके बारे में स्टडी की जाती है, सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये दोनों क्या है? सबसे पहले हम इन तीनों को समझते हैं, ये तीनों है क्या चीज? सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो देखो, सुपरवाइज लर्निंग वो होती है ट्रेन मॉडल ऑन लेबर। मतलब देखो, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो, आपने एक रोबोट बनाया, ठीक है? अब उस रोबोट को क्या कर रहे हो आप? लेबल करके दे रहे हो। लेबल क्या? जैसे कि आपने कैट, डॉग, ठीक है, बटरफ्लाई, इनकी इमेजेस ली और उनके इमेजेस पे आपने नाम मेंशन कर दिया कि ये कैट है, ये बटरफ्लाई है और ये डॉग है, ठीक है? इन तीन की फोटो दी और इन फोटो के नीचे इन तीनों के नाम लिख दिए, या आपने डाटा को लेबल करके दे दिया। उसको लेबल करने के बाद ऐसे आपने 50-60 फोटो दे दी। आप क्या करते हो? मशीन, अपने मॉडल को बोलते हो कि इन सभी की फोटो देख और इन सभी के फोटो के हिसाब से उनका नाम देख, और
अपने ब्रेन के अंदर स्टोर कर ले, दुनिया में ऐसी कोई भी चीज दिखाई दे, उससे रिलेटेड दिखाई दे तो उसको कैट बोल। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो कैट, डॉग और बटरफ्लाई की, या किसी की, कैट, डॉग और क्या बोला था मैंने, बटरफ्लाई शायद, इन तीनों की फोटो दे दी आपने। तीनों की फोटो देने के बाद अब उस मशीन के पास कोई थर्ड बंदा आकर के एक डॉग की फोटो भेज देता है, तुरंत डिटेक्ट कर लेगा, अरे ये तो डॉग है। क्यों डॉग है? क्योंकि जो पहले तुमने लेबल करके डाटा दिया था ना, मशीन को आप तैयार करते हो इस तरीके से ताकि वो पूरे डॉग को समझ सके, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या फंक्शनैलिटी है, क्या चीज है, एवरीथिंग को वो एनालाइज कर लेता है। वो भी टॉप लेवल पे, बहुत अच्छे लेवल पे उसको एनालाइज कर लेता है, ताकि कोई थर्ड बंदा या फोर्थ बंदा, जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग भाई चैट जीपीटी यूज करते हैं, ग्रोक यूज करते हैं, तो हम लोग उसे क्या करते हैं, कैट की फोटो भेज देते हैं, डॉग की फोटो भेज देते हैं, वो 2 मिनट में बता देता है, दिस इज द कॉट, दिस इज द कैट, दिस इज द डॉग, दिस इज द बटरफ्लाई। 2 मिनट बता देता है। कैसे बता देता है? क्योंकि उसके पास ना इनबिल्ट डाटा है, डाटा लेबल्ड में उसके पास ऑलरेडी है। उसके पास क्या है, डाटा ऑलरेडी है। तो इसे कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग। तो सुपरवाइज लर्निंग में हम डाटा को कैसे देंगे, अपने मॉडल को पूरा तैयार करके देंगे। हम पूरे हर एक डाटा पे लेबल लगाएंगे, लेबल लगा करके हम अपने मॉडल को देंगे कि देख भाई, ये सारी ये चीज है, ये सारी ये चीज है, तो उस हिसाब से उसको अच्छे से सीख ले, क्या क्या चीजें मैं तेरे को दे रहा हूँ। फिर उन चीजों के बेस पे दुनिया में तो कोई भी चीज देखेगा, तुरंत तो डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा मुझे ऐसे काम करना है। ठीक है, तो इस तरीके से इसे कहा जाता है सुपरवाइज लर्निंग। ठीक है, आई होप कि सुपरवाइज लर्निंग थोड़ा बहुत सही समझ में आया हो, क्योंकि हम स्टार्टिंग ही अपनी सुपरवाइज लर्निंग से करेंगे, एंड देन विल गो अहेड फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग एंड देन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होता है और रीइंफोर्समेंट लर्निंग क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। एक मिनट में अपना यार वाईफाई। ठीक है, देखो, फाइंड पैटर्न और ग्रुप इन अनलेबल्ड डाटा लाइक क्लस्टरिंग और डायमेंशनली रिडक्शन। देखो ये क्या होता है अनसुपरवाइज लर्निंग, मैं वैसे समझाता हूँ। जिसे सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आप हर एक डाटा को लेबल करके दे रहे हो, हर एक डाटा को क्या कर रहे हो, लेबल करके दे रहे हो। अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आप डाटा को ना लेबल करके नहीं दोगे, लेकिन आप डाटा को जैसे कि सपोज करो, मैंने मॉडल को कैट की फोटो दे दी, डॉग की फोटो दे दी, बटरफ्लाई की फोटो दे दी, बट मैंने नाम नहीं लिखा, सीधा मैंने फोटो भेज दी। सीधा मैंने क्या करा, फोटो भेज दी। और अब मैं मॉडल को बोलूंगा, इन सभी फोटो को देख और खुद इनको लेबल कर। इन फोटो को देख और खुद इनको लेबल कर। तो वो क्या करेगा, बटरफ्लाई की फोटो देखेगा, कैट की फोटो देखेगा, डॉग की फोटो देखेगा। अब ये अपने दिमाग के अंदर एक इमेज बना लेगा। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि एक नया नया छोटा छोटा बच्चा होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसकी उंगली पकड़ के बोलते हो दिस इज कैट, तो वो बच्चा अपने ब्रेन के अंदर उसको एनालाइज करता है, ओ ये बिल्ली है। तो रियल लाइफ में जब वो बिल्ली को देखता है तो वो कैट कैट चिल्लाने लग जाता है। तो इसी तरीके से आप मशीन को भी सिखा रहे हो, मॉडल को भी क्या कर रहे हो, सिखा रहे हो आप। तो होगा क्या, अनसुपरवाइज लर्निंग में आप नाम नहीं बताओगे, फोटोज दे दोगे, सारी फोटोज देखोगे कि आप खुद से सीख। तो वो क्या करेगा, उनको खुद से लेबल करेगा। लेबल करने के बाद तो दिस इज कॉल्ड अनसुपरवाइज लर्निंग, जहां पर आप डाटा में लेबलिंग नहीं करोगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मॉडल कैसे काम करेगा, जैसे मान लो आपने 1000 पिक्चर दे दी, जिसमें आपने 100 150 डॉग की पिक्चर दे दी, अलग अलग डॉग की दे दी, 100 150 आपने अलग अलग कैट की पिक्चर दे दी, 100 150 आपने अलग अलग बटरफ्लाई की पिक्चर दे दी। तो पता है क्या करेगा, क्लस्टरिंग करेगा। क्लस्टरिंग मतलब ग्रुपिंग करेगा, डाटा को इकट्ठा करेगा कि ये और ये फोटोज, इनके फीचर एक जैसे मिलते हैं। जैसे एक डॉग है, ठीक है, दूसरा भी डॉग है, इनके फीचर एक जैसे मिल रहे हैं, तो उनको क्लस्टरिंग करेगा, एक ग्रुप में इकट्ठा कर लेगा। कैट को ग्रुप में इकट्ठा कर लेगा, बटरफ्लाई को ग्रुप में इकट्ठा कर लेगा। ठीक है, तो फिर उनको एक लेबल देगा कि भाई मैं इसको ये बोलूंगा, इसको बी बोलूंगा, इसको सी बोलूंगा। इस तरीके से मॉडल काम करेगा अनसुपरवाइज लर्निंग में। तो सवाल उठता है, व्हाट इज री इन्फोर्समेंट लर्निंग। री इन्फोर्समेंट लर्निंग का मतलब होता है कि यहां पर ना तो मैं डाटा लेबल करके उसे दूंगा, ना तो मैं डाटा उसे नोट लेबल करके दूंगा। मैं उस मॉडल के सामने पूरी दुनिया रख दूंगा, उसको बोलूंगा खुद से सीख भाई, मैं तेरे को कुछ नहीं देने वाला। तो जितना सीखेगा उतना मैं तेरे को रिवॉर्ड दूंगा। सपोज करो मैं उसकी आंखों के सामने, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि मान लो एक व्यक्ति जो समुद्र में छोड़ दिया आपने उसे नाव के बीच में, उसे नाव चलानी नहीं आती। ठीक, अब वो जब अपनी मौत देखेगा तो जाहिर सी बात है वो नाव चलाना सीख जाएगा। तो री इन्फोर्समेंट लर्निंग कुछ ऐसी है, मॉडल को आप ऐसी खुला छोड़ दोगे, ठीक है ना,
अब खुला छोड़ने के बाद उसको बोलोगे तेरी आंखों के सामने जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ना, उन सबसे सीख, वो चीजें क्या है उसको खुद से लेबल कर, और क्यों है खुद से लेबल कर, क्यों हो रहा है खुद से एनालाइज कर, खुद से सीख, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। वो क्या करेगा, एक एप्पल उठाएगा, वो उस एप्पल के फीचर को एनालाइज करेगा कि अच्छा ये ऐसा दिखाई देता है और उसका टेस्ट ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह। तो एप्पल बनाना इन सबको क्या करेगा, खुद ब खुद एनालाइज करेगा, तो पूरी दुनिया इसके सामने दे दी जाएगी। और इसमें एक रिवॉर्ड होता है। रिवॉर्ड क्या होता है, वो जितना डाटा को एनालाइज और सीख लेगा, हम उतना उसे और ज्यादा डाटा देते जाएंगे कि और तू सीख और तू सीख। दिस इज कॉल्ड रिवॉर्ड। ठीक है। तो सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग और सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है? सेल्फ सुपरवाइज लर्निंग में जहां पर लेबल डाटा ऑलरेडी उसके पास होता है, अब उसी लेबल डाटा के आधार पर उसे कोई और चीज मिलती है ना, तो वो खुद से सीखने की कोशिश करता है कि ये मेरे पास नई चीज आई है, तो वो उसे खुद से सीखने की कोशिश करता है। ठीक है। अब इसे कहाँ पे यूज करा जाता है आपको मालूम है यार? सेल्फ ड्राइविंग में इसको यूज करा जाता है। ठीक है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग में दिस अप्रोच कंबाइन स्मॉल अमाउंट ऑफ लेबल डाटा, बहुत ही कम अमाउंट का लेबल डाटा दिया जाता है, बहुत ही कम अमाउंट का डाटा दिया जाता है जिसमें लेबल लगा होता है, और बाकी के डाटा में लेबल नहीं होता, मतलब बाकी के डाटा में नाम नहीं लिखा होता, अनलेबल होता है। तो वो खुद ब खुद अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपनी नॉलेज के बेसिस पे वो खुद एनालाइज करता है कि कौन सा डाटा क्या है और कौन सा डाटा क्या नहीं है। मैं ठीक हूँ दीपू, तुम कैसे हो? और कब से ट्यूशन आ रहे हो दीपू तुम वैसे? ठीक है। तो ये हो गया सुपरवाइज, अनसुपरवाइज, रीइंफोर्समेंट लर्निंग, सेल्फ सुपरवाइज, सेमी सुपरवाइज। इनमें कोई डाउट है तो मुझे बताओ। ठीक है। मशीन लर्निंग पाइपलाइन। ठीक है। अब उसके बाद हम आगे चलेंगे, बट यहाँ तक मुझे बताओ, अगर कुछ कोई टॉपिक समझना हो सुपरवाइज के बारे में, दोबारा समझना हो क्या होता है सुपरवाइज, क्या होता है अनसुपरवाइज, और क्या होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, ये पता भी होना चाहिए। वो दीपू, और कब से पढ़ने कब से आ रहे हो तुम? यहाँ तक किसी का कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो यार। क्या बोल रहे हो? समझा नहीं, सोच रहा सर। क्या सोच रहा हूँ आऊँ कि नहीं, कि ना आऊँ कुछ दिनों में सर? ये सही है। पढ़ाई के लिए तुम अभी सोच रहे हो कि तुम्हें पढ़ना है नहीं पढ़ना? तो भाई यहाँ तक डाउट है तो बताओ। ठीक है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है और कुछ भी नहीं है। ठीक है। मेन तो देखो, अब आप, मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, इसको मैंने 5 मॉड्यूल में बांटा हुआ है, हालांकि गीक्स फॉर गीक में भी 5 मॉड्यूल में बांटा हुआ है। एमएल वर्कफ्लो पढ़ेंगे हम, फिर डाटा क्लीनिंग पढ़ेंगे, फिर फीचर स्केलिंग पढ़ेंगे, फिर डाटा प्री प्रोसेसिंग इन पाइथन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है ना? ये मॉड्यूल 1 में ये 4 कवर करेंगे। फिर मॉड्यूल 2 में हम सुपरवाइज लर्निंग स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल बेसिक होगा मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में हम सुपरवाइज लर्निंग स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन की हेल्प से हम मॉडल को तैयार करेंगे। ठीक है। देखो, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्री भी पढ़ेंगे, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ठीक है। ये सब पढ़ेंगे हम। और उसके बाद मॉड्यूल 3 पे आएंगे हम, जहां हम अनसुपरवाइज लर्निंग का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अनसुपरवाइज में क्लस्टरिंग, एसोसिएट रूल, माइनिंग, डायमेंशनल रिडक्शन, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम मॉड्यूल 4 जो कि री इन्फोर्समेंट लर्निंग पढ़ेंगे। ठीक है। री इन्फोर्समेंट लर्निंग हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। ठीक। मेन हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज पे ज्यादा फोकस करेंगे। मॉड्यूल 5 होगा सेमी सुपरवाइज लर्निंग। ये भी थोड़ा बहुत देखेंगे क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके बाद हम अपने मॉडल को डिप्लॉय करेंगे, डिप्लॉय करना भी सीखेंगे, इसमें किस तरीके से डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है। तो बस 6 तक आपके मॉड्यूल्स होंगे, जहाँ पे हम या पूरा मशीन लर्निंग का कंप्लीट कर देंगे।
ठीक है। अब मशीन लर्निंग का लाइफ साइकिल दिखा देता हूँ मैं आपको, इसका लाइफ साइकिल क्या है। रुक जाओ, मैं इसको ना उसी वक्त नहीं करता हूँ। देखो मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल क्या होती है, इसमें देखो मशीन लर्निंग ये वर्क फ्लो है, ठीक है ना। ये वर्क फ्लो में हम क्या क्या पढ़ेंगे, प्रॉब्लम डेफिनेशन, डाटा कलेक्शन, डाटा को कैसे कलेक्शन किया जाएगा, प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व कर, मतलब प्रॉब्लम को पहले समझेंगे, इन सब चीजों को मैं डिटेल में समझाऊंगा, पहले मैं बता दूं क्या क्या पढ़ाने वाला, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स कवर होंगे, ठीक। और मैं बताऊंगा ये मशीन लर्निंग लाइफ साइकिल किस तरीके से काम करती है, ठीक। स्टेप वन, हम प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर डाटा को कलेक्ट करेंगे, फिर डाटा को क्लीन एंड प्री प्रोसेसिंग करेंगे, फिर हम डाटा को क्लीन एंड प्री प्रोसेसिंग प्री प्री प्रोसेसिंग सॉरी प्री प्रोसेसिंग करने के बाद, ये बहुत लंबा, ये जो डाटा क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग है, ये बहुत लंबा चलेगा, ठीक है, बहुत लंबा, ठीक है। इसमें बॉक्स प्लॉट हम पढ़ेंगे कि बॉक्स प्लॉट क्या होते हैं, क्योंकि आउटलायर जैसे आ जाएंगे ना, जहां डाटा क्लीनिंग में आउटलायर्स आ जाएंगे, वहां पे दिक्कतें खड़ी होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आउटलायर के साथ डील करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही हद से ज्यादा जरूरी है। और आउटलायर के लिए हम बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं, तो बॉक्स प्लॉट हमें, जो बॉक्स प्लॉट होता है वो हमें आउटलायर को डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो हम बॉक्स प्लॉट की स्टडी करेंगे कि किस तरीके से बॉक्स प्लॉट को बनाया जाता है, ठीक है। और हम क्वार्टाइल पढ़ेंगे, क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटेज क्या होता है, परसेंटाइल क्या होता है, ठीक है, ये तीनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक। ये क्वार्टाइल के बारे में दिखा रखा है, ये सब पढ़ेंगे डिटेल्स में, ठीक। परसेंटाइल भी पढ़ेंगे, परसेंटेज परसेंटाइल, ये रहा परसेंटेज परसेंटाइल, ठीक है। और जैसे ही हमारा आउटलायर का सारा काम हो जाएगा, फिर हम डाटा ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, एंड देन एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, ठीक है। चौथा स्टेप हमारा क्या होगा, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस, मतलब डाटा को ग्राफिकली हम एनालाइज करके देखेंगे कि क्या हमारे पास रिपोर्ट्स आई है डाटा, ठीक है ना। फिर जब एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस में हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, फिर हमारा अगला स्टेप क्या होगा, ये सारा एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस है, ठीक है, ठीक है। आगे का मैंने अभी बनाया नहीं है, जैसे ही बना दूंगा मैं बता दूंगा आपको। तो ये सारी चीजें हैं जो हम वन बाय वन पढ़ेंगे, तो इस वीक तक मैं पूरी कोशिश करूंगा वर्क फ्लो का पहला पार्ट तो कम से कम खत्म कर लूं, मतलब एटलीस्ट हम डाटा क्लीनिंग एंड एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस को तो खत्म कर दें। तो जहां तक किसी के कोई सवाल पूछ रहे हो तो मुझे प्लीज बता दो। Command Pro J. Okay, those who don't have Jupyter Notebook installed, please do pip install Jupyter. Okay, just type that, and your Jupyter will be fully installed. Okay, right? Pip install Jupyter. You only need to type Jupyter. There's no need to type Jupyter Notebook, just Jupyter. Your Jupyter Notebook will be installed. Okay, but I already have it, so I'll launch it directly. Okay, I'll publish it directly to Jupyter Notebook. And then I'll start working on it. Okay, I'll wait a bit. Okay, so I'll create a new file here and name it ML class first. Okay, I'll name it ML class first so I can remember it. Next time, open it, and I've created this file with the name ML class 1. Okay? So first, let's see. Yes, brother, what is a problem definition? What is the problem definition? What do you mean by this? Look, what does problem definition mean? First, you'll need to understand your stakeholders, or the company you're going to model.
Why do you want a model built? What is machine learning? Yesterday, I explained a little about what machine learning actually is. For example, there's a teacher, an English teacher, a mathematics teacher, a physics teacher. So, who is the machine learner? Who is a machine learner? A machine learner is also a teacher, but not a teacher of humans. He's a teacher of machines, right? Just like a physics teacher teaches physics. Similarly, a machine learner is called a machine learner. If you learn machine learning, you'll learn to teach machines. Meaning, once you learn machine learning, you'll start teaching machines. How will you teach? Supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning. First, you'll teach machines according to supervised learning. How will you teach now? Yesterday, I told you that in supervised learning, we label the data, right? Now, imagine I'm teaching someone math. It's not like I just randomly picked up a chapter on probability or calculus and started teaching. Will any child be able to learn it? No one will, because I haven't arranged it systematically. Similarly, when you become a machine learner, you'll start teaching the machine. So, when you start teaching the machine, solely you do it, you'll proceed systematically, right? So, what does systematic mean? First, you look at the data. What does data mean? Whatever exists in the entire world. Now, let's not talk about the world. Let's talk about the company. A company comes to you, any ABC company. They say, look, I'm having a problem. I'm having this problem. I have an e-commerce company, and I can't figure out how many people are visiting. How many are coming? How many are buying? Okay? I've set up the algorithm, but I'm still having trouble. I can't identify that many people. How many people will buy? How many people won't? So, build me a model, a technical model A, that can automatically detect this. Okay, right? It can detect and predict that this person who has come will buy 99% of the time. And this person who has come may be looking at the clothes, but won't buy. He will run away. He will run away after looking at them. So, how will all this prediction be made? So, who will do this? This will be done by your machine learning model. You will build that model. So to create that model, you will first teach that model to that machine. Okay, brother, look, I saw problems in this company. So, first of all, you will ask the company about the problem. This is called problem definition. After the problem definition is done, you will collect data from them. Okay, I understand that there is a problem in your sales. Okay, so you give me the entire sales portfolio. He will give you the entire sales portfolio of the company. Okay, brother, look. Here again, so many people visited, their age was so much, they bought this, sold that, etc., etc., etc. Whatever the data is, now there are two types of data, okay? There is raw data, and there is also primary data. There is also secondary data. So, what is primary data and what is secondary data? You get secondary data at some level, okay? But I would say never believe that the data you have is at the level. I would say that you should first check it yourself whether there is actually cleaning in the data or not. You need to check that very much, right? What is primary data? You're collecting data yourself by going to websites. Imagine you need to analyze a stock. What would you do with that stock's data? You'd go to the NSE website and get it. You'd go to the BSC website. You'd go to that company's own website and get its financial statements. You'd pull out statements for 5 years, 2 years. So what is all this? It's raw data. All of this is primary data, but secondary data is already being obtained from somewhere. Someone is collecting it and giving it to you. That's called secondary data. So, you understand the process of data collection. I hope you now have the data. After receiving the data, how do you clean it? Right? So, this is machine learning. How does it work? First, you understand the problem. Then you collect the data. Then you pre-process it. Then you clean and pre-process it. Then you do exclusive data analysis. Then we will study feature engineering later, right? We will work according to the entire process and prepare a model, right? So, I have already told you about problem definition. Taking the problem from the company is problem definition, collaboration, work together, right? You will collaborate with stakeholders. You will discuss, you will ask what problems are coming in the business. It is very important to have clarity because look, if you teach your model, your machine something wrong, teaching wrong is exactly the same. Suppose you are teaching physics or math to someone, and if you taught wrong physics or wrong math, then whatever problem he will face in real life, he will make wrong predictions. Obviously, he will give wrong answers to the public, so what will happen because of this? Your model
The person you taught will get spoiled. Your model will get spoiled. The person you taught will get spoiled. So that is why clarity is very important. It is very important. It is very important to have a foundation. Right? So after that, we will collect the data. Now, Eshe, I've told you about data collection, okay? Response, quantity, quality, right? Diversity, I've already explained everything. You can read it later if you want. Now, let's move on to data cleaning and pre-processing. Look, let me first clarify where I got all this data from, okay? This is the website, gsgx.org.com, okay? From there, Usha, I did the entire machine learning tutorial. If you click on it, wait, you'll be taken to Gig for Gig. Look, I clicked and came here, okay? So it will show what I have right now, okay? So how will we clean the data? How to perform data cleaning. Data cleaning, okay? So here, it also explains the removal of unwanted observations first, okay? Then fixing structural errors. Then managing unwanted outliers. Handling missing data. So we'll proceed accordingly, okay? So, he's given us the Titanic dataset. If you click on it, the CSV sheet you have will download, okay? I already have this downloaded. I'll extract it. Just a minute. Okay? So I'll cut and copy this. Sorry. Okay? And what do I do here? Create a folder called Machine Learning. Okay, and paste it in there. Okay, now, whose data is this? First, let me tell you, this is the Titanic dataset. I heard about the Titanic boat. What accident happened? So, what was the problem with that boat? A lot of people died, almost. Okay. Hi Yashpatak, how are you? I'm doing very well. Yes, tell me, how are you? So, what will we do with this Titanic dataset that we have taken? Now, what will we do with this dataset, beneath this Titanic dataset? We'll create our own model, and what will that model do? The model will tell us, it will predict ASA, right? What will it predict based on? For the dataset, we'll clean and characterize all the data we have about that boat, and with the help of neural networks, we'll feed it into our model's brain. You'll tell it to learn from this data. After learning, tell us how many people survived and how many didn't. A human can do this, no doubt, but what can a human do? They can be quite confused, and it will be very time-consuming. It can take a month, even 2 months. But if we give the model this entire data, cleaned and fine-tuned, then the model will make the same prediction in a matter of seconds, right? If you ask a person for a prediction, he will take a month or a week to tell it. He will tell the same prediction in a second. That brother, so many people will be able to survive. So many people will not be able to survive. And he will also give the reason for it. Even if you ask a person that if so many people will survive, then why? Then the person will answer that brother, it will happen because of this, and if they will not survive, then why will he give this? Similarly, your model will also give the same answer that why is it surviving? Why is it not surviving? So, Yashpatak, well, thank you very much. Yes, brother. So I hope this must have become clear to you. Okay? What will we do with the model? We'll take the Titanic dataset. After taking the Titanic dataset, we'll train our model on that dataset so that the model can predict how many people on the Titanic boat will survive and how many will not.
With its help, we'll learn what machine learning is. Right, as we build the model, L&E we're obviously working on machine learning. So, what's the first thing we'll do? The first thing we'll do is import our libraries, Pandas and NumPy, so we can deal with the CSP file. Right? So what will I do? First, import PDAs as PD, Pandas as PD. Right? After importing these, import NumPy. Import NumPy as NP. Right? I've imported both. Right? After importing, I need to bring the data I already had here. I also need to bring the Titanic dataset here. So how will you do it? Now, see why PDAs is written as PD? I'll give you the reason for this. Okay? I'm creating a data frame. Inside this data frame, this entire CSP file will fit. How will it fit? With the help of Pend. Okay? So you have two options. If you didn't import from SPD, what would you have to write? You would have to write the entire PSP.read under CSV. Okay, now you see you have to write the entire NMP pend. Okay, so what's the best option? You can just write the PSP directly. Okay, even if you write the PSP directly, it will fit. Now what needs to be put in this code here? The address at which this file is located, I'll copy it from the top and paste it here. Then I'll put another backward slash here. Then I'll name it. Okay? Renee, I'll name it. I'll copy it. Copy and paste it. Then don't forget to write .csv. Now here, I'll name it df.head. What does head mean? I'll explain everything about that too. Okay? Okay. So, I hope you're importing any CSV file. What do? You can also type in pd.read_cs. However, you can press either Alt or Tab, and it will display this option. Pressing Tab will display this option, okay? After that, you need to enter the address here, inside the quotes. First, this address appears here, okay? After the address appears, what do you need to do? You need to get its name. Copy and paste its name here. After copying and pasting the name, what is its extension? If it's CSP, else type .csbsp. After writing CSP, what does df.head mean? df.head means it has a lot of data. Look, this part is called row SITA, which is this horizontal line. This row and this column are called columns, okay? This is called column. So head means it displays the data in the top 5 rows. The top 5 rows mean 1, 2, 3, 4, 5. If you write 1, 2, 3, 4, 5, 10, then it will give 5 tables from the bottom. I don't know how much data set is there from the very bottom. We will read about it now. Okay? So what is the benefit of this? We get to know the columns. What kind of indexing has been done on the columns? It has done this indexing 0, 1, 2, 3, 4. It has given the data of survive 0, 1, something survive. PC class name has given the names of the people. Here it is. Okay? Sex, male, female, whatever the gender. What is their age? 22, BSS 38, BSS 26, BSS, SP, whatever it is. What are all these? Hey, what are all these? It's a data set. So, what will we do after fetching the data? We'll check for duplicate values. So, how will we check for duplicate values? We've written the data frame as df.a, duplicated. Okay, so this is the formula for duplicates. So I checked that there are no duplicate values in the entire data set. Okay, there are no duplicate values. So what will we do? We'll extract the information about the data. What does info mean? What is the data like? Look, this is a column. This is a column. This is a column. What is the data stored in each column? Is it categorical, numerical, or nominal? Okay? So what will we do? df.info, df.info. Clicking this will bring up data for each column. This is the first column, the second column, the third column, the fourth column,
and the fifth column. Now, look at each column. Integer means what is the value? 1, 2, 3 in this also, be his. 1, 2, 3 in this also, be his. Object. Object means what kind of categorical data is there in it. Like my name is Mustaqalam Outlier. Okay? In this way, it is categorical data, sex brother. Obviously, it is male, female. That too is a categorical data. Age, age now. See, you know the meaning of float, float. If you have studied Python, look, I've already taken the course of Python. If you want, you can go and see now, which is the floating data. The ones with points are decimal numbers. Up E. 1.5, 1.3, test Y. So look, up E. 22 years and 6 months. Nelly, then 22.6 will mean whatever it is, up E. Up E now. Ticket is objective. Fare is also floating data. Cabin is objective. Okay. So we have come to know the nature of this data. Now what will we do? Now what will we do? Call from this entire data. Out of the entire data, how many columns have categorical data? I'll separate out the numerical columns. Now, let's keep in mind how I'm writing the code. Okay? So what am I doing here first? Categorical data. Okay? Categorical data. Categorical data. Okay? Or categorical columns. I'll separate the categorical columns. So how do I do that? Here, I will create one by calling cat. I will call variable cat, just like we do in Python D. See, I've already taught Python. Then it's call for call-in df.column. See what is written, call for call-in df.column. D means the columns in the data frame if column rid, if the data type of the column is .d type, type E, rid. Okay? If D is what it is, full, it is object. See how I've written call for call in dataframe.column. If the column in the data frame, I, if the data type of that column is object, then print it. So what will I do? Scene print, print, print. Scene, so you print categorical data, categorical spelling. Okay, yes, categorical column. Okay, D. Comma, Raken, what is a variable? Bacon. Cat underscore call, bacon. Okay, look here, I will cut it. Shear, you write C and press tab. She, it will give you an option. Bacon, press tab, shear. So look here directly if you want that, okay? Now I have got the categorical column, okay? Now what am I going to do? I'm going to take a numerical column. So here's the numerical column, okay? To create a numerical column, I'll do the same thing. num under col equals sam code E. You'll write the same. Okay? Call for call, call for call. Call for call in df.columns. Look, don't write columns. Never write columns. Never put an S. If the data type of the column of the data frame in df is not equal to the data type.dtype, its data type is not equal. Now, look. Here, when it says equal object, f. If it's not categorical and not object, f, then it's not equal. Which one is not equal? Of an object. If it's not equal to an object, oh, then what does that mean? It's numerical data, okay? So obviously, what's the matter? It's numerical data. So what am I going to do, brother? I'll print it, the numerical data. Print. Numerical data. Numerical column, sorry, I am saying data. I will get numerical columns separately, okay? And what variable did I create for this num m underscore call? Okay? Now if I press Shift Enter, it will launch it. Okay? Press Shift Enter. So see which are the categorical columns. Name, sex, ticket, cabin, and MB. Okay, what are all these columns have all the categorical data. And in all these, passenger ID survived PC class, what data is there in all these, numerical data is there in all these. Okay? I hope this is clear. If anyone has any doubt till here, then please let me know, friend.
Please let me know if anyone has any doubt till here. Then, if anyone has any doubt, then please let me know till here. Because, look, this is a very important topic, friend. If you do not ask doubt, then there will be problem. If you're watching live, then please let me know if you have doubt then. Okay, so, I am assuming that, brother, there is no doubt. Okay, I'll go ahead. What we'll do next is once we check the categorical columns, all the columns, whether these columns have unique values or not. We'll check for uniqueness. Okay, right? I'll give you the reason why we'll check for uniqueness. So how will you check for uniqueness? Inside the df data frame, we created a variable called categorical. Now look, I'm writing cat call, tau, meaning all the columns that contain categorical data, okay? Why am I using .n? I need the total number of uniques. Why am I using n? So it tells me the unique values for each column. How many unique values are there in each column? Unique means they match. So I'm using n so that it shows them all. N uniques. Okay? N unique is a function so we'll put a parenthesis around it. Okay? Now look. How many columns did I have in the categorical column? Name, sex ticket, cabin, mbar, data, okay? Now look what is 891 in name. It is row, okay? Meaning 891. Sorry. Just wait a minute, friend. Hello. Whose name I think is Ria? Yes. Sorry for that, friend. Okay? So where were we, brother? We have unique data once now. I will find out the shape of the data, friend. That is very important. df.shape. df.shape. So what is this? I am telling you. What does shape mean? There are 891 rows, which is 891. Now see how many rows are there all? Like 1, 2, 3, 4, 5. How many total rows are there? 891. Can you assume how big the data is? Can you imagine that you can analyze this big data randomly? It is very tough. Okay, there are 12 columns, and you can see that there are only 12 columns. Count them. Look at the column. 11 is coming. Well, why is it coming 11? Because it is starting from 0. So how many columns are there in total? There are 12 columns, okay? So what is the shape of the data? There are 891 rows and 12 columns. Out of them, how many categorical columns do we have? 1, 2, 3, 4, 5. 5 are categorical columns, and which one is 7? It is a numerical column, okay? Now see one thing. The name has 891 unique values, which means there is not a single person whose name matches with anyone. Suppose there are 10 children in a class, and all 10 of them have different names. Then what would you say, Jula? All 10 have unique values. Jula, they have unique names. Look at this. It is a common thing. I also take a class in which there are 30 children. Then, out of 30 at least 4 children stand out whose name is confirmed as Rahul. Because people named Rahul are found in large numbers, okay? So this means how many Rahuls are there? How many Rahuls are there? We have 4. So what is the unique value? 4. So well, if there was a unique value, Dabasama, then 4 would have been reduced from this, okay? So you can see here that there is not a single unique value in the name. Now, do you know what problem is created here? Your model says, the more unique values you give me, the better I will become. The better I will become. Now, why is that? Now think for yourself. Why is that? Think for yourself. You're teaching a child.
While teaching Yitishen, you write down 18 different colors in front of that child. Although 18 is a lot of colors, there are more than 18. There are even fewer, okay? But I want to put an example in front of you. You put 18 different colors in front of the child and name each color differently. You don't match them. So how much will that child struggle? He will have to struggle a lot to memorize each name or remember each name. Now, think about it. You give 18 colors. Out of 18's ray, you give 3 unique colors that match each other, nen, so all 3 have the same name. And if these 2 match O, then they have the same name, go, with a slight difference. But the name is the same. So he's got uniqueness here. So automatically, that child will read it quickly. He'll study it quickly. That's why uniqueness exists. That's why we calculate uniqueness to check how much uniqueness we're getting. And that uniqueness will greatly help us in studying the data. And the better you teach the data, or rather, known the data itself, the better you teach the model, known, the better your model will become. So, I don't see any uniqueness here. There are only 2 uniquenesses in sex, although 891 are male and female. So, total male here is just total male, buzz, male, male, un, or male. So all are females. There are 2 unique values, okay? Now let's come to the ticket. There are 681 unique values on the ticket. Now, if you subtract 681 from 891, what are the values that come out? Brother, which ones are all of them? All of them are unique. And which one is 681? Which one is not unique? Okay? So A, you might be understanding that there's a slight problem with the ticket. We'll see what the problem is. The cabin is having the same issue, okay? 147 is a unique value. Sorry, don't get confused about this. The name 891 isn't unique at all, okay? Which ones are all of them? 81 is different, and in sex, only 2 values are different, male and female. Only 2 values are different. The ticket has a different 681 value. The cabin has a different 147 value. The embark has 3 different values. For example, the red color is written 300 times. The green color is written 300 times, and the yellow color is written 300 times. So how much is that? It's only 3, right? Because only 3 are unique values, okay? So the E mark is like this. Similarly, 47 cabins are separate, okay? So I hope this is clear, okay? If you have any doubt till here, then please tell me, friend. However, the ticket is giving us a lot of issues because here there is 681, which are different values, and the rest of the values are unique, okay? Apart from this, that is unique. So let's see. As far as anyone has any doubt, then please let me know, friend, till I am not free. Hello. Yes, brother. I am taking live class. Tell me if you have any urgent work, then tell me. His name is Raj. I don't know his full name. I am Raja. Vishal, yes, Vishal. Hoda sai onihehe Vishal. Look. At the jam, oh, until. Then. Verse. Someone saying, hello, Deepu. How are you? You're quite late. But at least you're here. By the way, Deepu. Where is he? What's his name? Abhishek Mohan. I want to find out about Abhishek. Where is he? Where is he hanging out? I didn't take my NISM class today. Ooh, I was a little late. Deepu, when have you been coming to study like this? Does anyone have any doubts till now? Then please do let me know, friend. Yes,
Patapji was the one who asked about my well-being and left. And I hope you understand till here, friend. Okay? I'll tell you what I did at the end. Look, while you ask your doubts, I'm having tea, okay? And then I'll start it again. And brother, be prepared for math, because I'll be teaching math. Math, and it'll be at a very advanced level. And yes, you might see top level math there. Okay, brother, let's move on. We've extracted the uniqueness values from all the categorical columns. We've calculated how many are unique. Now, what are we going to do? I'm noticing that there's something wrong with the ticket, like 681, that aren't unique. Other than that, everything is unique. So, I'll deal with the ticket itself. How does it look in the ticket column? What does it look like? Let me just take a look at the ticket. What will I do? I'll extract the data up to 50 in the ticket column. So how will I extract the data up to 50? I hope you remember when I taught you slicing in Python. Okay? I taught you slicing. So I wrote ticket here. Okay? Then what did I write unique here? Okay? How do I extract the data up to 50 here? I'll do slicing. I'll skip slicing. Okay? I hope you remember this. So ape, if I skip /e, I'll get data from 0 to 49. From 0 to 49. Press shift and enter here. And I'll have the ticket data. So look how the ticket looks. It's a very strange mashup ticket, man, and it's very difficult to analyze and read. It's very difficult. Even giving this data to a machine would be very challenging. Although, we can handle it with the help of feature engineering. But we haven't studied feature engineering yet, so we won't bring that up. I'll explain how we'll handle this type of data when I teach feature engineering. Okay? We'll see later. Okay? So we've seen that all the data in this is mind-boggling. Now notice one thing. I see a column in the ticket that appears to be a bad column. Okay? Because I'm not going to get anything from the machine seeing the data in this ticket column in my model. My model will be biased, corrupted, and start giving people wrong information, okay? So what will I do? I'll remove this ticket. I'll remove this column. Not a single one of the names is unique. They're all non-unique values. If I give this to my model, it'll go crazy and start giving wrong information. It could even be biased, okay? It could do anything. It could even start doing the opposite. So what will I do? Look, you have to take a lot into account when building a model. So what will I do with these two columns, name and ticket? I'll remove them, okay? I'll remove them. How will I remove them? So now I'll create a new data frame called df1 and type in df. Drop. We use drop when we need to drop a column, okay? And here you'll write columns because we need to remove the columns. Equal. And then write the names of those columns. First, I need to remove the ticket column. I need to remove the ticket column and the name column
because it contains all the unique values. Okay? So these three have been removed. What will I do next? I'll check its shape. What will I do with df1? I'll check its shape. And now, pay attention. Pay attention to this. How many columns am I deleting? I'm deleting 2 columns, okay? So, how many columns are there right now? There are 12 columns. So how many will be left? There will be 10. So, oh, look, okay, 10 columns, but the number of rows is the same. The data below, oh, just the column has been deleted. 2 columns have been removed, and we still have only 891 data, okay? I hope that's cleared up, okay? Now, this small part of our cleaning is complete, okay? That small part of the cleaning is complete. Now let's check the number of null values. Obviously, null values also multiply, okay? So, let's check for null values. So, hen now, df1 delaman dot is null, dot is null, in null is a function, dot sum is a function. Why am I using dot sum? So it'll sum and return the sum, will sum. So look, in edge OYE, there are 177 empty values. In cabin, there are 687 empty values. In embark, there are 2 empty values. But here's where it's confusing us. We can't figure out from the numbers how much space is empty and how much is occupied. How much space is empty and how much is occupied. So we'll calculate this as a percentage. How do we calculate this as a percentage? So whatever this number is, qua. Whatever this number is, etchen, divide it by what? Divide it by the size. Okay? If you divide this by its shape, what will you get? It will be the value, okay? By the shape of the data. So before the data shape, I am copying it, okay? It will be better. And I will divide this by its shape. By the shape of the data, okay? So df1.shape, okay? Dot shape. And I have to calculate this as a percentage. Mro, right? You have to calculate 0. Now you know that if you are calculating the percentage, then all the null values that we have to calculate are all the null values divided by the total value alu. That means this is it, okay? And then multiply by 100. I hope you know the formula for calculating the percentage. Multiply by 100. Okay, so I multiply by 100. What is 100? Now I want to round off to 2 here. So I will add a comma to 2 here, and I will have to put one more bracket. I am rounding, so I'm going to use a function called round, okay? And I'm going to write round outside so that it rounds off, okay? So now the percentage. Now look at how many good things you're getting in percentages, man. Now look, there's 77% of the data in the column. It's null. It's empty, brother. 77%. Just how much data? About 23% of the data is filled. It's useless, brother. When 77% of the data is empty, and you give the empty data to the model, what will the model learn? It won't learn anything. The model will also lose this column. There's no use in keeping it. Now, the number of values in embark that are null and empty is only 0.22, meaning there are a few. So, if we remove these blank values, will it make any difference? It won't make any difference. From 1 to 5%, 5% is too much, okay? If you remove even 1 to 3% of the data, it's not a big problem, okay? That's fine. So, we'll remove 0.22. So, how do we work here? What do? 19% data. We can't even remove this column. We can't even delete these columns. We can't delete these 19% columns. So what should we do? How do we fill them in? We use statistics here. In statistics, mean, mode, median. Where is one of these 3 modes used? What does mode mean? Mean, which comes in the highest term, okay? So, mostly we use mean or median, okay?
So yeah, I think the best option is mean. Why? Why not median? Because if you have fixed data, median helps you. Brother, just pick the middle value. It won't be much of a problem. But the mean won't be much of a problem. So we'll use the mean and the resulting mean. Okay? Let me give you an example. For example, let's say 5, 8, 7, 9. Dash, dash, comma, manish 1, 4. Dash, dash, comma, 7, 8, 9, dash, dash, comma, 4, 1, 5. Now look, this is a data set. Now, which one is the blank null value here? This is a null value. This is also a null value. This is also a null value. So what? You'll fill in these null values randomly. You'll put 5 or 6 as you wish. So you'll choose two options. 1. Find its median. Pick its median, that is the middle value. And put that middle value here. Put it here, put it here, put it here, put it here. So that the data becomes manageable. So that we can manage the data. Hi noob, how are you gaming? Yes, I'll teach you data visualization after this. Once that's done, I'll visualize the data, okay? Now, how do you fill this in? So, what's the filling method? You'll either use the mean or the median, okay? So, why am I not using the median? Because the data set is very large. So, I'll use the mean. Kari, how do I find the mean? I'll add them all up. Divide by the number of data points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, whatever. And you'll get the mean. Let's say the mean is 18% 5 NES. So 18.5, 18.5, 18.5, 18.5. Understood? I hope you understand how I'm filling in the data. So I'll fill this with the mean. I'll remove it. I'll remove this column only. I'll remove this column, and I won't remove the column within it. I'll remove the empty, null portion. So how do I do it? So now, let's see. We were working in df1, df1, df, so now this will become df2. What will it become? df2 will become df2 equals I'll write df1.drop. Okay? Column equals AA. Which column am I removing? I'm removing cabin. Okay? Cabin has been removed. Okay? After removing cabin, now I have to fill it with a mean. Nice. So what will I do? df2, df2, a new data frame has appeared. This data frame does not have a column named cabin. Okay? So df2 Now look, when we have to drop an entire column, nullec, we use drop. Okay? And if we have to fill it, we use fill na. Okay? Remember this. We'll fill it. Let's fill it later. First, let's do the removing. So first I remove the column, go, and now I'm going to remove it once more. I won't remove the column with empty values. For empty values, the df to drop n will appear. Drop, drop n. If you just write drop, the entire column will be deleted. If you write drop n, the empty space in that column will be deleted. Okay? So how do you write this? Subset, a subset of what? A subset of what? A subset of this column. You can copy it from here if you want. Okay? We always write this string in, and we mean, which part of that column do we want to delete? I want to delete part of the row. So what does axis equals 0 mean? 0 means the part of the row. We want to delete any empty data in the row. If you write 1 it will start deleting from the column. Now, 0 means row, and row means column, okay? 1 means column. Then, the comma in place equals true. Now, what does in place mean? In place means that as soon as you delete it, save it. What should I do with my file? Save it. Save df2 so that all the empty data in this column has been deleted. This is what in place true means, okay? I hope this clears it up, okay? Then I'll look at the shape. df2 dot. Now, pay attention.
That's the problem, man. Oh, okay, I wrote df.shape A, so that's why the column is visible in 12. I wrote df2 when, so I wrote df2. Sorry for that. I'll tell you then, friend, this is preparing for the entire row, the entire column. Now, pay attention. One column has been deleted from here. Previously, there were 10 columns skull, so I have 9 columns skull. Previously, I had 891 data. With 891 data, there were only 2 empty rows in embark. So what happened to both rows? They were deleted. So, if we subtract 2 from 891, we're left with the row 889. Okay? I hope that clears it up. There's no doubt about it even here. Okay? Now let's move on. Yes. What's our job now? Age. We need to fill this with the help of me. So how do we fill this? We'll use fill_n. So I'll type df3. This will create a new data frame called df3 equal df2 drop fill_n. If we're filling data, we use fill_n. Hey, how do you fill_n? The column in D2. Which column is it? The age column. Fill it in. With what? Fill it in with mean. What is mean? It's a function. So for parents will always be used. What do you do after filling? Show me how much data is left. So df3 dot. Then I'll check again for null values. Is null dot even? Now see if there are any values that haven't been filled yet. You can see that there are some null values. Sometimes it becomes 0. Your data is clean, meaning it hasn't been cleaned yet. Just one thing means we've completed a very small part of the data cleaning. A very small part. Okay? We haven't done any major part. Okay? Now the main topic will come, which I consider the hardest topic in machine learning. That is called dealing with outliers. Look here. What will happen if I mark down hashtag here? I write, handling outliers. So this is a heading, okay? Handling outliers is not an easy deal. It's really not an easy deal. It's a big deal. We're going to make this big deal very long, because dealing with this outlier will require us to study a lot of math, so I'll explain it slowly. First, let me show you what an outlier is. It's very difficult to detect an outlier directly from a numerical value. That's why we use boxplot, and to make boxplot, we will use matplot library. So I will import matplot live.pyplot splt. Now if I don't write splt, then how much will I have to write? I will have to write it completely. Do you understand? I will have to write it completely, okay? I have imported it. Now I will write plt.boxplot, okay? .boxplot. Now see, if you don't write as plt, then you would have to write it completely. Do you understand? You would have to write this entire ... again and again, okay? Now .box. Now whose box ... do you want to make? Give this to him. So I want to put the edge data in df3 in a box plot, and I want to make the vertices fall. Now the question arises, what have I written? Please explain this. I'm creating a box plot of the column called edge, so I can detect outlines, whether there are any, okay. Now, what does vertices fall mean? Vertices fall means, let me show you a graph. Maybe I'll show you, stop here, and I'll show you, okay? I'll show you a coordinate graph. Yes, look, he showed me. You see this photo. You see this XY. This is called vertices. This is called vertices. This X, Y, I. This is vertices. If there was another point here, it would also be a vertices. What is all this called? They're called vertices. So A, what I wrote here is vertices false A, which means that when you create a box plot new, the corners where it says XY23 shouldn't be visible, okay? I don't want that. I don't want that to be visible, okay?
Then what about plt.xLevel? I'll make the label key, brother label variable. Okay? I'll make y a variable. Okay? And then I'll take out plt.xLevel. I'll make xlevel an edge. Okay? What should come at x? My edge should come. Okay. After that, new, I'll write the title once, plt.title. And I'll write it in the title. Yes, you can also use double quotes. No problem. I've given the box plot this title. And then I'll draw it. Okay? plt.showShow is a function so we'll use parsecs. Now, this is what I've got. No, why? Control label, so. I've spelled it correctly, la, right? Well, I misspelled it, so that's why. So, look, this is the box plot. Now, what's here? What do you see in the box plot? You see this part. This part is all outliers. This is also an outlier. You see so many outliers. Now, how do we detect these outliers? We'll cover that in the next video. In the next lecture. And that's enough for today. Okay? Now, we'll cover everything about outliers. We'll cover box plots one by one. Then we'll cover quartiles. Then we'll cover percentages. Then we'll cover percentiles. And then we'll think about outliers. How to deal with them. Okay? So, whatever doubts you have up to this point, please go ahead and ask me. If you have any doubts, then please ask, okay? If you don't, that's great. If you have any doubts, then please go ahead and ask me. So, for now, I'll only take doubts, because I've covered everything I needed to in today's lecture, okay? Because tomorrow I'll teach box plots. How to create a box plot. What is a quartile? What is a percentile? What is a percentage? What is the difference between the three? What is the relationship between the three? We'll understand each and everything in detail, okay? In detail. Because now we'll start delving into core mathematics. Because if you want to create a model very well, then understanding core mathematics is very important. So if you have any doubts, please ask. The outline will force you to study advanced mathematics. Always remember this. So if anyone has any doubts, please go ahead and ask me. Dowa. Noob gaming data visualization is still a long way off, friend. So for now, we'll do normal data cleaning. After that, we'll do visualization. Because I want to do everything stepwise, friend. So visualization will take some time. Let me repeat once whatever I've taught you. Look, what did I do first? Import the library. Convert Pandas to NumPys, SPD, and MPNP. Why? Wrote SPD, SNP. The reason for this is that when you fetch data, you have to write Pandas instead of PD if you don't write SPD, right? So this is the reason why we have to write SPD, right? And how we import a file is pd.read_sv_scb. Now, feet within single quotes, we'll write the address where our file is stored. We'll give the address of where our file is stored. Then df.head means 5 rows from the top. 5 rows from the top. 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 rows in all the columns. After that, we'll check for duplicate values to see if there are any duplicate values. So there aren't any key. There are no duplicate values. Then, using this, we'll check what type of data is in each column. Is it integer, float, or objective? Which is an object, which data? It will tell us this. After that, layer. We'll separate it into categorical and numerical data. So, I've written this code for categorical columns, and this code for numerical, okay? So, categorical columns. I've got all these categorical columns. And which ones have I got? I've got numerical columns, okay? What do we do next?
We'll check for uniqueness within categorical columns. How many columns are categorical columns? How many columns are categorical? How much uniqueness is there in them? So Hubbian name Selwit's single unique value. In sex, there are 2 unique values. In ticket, there are 600 values that aren't unique at all. The rest are unique. So this is causing a lot of problems. And in cabin, Putza, there are 147 unique values. The rest are non-unique. And in MRP, Putza, there are only 3 unique values. Okay? So I pulled out the data shape and found 891 rows and 12 columns. Okay? So I'm seeing some discrepancies in the ticket. So I'll check the ticket one more time. How did you manage to store the data in the ticket? So I removed 50 pieces of data from the ticket and looked at those 50 pieces. This is a big problem. If you want to solve this, you'll have to delve into feature engineering, and we haven't done feature engineering yet. So the best option is to remove it. The best option is to remove it. And the best option is to remove the name as well. Why remove it? There's no uniqueness in it. If there's no uniqueness, it will be very difficult to train the data. And we don't want such problems in training the data. So the name will be a problem. The name column will be very difficult. The ticket column will be very difficult. So delete both of them. So look, we deleted them, created a new data frame, df1 equals df.drop column, okay? We removed both of them, okay, so 10 out of 12 columns remain, okay? What do I do next? I will check the null values that in the 10 columns that I have, and how many values are null. Yes, so I did df.this and saw that I'm getting null values in numerical. Edge, 177 in edge means 177 null values here, 687 null values here. Man, now, here I am getting confused that how much is this, friend? I'm not able to understand, so I converted it into percentage. How to convert it into percentage? Sum of total number. Sum of total null value. Sum of total null will be the sum of this whole divided by total value divided by total shape gives us the total column, gives the total data. Game in, multiply by 100, and why is it written as 2? So that it can be given in 2 decimals, like 0.02 is 2 decimal. I rounded the 2 decimals, I rounded them to 2. Okay, so now it is visible here that in edge only 19% of the data is empty. So now my brain is working. Now my mind is working fine. More than 80% of the data is filled in. So we'll deal with the age column a little bit. We can neither leave it empty nor delete it. We'll have to deal with it. We'll figure out how to deal with that later. What did I do? I saw in the cabin, hey man, 77% of the data is empty. There's no point in giving it to the model. What are you giving to the model? You're not giving anything. If you're giving empty data, what will you learn? You won't learn anything. Delete this column. What do? Now, what's in the emark column? Only the 0.22 column means the data is empty. That means delete it. There's no problem. There's no need to fill it. Delete it. So what will we do? We'll destroy the cabin completely. We'll destroy the cabin completely, and with the help of emark, we'll embark the one. Sorry, what will we do in the emark one? We'll delete it, because look, there's very little empty data. So delete that. Remove it. So no unnecessary confusion, right? So erase, we use drop to erase the entire column, And then we use drop n to erase the empty data in that column. So do you understand? Drop means erase the entire column. Drop n means erase the empty part of the column. By the way, someone's message came. Krishna Parita, sir, I can teach this too. That's great, Krishna. Go ahead and teach it, my friend. People need it very much. Okay. There's a great need. You should teach this, friend. Krishna, you should teach this. If you can teach it in reality, then please go ahead and teach it. You won't believe it. There are many people who need your help. There are many people, whoa, right? After that, I'll draw its shape. In the shape array, you can see that the column of data for the cabin has been erased. So how many are left out of 10? 9. And we deleted the empty data from this. So, it was 891, now it's 889. Okay, what did we do next? df3 equals df2, fill n. Now I filled this. Which one? Fill this. We could have used the median, but I'm using the mean, okay? The reason is, Khaudo will gradually learn as we study more and more about how to fill. After filling this, we'll check to see if there are any null values left. See, there are no null values left. Now we'll handle the outliers. So what did we do to handle the outliers? We created a box plot using the matplot library and detected the outliers. All these outliers, okay? I hope this is clear. Now tomorrow we'll study further. Lan
where we'll learn how to create a box plot. How to create a box plot, and we'll study the math behind it. Quartiles, percentiles, and percentages. So we're going to dive into math now, okay? So tomorrow's math lecture will begin. So fool, if you have any doubts, fool, please go ahead and ask me. As for Krishna, I can only teach this. Sir. Krishna, you must teach them, sir. I salute you for teaching, even for 3 or 4 people. Krishna, whether there are 3 or 4, or even 1, friend, I'll still teach here for 2 reasons. The first reason is that if someone doesn't know these basic things, it will help them. The second reason is that when you teach someone, you share whatever knowledge you have, along with the basics, Safi, and your knowledge gets a huge boost, okay? So, when I teach this, obvious that I'll be able to refine my knowledge, okay? So, these are 2 reasons. So even if I have 0 current viewers here, I don't care. I'm trying my best to at least refine my knowledge. And if you and others like you ask me questions, I'll learn even more about how, yes, this thing exists in this world. So, and there's a lot of benefit in teaching. And I'd suggest you teach your friends or colleagues too. The more you teach them, the more your knowledge will grow. The more it will grow. Beyond this, if anyone has any doubts, please go ahead and ask me. Thank you, Krishna. Thank you so much for your kindness, bro. Tomorrow we'll learn how to create a box plot. How to create a box plot mathematically. Today we covered very basic things. Today was our second video, okay? Just look at it now. You might think, yes, it's very easy, although I'll keep it simple. Is it okay? I found it a bit tough. I will try my best. I will work hard to make it seem easy. Everyone should find it easy, friend. I don't want anyone to find it tough. Anything should seem tough. I don't want that at all. I will try my best to make everyone find it easy because I know the mathematics involved. It's a game changer. So it's going to be fun when you enter math. Okay? But I am going to explain math to you in a very easy way. I will try my best. Apart from this, the demand for machine learning has also increased a lot in the market. Deep learning has also increased a lot. Artificial intelligence has also increased a lot. So, I am watching that there are a lot of people live, but if you want to ask any question, then you can ask. Friend, I have taught whatever I had to teach. The rest I will start teaching tomorrow only. Till now, if anyone has any doubt or any question you can ask, you are most welcome. I am just waiting. If anyone has any doubt, then you can ask. And yes, I was going to tell you one more thing. If you want, then you can visit the website of Gigs for Gigs. Okay? There is a tutorial on machine learning there. You can read it from there also, and for Gigs has described it very well. I can read the entire machine learning from their website itself. Because Gig for Gig teaches things at such a high level that it's unbelievable. You're getting so much for free, what more do you need? People are spending millions of rupees to learn machine learning. Okay, so you get everything for free on Gig. Okay, so go there. I'll show you on Gig for Gig. If you go here, click on machine learning on its website, and you're looking at a machine learning tutorial.
You see, it explains things systematically. You don't see anything unsystematic in that systematic way. Click on it and start reading on a new topic. I picked everything up from here. Oh, I taught myself from here. I read it completely from here. I made a book and studied it. And secondly, I used AI. I used groups and chat, okay? Supervised learning, unsupervised learning, okay? So first, we'll study the workflow, okay? If you click on workflow, you'll see what's being taught in the workflow. Look, this is what I'm teaching, and what else will I teach? I'm not teaching anything else, okay? I studied it myself from here. So I'll teach from here too, obviously. You'll want to study data collection in great depth. Just click here. It'll tell you about data collection. Now, we're studying data cleaning. Look at the data cleaning. Cool. I've also looked at my code. Cool, to a large extent. Okay? That's what I'm teaching for now. Okay? Where have we reached now? We've reached this far. Okay? We've reached this far. We won't go any further after that. The reason behind this is, I'll teach you the box plot. There's nothing above the box plot, right? No, there's nothing. So, we'll study further. I'll show you what we'll study tomorrow. I'll teach you the box plot. What do you need to study in a box plot? What is a box plot? You know the median. Then we'll study quartiles. Then we'll deal with the outline later. We'll study quartiles. First, we'll study the entire box plot, how to draw a box plot mathematically. I'll explain it to you, okay? And there are a lot of questions for it. You know what the most important thing is? It has questions for practice. Look down, I'll take you down. Okay, look at this question, how to create a box plot. It also has an example. You can see, right? This example is given, then I drew it. Okay, so now I'll explain what the median means. I'll explain it tomorrow, okay, right? Right now, I'm just giving you an overview. We'll also study skewness. We'll also study what the skewness is. Okay. After that, we'll study quartiles in detail, because it's very important to study quartiles in detail. What is a quartile? Okay? We'll also study percentiles in great detail, okay? You'll keep doing that one by one, okay? Continuous variable, independent variable. I will tell you this anyway, okay? I will teach you in detail what is important. Look at what is not so important. You all know about central tendency, mean, mode, union, okay? All these are central tendencies. Now see, I was talking about this. I have given this example, okay? There are a lot of examples. Mathematically, the more you solve mathematical examples, the more your knowledge will boost, okay? You will enjoy studying as well, okay? And learning as well. Now, if you have any questions in this, you can ask me. आप ये मेरा एल्गो ट्रेडर मॉडल देख रहे होगे, ठीक है? ये मैंने कैसे बनाया है आज इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूंगा, इसका कोड कि किस तरीके से मैंने इस मॉडल को ट्रेन करा है, किस तरीके से मैंने इसे तैयार किया है। पूरा मॉडल मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारे कोड एक्सप्लेन करूंगा, कैसे कैसे कोड लिखे गए हैं। हालांकि मैंने ये पूरा एआई की हेल्प से बनाया, मतलब एआई ने ही पूरा कोड लिखा है, बट स्टिल मैं कोड को एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से हमने कोड को ड्राइव किया था। तो देख सकते हो करंट बिटकॉइन प्राइस जो है $88,896 के आसपास चल रहा है। इवन आप लाइव भी देखोगे तो शायद इतना ही चल रहा होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बिटकॉइन यूएसडी प्राइस, तो देख सकते हो 88,901, ठीक है? तो ये कितना चल रहा है मेरा? 88,000 समथिंग है, मतलब उसी के आसपास है। तो ये 88,876, तो देखो इतना तो फ्लक्चुएट होता रहता है यार, ठीक है? हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन तो होता रहता है, ठीक। तो यहाँ पर ये बिटकॉइन का लाइव प्राइस है, ठीक। अब यहाँ पे ना मैंने बैक टेस्टिंग करी है। यहाँ पे ना आप मान लो मॉडल को कुछ पैसा दे रहे हो, मान लो आप मॉडल को ये $5,895 आप दे रहे हो उसे, और आप बोल रहे हो कि नहीं भाई मैं मैक्सिमम लॉस 30% का ले सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। वो आप मॉडल को बोल रहे हो कि भाई इतने डॉलर लेके जा, ठीक है, और ट्रेडिंग करके आप देखते हैं कि मॉडल प्रॉफिट लेता है या लॉस लेता है, ठीक। मैं इसको रन करूंगा तो बैक टेस्टिंग में देखो आप देख सकते हो मॉडल ने 0.12% का प्रॉफिट लिया है, और लॉस तो मैंने इतना लगा रखा था। अब मॉडल ने वो मतलब करा कैसे प्रॉफिट? उसने होल्ड पे 45.2% रखा, ठीक है,
बिटकॉइन को लॉन्ग करा 54.8%। अब आप बोलोगे यार होल्ड और लॉन्ग में क्या अंतर है? एक्चुअली में उसने फ्यूचर में जो लॉन्ग पोजीशन बनाई थी 54% और होल्ड मतलब स्पॉट मार्केट में उसने 45.2% का होल्ड लिया था और शॉर्ट उसने जीरो करा। शॉर्ट उसने जीरो क्यों करा? मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इस मॉडल को मतलब देखो मैंने 2 साल का ना क्रिप्टो का डाटा दिया था मॉडल को, प्रीवियस 2 ईयर का, ठीक है, और वो प्रीवियस 2 ईयर पे ही ये ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस 2 ईयर पे ये ट्रेडिंग कर रहा है। देखो अब इसने 4.46 का लॉस भी ले लिया, हालांकि आप देख सकते हो, ठीक है, काफी सारे इसने प्रॉफिट लॉस लिए। देखो एक ये बहुत बड़ा प्रॉफिट लिया था, ये पूरे 2 साल का प्रॉफिट है, कोई एक दिन या एक घंटे का नहीं है, ठीक है, उसने कैसे कैसे लिया है देख रहे हो आप, हर किसी में देख सकते हो कि शॉर्ट इसने लिया ही नहीं है। शॉर्ट ये क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि प्रीवियस 2 ईयर में बिटकॉइन में काफी अच्छा बूम आया था, तो उसने उस बूम को प्रिडिक्ट कर लिया कि भाई बिटकॉइन बहुत ज्यादा मतलब अप मार्केट है, तो बेवकूफी है उसमें शॉर्ट पोजीशन लेना। तो वो क्या कर रहा है देख सकते हो आप, शॉर्ट तो वो ले ही नहीं रहे, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं ले रहा, यहाँ पे भी शॉर्ट नहीं ले रहा, यहाँ पे भी प्रिकॉशन के लिए उसने कभी बार शॉर्ट ले लिए तो ले लिया, अदरवाइज वो शॉर्ट पोजीशन ले ही नहीं रहा भाई। यहाँ पे भी जीरो है इसका शॉर्ट पोजीशन, ठीक है, ऑलमोस्ट जीरो जीरो ही चल रहा है इसका शॉर्ट। पीछे देखते हैं तो काफी हद तक इसने शॉर्ट नहीं लिया मेरे ख्याल से, यहाँ पे शॉर्ट जीरो, लॉन्ग होल्ड इतना। यहाँ पे इसने शॉर्ट लिया था 4.2%, 4.2% यहाँ पे शॉर्ट, मतलब जो शॉर्ट है ना, शॉर्ट पोजीशन वो ले ही नहीं रहा। आप अगर नोटिस करो तो ना के बराबर वो शॉर्ट पोजीशन ले रहा है, ज्यादातर वो लॉन्ग पोजीशन को ही प्रेफर कर रहा है, ठीक। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है? 2 साल की मार्केट में उसने काफी ज्यादा बूम देखा होगा, तभी वो ऐसा कर रहा है। बैक टेस्टिंग में तो हमने खैर यही देखा है, ठीक है। देखो अब आगे ना 88,916 के आसपास ये होल्ड का प्रिडिक्शन दे रहा है कि भाई होल्ड करो, काफी अच्छा जा सकता है आगे। तो अब मैं इसके कोड को एक्सप्लेन करता हूँ, एंड हाँ मैं इस वीडियो में ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस पे ही आपको मतलब ये मॉडल दिखा रहा हूँ, एजुकेशन पर्पस पे ही मॉडल को कैसे बनाते हैं ये बता रहा हूँ मैं। इसमें मैं कोई भी आपको ट्रेडिंग की सलाह नहीं दे रहा कि आप जा करके ट्रेडिंग करो। ये बोट मैं अभी बता रहा हूँ 100% आपको रॉन्ग प्रिडिक्शन भी दे सकता है, तो आप इसके भरोसे मतलब ट्रेडिंग मत करना बिल्कुल भी नहीं कि यहाँ पे ये बोल रहा है होल्ड करो तो जाके आप होल्ड पोजीशन ले लो, यहाँ पे लिखा है ये बाय करो तो बाय कर लो, ऐसा मत करना, ठीक है। मैंने ऊपर साफ साफ लिखा पड़ा है, ये सिर्फ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग पर्पस के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। प्लीज इसके बेस पे ट्रेड मत लो, क्योंकि अभी टेस्टिंग पे है, और जो रियल वाला होगा वो हम फ्यूचर में देखेंगे। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए मैंने बनाया है, ठीक है। तो अब चलते हैं एक बार इसके कोड के पास। तो कोड में आप देख सकते हो मैंने सबसे पहले क्या करा था, पिप इंस्टॉल CCXT, इसका मतलब होता है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग लाइब्रेरी। और स्टेबल बेसलाइन क्या है कि ये हमें ना पीपीओ प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजर देगा। अब वो क्या होता है वो भी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब जिमनेशियम ये हमें एक एनवायरनमेंट देता है जहाँ पर हम अपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग को ट्रेन करते हैं। देखो क्या क्या होता है, अगर आपने बेसिक मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पढ़ा है तो ये आपको 2 मिनट में समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसे और एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टेबल बेसलाइन क्या होता है, जिमनेशियम क्या होता है, ये हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। बाकी आपको क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग लाइब्रेरी का तो मतलब समझ में आ गया होगा मैंने इसे क्यों इंस्टॉल करा है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि हम एक बिटकॉइन का ट्रेडिंग मॉडल बना रहे हैं, बिटकॉइन ट्रेडिंग बोर्ड बना रहे हैं, तो उसी के लिए मैंने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है, ठीक है, मतलब इंस्टॉल किया है। उसके बाद मैंने क्या करा, वाई फाइनेंस को इंपोर्ट किया और पैंडास को इंपोर्ट किया। पैंडास को क्यों करा? क्योंकि हमें डील करना है डाटा के साथ, ठीक। और वाई फाइनेंस से हमने क्या करा है, मतलब डाटा जितना भी स्टॉक मार्केट का डाटा होता है वो आप याहू फाइनेंस से ले सकते हो, इसलिए मैंने इसे इंपोर्ट किया। तो देखो देख सकते हो डाटा फ्रेम, मैंने डाटा फ्रेम में डाटा इंस्टॉल करा, मतलब डाटा को रखा है कहाँ से, वाई फाइनेंस से मैंने डाटा को डाउनलोड करा, किसको, बिटकॉइन यूएसडी को। पीरियड लिया मैंने 2 साल का, इंटरवल लिया मैंने 1 दिन का, ठीक। अब वहां पर ना आपको 5 कॉलम मिलेगी, जिसमें हर एक वर्ड देख सकते हो, कैपिटल में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक। तो मैंने बोला भाई कैपिटल में हो चाहे स्मॉल में हो, ऐसी ही कॉलम मेरे पास बने और पांचों की पांचों कॉलम फिल हो जाए 2 साल के डाटा के साथ और 1 दिन के इंटरवल के साथ, ठीक। तो ये इसने यहाँ पे डाटा को फिल कर दिया। उसके बाद मैंने ड्रॉप एनी का इस्तेमाल करा, मतलब एआई ने यूज करा, मैं सिर्फ इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैंने एआई से ही कोड लिखवाया, मैंने खुद से कोई कोड नहीं लिखा, एक सिंगल लाइन भी मैंने खुद से नहीं लिखी है, हर एक चीज ये एआई ने लिखा है, ठीक। ड्रॉप एनी मतलब क्या करा उसने, जितने भी नल वैल्यूज थी उस सभी नल वैल्यू को इसने हटा दिया, ठीक। अब यहाँ पे रीसेट इंडेक्सिंग क्या कराए, या रीसेट इंडेक्सिंग क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हो एक इंडेक्स होता है, यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3 4 5 6। अब मान लो 6 वाली रो डिलीट हो गई क्योंकि वो नल थी, ठीक। तो क्या क्या होगा अगर मैं रीसेट इंडेक्सिंग नहीं करूंगा, तो 1 2 3 4 5, अब 6 वाली खत्म, 7 8 9 10, मतलब अब 6 वाली दिखेगी नहीं। तो लेकिन मैंने बोलते भाई रीसेट इंडेक्सिंग कर दो उसे, मतलब इसे कंटिन्यूअस रेट में डाल दो, जैसे 6 वाला खत्म
तो जो 7 है वो 6 बन जाएगा, जो 8 है वो 7 बन जाएगा। इस तरीके की रीसेट इंडेक्सिंग की गई है यहाँ पे, ठीक है। फिर जो भी डाटा है उसको लोड कर दो। यहाँ पे मैंने मैसेज डलवा दिया, ठीक। शेप उसकी दे दो, कितनी रो, मतलब टोटल कितनी नंबर ऑफ रो है, कितनी कॉलम है। तो यहाँ पे देखो इसने फेच कर दिया है, देख सकते हो, डेली डाटा लोडेड। अब यहाँ पे देखो 732 रो ली है और 5 कॉलम देख सकते हो कि ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड वॉल्यूम, ठीक है। 5 कॉलम है और रो 732 है, ठीक। यहाँ पे इसने स्टार्टिंग की 4 रो भी दिखा दी आपको, ठीक। ओपन कितने पे होता है, 41,300। 2 साल पहले इतना प्राइस था, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 साल पहले इतना प्राइस था। और लास्ट की 5 में देख सकते हो 90,000 पे भी गया है, ठीक है। ये डॉलर में है, INR में नहीं है, ठीक। तो ये हमने क्या करा, 2 साल के डाटा को यहाँ पे फैच कर लिया। अब 2 साल के डाटा को फैच करने के बाद हमने पांडा का इस्तेमाल, क्योंकि हमें डाटा के साथ डील करनी है। नमपाई का भी मैंने इंपोर्ट करा, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ भी डील करनी है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इसमें टेक्निकल इंडिकेटर को ऐड करा। टेक्निकल इंडिकेटर्स, आप देखो, टेक्निकल इंडिकेटर्स के लिए ना आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आप मेरे चैनल पे जाओगे ना, यहाँ पे, तो आप मेरे ना प्लेलिस्ट पे आना। प्लेलिस्ट पे आप देखोगे कई सारे, तो यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई होगी, ये रहा, NCFM टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल। तो आप इस वीडियो पे जा करके आप पूरा देखो, कितने घंटे की है, 5 आवर की वीडियो है। NCFM टेक्निकल एनालिसिस मॉड्यूल है। आपको टेक्निकल एनालिसिस की डेप्थ लेवल पे नॉलेज मिलेगी, ठीक है। इसको पढ़ लोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा, ये मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बोलिंजर बैंड, ये सब कुछ समझ में आ जाएगा कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि हम उसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ही यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि मूविंग एवरेज 10, मतलब 10 दिन का जो भी मूविंग एवरेज है, नॉर्मल आपने मीन, मॉड, मीडियन ये सब निकाला है, तो यहाँ का हम मीन निकाल लें। 10 दिन में जितना भी बिटकॉइन का प्राइस था उसका एक एवरेज निकाला, ठीक है, और उसको हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक। जो डाटा फ्रेम में सारा डाटा रखा पड़ा है 2 साल का, ठीक है। तो हमने सिंपल मूविंग एवरेज का 10 दिन का डाटा निकाला, उसका मीन निकाल के रख दिया। फिर हमने 50 डेज का निकाला। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी निकालना है। अब देखो EMA कैसे निकालते हैं, ये एक एडजस्टमेंट फैक्टर होता है, EWM, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग। एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग हमने 12 डेज का लिया है, एडजस्टमेंट फैक्टर फॉल्स डॉट, उसका हमने मीन निकाल दिया। देखो ये एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है वो कोरिलेटिव होता है सिंपल मूविंग एवरेज का, लेकिन दोनों में अंतर ये होता है कि EMA जो होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो प्रेजेंट वैल्यू, जो अभी की वैल्यू है ना, उसको ज्यादा वेट दे देता है और बाकियों को वेट कम देता है। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मूविंग एवरेज 50 लिखा पड़ा है 50 डेज का, मतलब आप मान लो इस तरीके से डाटा लिखे पड़े हैं, 1, 2 और 3, 4, 5 डाटा निकले पड़े हैं, ठीक है। मैं 50 ना लेकर के 5 का ले रहा हूँ, ठीक। अब आप इसका मीन निकालते हो तो क्या करोगे, सिंपल आप इस पूरे को 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 से डिवाइड करने के बाद मान लो एक नंबर आया 85, मान लो, मतलब मुझे नहीं पता कितना आया, ठीक है, मान लो 85 आया। तो इसका मतलब 85 जो आया है ना, ये सबको इक्वल वेटेज दे रहा है, मतलब 20% इसको वेटेज दे रहा है, ठीक है, और 20% इसको वेटेज दे रहा है, 20% इसको वेटेज दे रहा है, 20% इसको, 20% इसको। दिस इज कॉल्ड इक्वल वेटेज। लेकिन EMA में ऐसा नहीं होता। EMA में क्या होता है कि आप जब पांचों का निकालोगे ना EMA, तो होगा क्या, EMA जो अभी स्टॉक मार्केट में अभी जो वैल्यू निकल के आई है, मतलब अभी जो मार्केट में प्राइस मिल रहा है, उसको वो ज्यादा वेटेज दे देगा। मान लो पांचों में ही ले लो, लास्ट की जो वैल्यू जो अभी आई है, वो क्या करेगा, ये वैल्यू नहीं है, बल्कि वॉल्यूम लिखा पड़ा है, ठीक है, मतलब वैल्यू मान के चलो। तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि जैसे सबको 20-20 दिया है ना, तो EMA क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग, जो वेटेड मूविंग है, इसको दे देगा अराउंड 40% का वेटेज। अब बचा कितना, 60% का। तो 60% का जो है ना, इक्वली इन सब पे डिवाइड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ये निकालने का फॉर्मूला है यहाँ पे, ठीक। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो पता लग जाएगा। अगर जब यहाँ पे आप पढ़ोगे ना, देखो ये मेरी NCFM की वीडियो है, जाके आप देख सकते हो, ठीक, देखना चाहो तो यहाँ पे भी आप समझ जाओगे। फिर MACD का फॉर्मूला क्या होता है, EMA 12 में से EMA 26 को माइनस कर दो, आपको MACD निकल जाएगा, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट। फिर MACD का सिग्नल भी निकलता है, तो सिग्नल निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। आप चाहो तो ये वीडियो देख लेना, यहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। फिर हमने ये डेल्टा किसके लिए निकाला, हमने RSI के लिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये कैसे निकालते हैं, डेल्टा कैसे निकालते हैं। डेल्टा देखो, मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, मतलब ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, मैं एक नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक। डेल्टा क्या करेगा,
देखो आरएस का फॉर्मूला क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है एवरेज गेन अपॉन एवरेज लॉस। मतलब कि आप क्या करो, मान लो 5 डेज का आप प्राइस ले रहे हो, ठीक है, तो ये फर्स्ट डे का, सेकंड डे का, थर्ड डे का, फोर्थ डे का, फिफ्थ डे का, ठीक। अब जाहिर सी बात है इन 5 दिनों में कुछ दिन बिटकॉइन माइनस में भी गया होगा, कुछ दिन प्लस में भी गया होगा। तो डेल्टा यहाँ पे क्या है भाई, डेल्टा यहाँ पे ये है, डेल्टा क्या कर रहा है, जो क्लोजिंग प्राइस है ना, जो क्लोजिंग प्राइस, जैसे मान लो ये क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस में जितने भी प्लस वाले हैं, जैसे ये सब के सभी प्लस में दिख रहे हैं, कोई साइन नहीं है तो मतलब प्लस है, जितने भी प्लस वाले सबको जोड़ करके अलग रख दो, ठीक। जितने भी माइनस वाले हैं उनको अलग रख दो। अब जितने भी प्लस वाले जिनको रखा है ना, उनको सबको जोड़ो, उसका एवरेज निकाल दो, दिस इज कॉल्ड एवरेज गेन, ठीक है, वही कहलाता है एवरेज गेन, और वही कहलाता है आपका डेल्टा, ठीक। और जितने भी नेगेटिव वाले हैं उनको सबको जोड़ करके उसका एवरेज निकाल दो, दैट इज कॉल्ड एवरेज लॉस, ठीक। तो जो भी गेन होगा वो निकल जाएगा, जितना भी होगा उसका हमने देखो मीन निकाल दिया, उसने डेल्टा निकाल करके, डेल्टा डॉट वेयर डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। तो डेल्टा पॉजिटिव मतलब जो वैल्यू जहां पर पॉजिटिव दिख रही होगी, जहां पर बिटकॉइन इंक्रीज हुआ है, प्लस हुआ है, उसको जोड़ करके उसका मीन निकाल दो, तो निकाल दिया मीन। और जिसमें यहाँ पे नेगेटिव दिखाई दे रहा है उसको जोड़ करके उसका मीन निकाल दो। तो यहाँ से क्या निकाल दिया उसने, एवरेज गेन और एवरेज लॉस निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ डेल्टा। फिर एवरेज गेन जितना भी आया, एवरेज लॉस कितना है, इसको आप डिवाइड करोगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। फिर आरएसआई का फॉर्मूला होता है 100 माइनस 100 अपॉन 1 प्लस आरएस, सबकी वैल्यू रखोगे तो आरएसआई निकल जाएगा। फिर बोलिंजर बैंड कैसे निकालते हैं, 20 दिन का जो क्लोजिंग प्राइस होगा उसका मीन निकाल दो, मतलब मूविंग एवरेज निकाल दो 20 डेज का, ठीक। फिर उसी 20 दिन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दो, ठीक है। यहाँ पे देखो उसी 20 दिन का क्या करा है इसने, पहले मीन निकाला फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बोलिंजर बैंड में आपको, आई होप कि बोलिंजर बैंड की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, तो आपको मालूम है इसकी 3 लाइन दिखाई देती है, एक मिड में से जाती है और एक ऊपर एक नीचे। अब ऊपर नीचे वाली जो लेयर्स होती है वो कैसे निकाली जाती है, जो लाइन होती है कैसे निकाली जाती है, जो मिडल है उसमें प्लस कर दो 2 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन और माइनस कर दो 2 टाइम ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको अपर और लोअर दोनों मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे वॉल्यूम का भी मीन निकाल के यहाँ पे रख दिया उन्होंने। तो ये हमने टेक्निकल एनालिसिस के सारे टूल्स ऐड कर लिए। फिर हमने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया था ये वाला टेक्निकल इंडिकेटर, इसको यहाँ पे कॉल कर दिया, फिर जो भी नल वैल्यू उसको ड्रॉप करा, फिर हमने इंडेक्सिंग भी रीसेट कर दी। फिर हमारे पास ये शेप आ गई। देखो पहले कितनी रो थी आप देख सकते हो, यहाँ पे पहले 732 रो थी और 5 कॉलम थी, ठीक है। स्टिल 5 कॉलम, सॉरी ये 683 रो हो गई है और 16 कॉलम। अब आप बोलोगे 16 कॉलम ये कैसे पॉसिबल हो गया। दरअसल देखो 5 कॉलम तो पहले चल ही रही थी, 5 कॉलम के बाद उसने और भी कॉलम ऐड करी है 11। अब 11 कॉलम कौन सी है, 11 कॉलम है जिसमें देखो आप यहाँ देखोगे, इस वाले में देखो क्लोज वॉल्यूम एम ए ये सब तो सॉरी ये नहीं, देखो क्लोज वॉल्यूम तो पहले से ही था MA10, एक इसका हमें कॉलम मिल गया, एक इसका कॉलम, इसका कॉलम, इसका, इन सब का एक एक कॉलम बन गया, ये जितने भी थे ना इन सब का एक एक कॉलम बन गया, जिसकी वजह से कॉलम कितनी होगी अब 16 कॉलम हो गई और रो हमारे पास 683, नल वैल्यू की वजह से रो हमारी घट गई, ठीक। अब आते हैं इस वाले पेज पे। तो इस पेज में देखो scikit-learn डॉट प्री प्रोसेसिंग से हमने मिन मैक्स स्केलर करा। अब ये क्या होता है मिन मैक्स स्केलर, और सिक्वेंशियल क्या होता है, केरास से हमने सिक्वेंशियल को इंपोर्ट करा, फिर टेंसर फ्लो से हमने LSTM डेंस एंड ड्रॉप आउट को इंपोर्ट किया, और अर्ली स्टॉपिंग इंपोर्ट करा टेंसर फ्लो कॉल बैक से, ठीक। और ये मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी ये क्यों हमने इंपोर्ट करा, वन बाय वन मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं scikit-learn प्री प्रोसेसिंग मिन मैक्स स्केलर। इसको समझने के लिए ना आप यहाँ पे आओ, ये यहाँ पर आते हैं, इस वाले को देखो आप, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ, 1 मिनट बस, ठीक है। इसको ना आप ध्यान से देखना, पहले मैं समझाता हूँ ये मिन मैक्स स्केलर क्या होता है। दरअसल आप अगर ध्यान दो यहाँ पे तो ये देखो 41,348 और यहाँ पे लिखा पड़ा 88,000, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, करेक्ट। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन जो हमारा मॉडल है ना वो -1 से लेके 1 और 0 से 1 की वैल्यू, मतलब जो बाइनरी नंबर है उन्हीं को समझता है, वो इन बड़े नंबरों को नहीं समझता। तो होता क्या है, प्री प्रोसेसिंग से मिन मैक्स स्केलर जो हमने इंपोर्ट करा है वो क्या हेल्प करेगा, वो इन सभी बड़े नंबर्स को स्केल करेगा, स्केल करके इन सभी बड़ी नंबर को 0 से 1 के बीच में ला देगा। अब आप बोलोगे यार ये कैसे ला देगा, तो इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आप चाहे तो निकाल लेना। फिर ओरिजिनल वैल्यू भी निकाली जा सकती है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे
जैसे ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये एक कॉलम है, ये सारी कॉलम्स है, ठीक। अब इस कॉलम में बहुत सारा डाटा रखा पड़ा है, ठीक, बहुत सारा डाटा रखा पड़ा है। अब इस सारे डाटा को स्केल करके इसने 0 से 1 के बीच में ला दिया। सेम यहाँ पे भी 0 से 1 के बीच में, 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1। अब कैसे लेके आया है वो, उसने फॉर्मूला लगाया है कैसे, ओरिजिनल वैल्यू मान लो इसका निकाल रहा है वो 0 से 1 के बीच का वैल्यू, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू कितना है, 41,348। फिर मिनिमम वैल्यू भी यही है, तो ये माइनस ये 0 ही हो गया, तो मिनिमम कितना हो गया, पहले 0 आ गया, तो ये स्केल हो जाएगा, ये वाला नंबर किस में स्केल हो जाएगा, 0 में। अब बारी आती है इसको स्केल करने की, ठीक है। इसको स्केल करने के लिए आप क्या करोगे, ओरिजिनल वैल्यू में से इसको घटाओगे तो समथिंग कुछ निकल के आएगा 1000 अप्रोक्स, फिर डिवाइडेड बाय मैक्स वैल्यू कितनी है, मान लो ये मैक्स वैल्यू है, हालांकि इससे भी बड़ी हो सकती है, मैं ये मैक्स वैल्यू यहाँ पे भी है, बट मान के चलो ये है मैक्स और ये मिनिमम, तो डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, दैट इज बिटवीन 0 to 1, ठीक है। तो उन सभी बड़ी वैल्यूज को विद द हेल्प ऑफ दिस मिन मैक्स स्केलर हम ला देंगे किसमें, 0 से 1 के बीच में। अब आप बोलोगे कि यार अगर ये 0 से 1 के बीच में आ गया तो जो मॉडल है वो प्रिडिक्शन भी तो 0 से 1 के बीच की ही वैल्यू को करेगा। मतलब अगर उसने प्रिडिक्ट करा कि भाई जो वैल्यू है ना 0.258 आ सकती है, 0.258, अब 0.258 बिटकॉइन का तो कोई प्राइस ऐसा है ही नहीं, 0.258 मतलब ही नहीं है। तो आप खुद सोचो ना यार, फॉर्मूला क्या लगाया, ओरिजिनल माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मिनिमम। देखो लिखने के लिए मेरे पास कुछ है नहीं, बट मैं वैसे बता रहा हूँ। और ये इक्वल टू कितना आया, 0 पॉइंट समथिंग। अब यहाँ से ओरिजिनल वैल्यू निकाल दो ना फॉर्मूला लगा करके, तो 0 पॉइंट समथिंग मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मैक्स माइनस मिनिमम, फिर उसमें प्लस क्या हो जाएगा, मिनिमम, तो ओरिजिनल वैल्यू निकल गई। तो ये होता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जो मॉडल को है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जो ओरिजिनल नंबर है वो आपको दिखा दिया जाता है कि भाई देखो अगली प्रेडिक्शन ये हो सकती है, ठीक। अब सीक्वेंशियल क्या है, सीक्वेंशियल मतलब कि जो मॉडल है उस मॉडल को हम सीक्वेंस में डाटा को देंगे। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, टेढ़ी मेढ़ी बिल्डिंग बन गई लेकिन स्ट्रेट बिल्डिंग बन गई, तो हम यहाँ पे स्ट्रेट बिल्डिंग का इस्तेमाल करेंगे, तभी हमने सीक्वेंशियल का इस्तेमाल किया है। अब सीक्वेंशियल में होगा क्या, जब मॉडल को सीक्वेंस में डाटा दिया जाएगा, जैसे कि पहला डाटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ये सीक्वेंस में हम डाटा को दे रहे हैं मॉडल को, ठीक। जैसे ही हम मॉडल को सीक्वेंस में डाटा दे रहे हैं तो हो क्या रहा है, मॉडल फिर उसके हिसाब से अपने प्रिडिक्शन लेगा। फिर इन तीनों का क्या काम भाई, एलएसटीएम, डेंस और ड्रॉप आउट। एलएसटीएम क्या करेगा, उस सीक्वेंशियल को, जितनी भी आप सीक्वेंशियल बनाओगे, मान लो 60 80 जितनी की आप सीक्वेंशियल बनाते हो, मान लो मैंने यहाँ पे 60 की सीक्वेंशियल बनाई है, तो 60 रो के जितनी भी डाटा है उसको एलएसटीएम की हेल्प से मॉडल क्या करेगा, स्टोर कर लेगा अपने ब्रेन में, कि भाई मेरे ब्रेन में ना 60 रो पड़ी हुई है, ठीक है। फिर ड्रॉप आउट और डेंस का इस्तेमाल क्यों हो रहा है, एलएसटीएम क्या करेगा, उसे स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद एकदम से ड्रॉप आउट आएगा। ड्रॉप आउट मतलब कि जो सीक्वेंस 60 की होगी, 60 के बाद जो अगला नंबर होगा, मतलब अगला जो भी डाटा होगा उसको ड्रॉप आउट की हेल्प से एक मतलब नॉइस क्रिएट कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे कि यार ये तो फिर दिक्कत वाली बात है ना, फिर मॉडल यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। हम यही तो करना चाहते हैं, क्योंकि अगर मॉडल को आप कंटिन्यूसली डाटा देते जाओगे तो मॉडल ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मान लो आपने एग्जाम दिए, करीब 10 एग्जाम दिए और 10 के 10 एग्जाम आपने पास कर दिए, आपने एक एग्जाम भी फेल नहीं करा, इसका मतलब क्या हो गया, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हो। अब 11th जो एग्जाम आ रहा है वो थोड़ा सा टफ आ गया, आप तुरंत फेल हो जाओगे बिकॉज ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस, समझ गए। तो इसलिए हमारा मॉडल ओवर कॉन्फिडेंट ना हो तभी हमने ड्रॉप आउट का यूज करा है। अब ड्रॉप आउट क्या करेगा, जब सिक्वेंशियल कंप्लीट होगी तो उसके बाद एक नॉइस क्रिएट कर देगा, नॉइस क्रिएट करने की वजह से जो मॉडल है ओवर कॉन्फिडेंट को ब्रेक करेगा, मतलब वहां पे तोड़ देगा। और फिर एकदम से एक पॉइंट आएगा जहां पे डेंस क्रिएट होगा। डेंस मतलब कि जब पूरा डाटा कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद जो प्रिडिक्शन होगी मॉडल हमें प्रिडिक्शन दे देगा। अब अर्ली स्टॉपिंग क्या आ रहा है, ठीक है। अर्ली स्टॉपिंग क्या है, जब हम मॉडल को डाटा देते हैं तो डाटा हम दो पार्टों में स्प्लिट करते हैं, एक ट्रेनिंग और दूसरा होता है टेस्टिंग। और टेस्टिंग को हम वैलिडेशन बोलते हैं, टेस्टिंग को वैलिडेशन, इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको समझाने के लिए नीचे समझाता हूँ। और ये मैटप्लॉटलिब तो आपको मालूम है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए है। ये सारी कॉलम्स बनाई, ठीक है। फिर इस कॉलम्स को हमने डाटा नाम के एक और वो बनाया हमने, उसके अंदर रख दिया, ठीक है। आप देखो मिन मैक्स स्केलर मैंने अभी आपको बता दिया, फिट ट्रांसपोर्ट फिट करेगा एक 0 से 1 के बीच में, ठीक है। फिर अब यहाँ पे देखो बिटकॉइन स्केलर डॉट पिकल। अब डब्ल्यू ई का मतलब क्या है, इसका मतलब है राइट बाइनरी। बाइनरी क्या होता है, 0 से 1। तो अब राइट बाइनरी जब 0 से 1 के बीच में लिखेगा, ये सारा डाटा जितना भी डाटा है 2 साल का, ये सारा डाटा जब वो बाइनरी में लिखेगा तो रखेगा कहाँ,
डॉट पिकल में रखेगा वो, बिटकॉइन अंडरस्कोर स्कोलर डॉट पिकल में सारा डाटा रख देगा। रखने के बाद हम यहाँ पे एक्स वाई देख सकते हो, यहाँ पे एक लूप चला फॉर आई इन रेंज सीक्वेंशियल लेंथ कोमा लेंथ स्केल डाटा, जो भी स्केल डाटा यहाँ से हमको मिलेगा, सॉरी ये रहा स्केल डाटा, ठीक है, उसको यहाँ पे रखेंगे। एंड देन हम उसे एक्स वाई में अपेंड कर देंगे, ठीक है, एक्स कोमा वाई में अपेंड कर देंगे, सारा अपेंड मतलब डाटा को वहाँ पे रख देना, ठीक है। अब स्प्लिट करा, 80% डाटा हम टेस्टिंग में रखेंगे और रिमेनिंग डाटा हम उसमें, सॉरी 80% डाटा हम ट्रेनिंग में रखेंगे और जो रिमेनिंग है वो टेस्टिंग में रखेंगे। अब टेस्टिंग मतलब क्या, टेस्टिंग मतलब वैलिडेशन, ठीक है। अब ऐसा स्प्लिट क्यों करा भाई, पूरा 100% डाटा मॉडल को क्यों नहीं दिया जा रहा, 20% क्यों? मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि अगर मॉडल सारे एग्जाम पास करता गया तो वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो अननोन नंबर्स पे फेल हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, पहले मॉडल को 80% डाटा पे ट्रेन करा जा रहा है, जैसे ही मॉडल 80% पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, मतलब जैसा भी है वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है ट्रेनिंग पे, तुरंत उसके पास ना 20% डाटा भी दिया जा रहा है और उसको बोला जा रहा है कि भाई देख 80% पे जो तूने काम किया है ना वो तेरे को दे दिया हमने डाटा, अब ये 20% डाटा जो है ना अननोन है, अब बता इस अननोन नंबर को देख करके तू क्या नया नंबर प्रिडिक्ट करेगा। अगर उसमें उसकी प्रिडिक्शन अच्छी रही, इसका मतलब डाटा रट्टा नहीं मार रहा, वो पढ़ रहा है, मतलब वो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, समझ रहा है चीजों को। मतलब यहाँ पे ना वही रट्टाफिकेशन या समझना, जैसे होता है ना कि कई लोग रट्टाफिकेशन मान लेते हैं तो भाई उनको लगता है कि उन्हें बहुत अच्छी एजुकेशन आती है, लेकिन नहीं, यहाँ पे मॉडल को रट्टाफिकेशन ना, मतलब मॉडल हमारा रट्टाफिकेशन ना मारे, समझदारी से काम ले, इसके लिए हमने डाटा को स्प्लिट करा है। 80% पे हम मॉडल को ट्रेन करेंगे, फिर 20% अननोन डाटा उसके सामने रख देंगे और बोल देंगे भाई अब 20% पे बता क्या रिजल्ट देगा तू। अगर उसने 20% पे भी एरर कम दिया, लॉस जो है वो कम हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा मॉडल है अच्छा ट्रेन कर रहा है, ठीक। अब इसको समझने के लिए ना यहाँ पे ना देखो, हमें क्या देखना पड़ता है, लॉस देखना होता है, ट्रेनिंग लॉस और टेस्टिंग लॉस। टेस्टिंग लॉस मतलब वैलिडेशन लॉस। अगर ये दोनों लॉस साइमल्टेनियसली काफी अच्छा दे रही है, लॉस मतलब कि उसके अंदर जो कमियां हैं वो गिरती जा रही है, ठीक है, अगर वो ज्यादा हो गई तो समझ जाओ कि मॉडल अच्छे से ट्रेन हो चुका है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से समझाता हूँ आपको, यहाँ पे ये ये है, रुको, हाँ देखो ये रहा अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग। ये जो है ये ट्रेनिंग डाटा है और ये है टेस्टिंग डाटा, वैलिडेशन को टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पर ही मॉडल क्या कर रहा है, ये नीचे गिरता जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल धीरे धीरे सीख रहा है, धीरे धीरे सीख रहा है, ठीक। यहाँ पे सीख रहा है अच्छा खासा सीख रहा है, और ये बहुत जैसे जैसे नीचे जाएगा ना, इसका मतलब मॉडल अच्छा सीख रहा है। अब आप बोलोगे यार नीचे जा रहा है तो सीख कैसे रहा है, मतलब ये है कि पहले उसने बहुत बड़ी गलती करी, फिर उस गलती को और कम कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर कम कर दिया। अभी